and run for 3 months. The initiative will be limited to the United States market. Follow 3.TV for more such updates. Recently, blockchain gaming behemoth Animoca brand's subsidiary Anichess has raised $1.5 million to develop a decentralized chess game. Isn't it amazing, guys? Anichess, a community-driven free-to-play game, combines classic chess rules with a spell of magic, offering offensive, defensive, and counter tactics. Challenges add esports-like elements, and the game is partnered with Animoca brands and chess.com. Now, the immutable X-developed game Gods Unchained has made moves as it has been listed on Epic Games. The NFT gaming space is flushed with funds, and it's quite evident from MetaBlaze, a pioneering Web3 gaming and AI company, as it has raised an impressive $4 million with over 2,200 holders in its pre-sale round. Big financial institutions, banks are wasting no opportunity to engage customers, particularly in the US. It does not matter whether these institutions have to offer products based on Bitcoin or Ethereum. The race seems to have just begun to serve customers with access to digital asset exchanged traded funds in the Asian continent as well. Productions Limited, the production company managing the intellectual property of iconic British rock band Queen, has filed a series of patents relating to the metaverse and NFTs. The company also envisions creating a virtual marketplace featuring a range of items including virtual clothing, footwear, audio gear, CD and record players. Follow 3.TV for more such updates. If you wonder what led the recent surge in Bitcoin price to near one-year high, let me help you understand the reason for the same. There are dozens of factors that led the rally in Bitcoin, but the key catalyst behind several financial biggies joining the race of launching the spot Bitcoin-based exchange-traded funds, or the ETF. लेजेंडरी रॉक बैंड क्वीन ने रखा एनएफटी की दुनिया में कदम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस को मिलेगा उनसे मिलने का सुनहरा मौका। अर्मिस मेटाबर्किन कोर्ट केस में अर्मिस के हक में सुनाया गया फैसला। जानने के लिए देखिए हमारा स्पेशल शो एनएफटी वर्स। ऐसी और दिलचस्प खबरों के लिए फॉलो करें 3.TV। Will the golden days of NFTs return? Because any asset, if give a enormous growth within 1 year, of course, some point in time it have to crash, right? So it can't be keep growing always. So and also it is directly relates with the crypto market, right? NFTs and crypto right now works, hand to hand. एक आम इंसान का सपना होता है एक अच्छी कार खरीदना, जिससे उसे कंफर्ट और सेफ्टी तो मिल जाती है, लेकिन कौन सी कार अच्छी है कौन सी नहीं, इसका फैसला कैसे किया जाए। आपकी इसी मुश्किल को हल करने के लिए आ गई है एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पोर्शा, BMW, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, रेनॉल्ट जैसे कई वर्ल्ड फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की मदद से आम इंसान बेफिक्र होकर कार खरीद सकता है, इस विश्वास के साथ कि वो सोच समझकर अच्छा फैसला ले रहा है। Bitmap theory to bridge gap between Bitcoin and Metaverse. Binance and The Weeknd enters Metaverse. FIFA files for Metaverse trademark applications. Nuclear Blast records and Sandbox to launch Blast Valley. HSBC files trademark applications for NFT and Metaverse. Want to know more? Watch our weekly show Metaverse Magic every Monday, and for more such updates, follow 3.TV.
नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। वर्ल्ड कॉइन ने एक ओपन एडिशन NFT कलेक्टिबल जारी कर अपने लॉन्च का जश्न मनाया। मेमोरेबलिया टोकन NFT मार्केटप्लेस जोरा पर जारी किया गया है। एक तरफ आर्टवर्क में वर्ल्ड कॉइन का लोगो है, दूसरी ओर इसमें कहा गया है, सफल होने पर हमारा मानना है कि वर्ल्ड कॉइन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को काफी हद तक बढ़ा सकता है, प्राइवेसी बनाए रखते हुए ऑनलाइन AI से मनुष्य को अलग करने के लिए एक रिलायबल सोल्यूशन का पैमाना बना सकता है, ग्लोबल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को सक्षम कर सकता है और अंततः AI फंडेड UBI के लिए एक संभावित रास्ता दिखा सकता है। एनिमेटेड आर्टवर्क के दोनों साइड्स में वर्ल्ड कॉइन और 24 जुलाई शामिल है, जिस दिन प्रोजेक्ट लाइव हुआ था। विशेष रूप से व्यक्ति लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में टोकन मिंट कर सकते हैं। इनिशिएटिव 31 जुलाई को एक्सपायर हो रही है। अब तक 5040 नॉन फंजिबल टोकन्स बनाए जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कार्टून स्टूडियोज ने कहा कि 8000 से अधिक स्टैनली डिजिटल कलेक्टिबल्स का बैच सोमवार को लगभग तुरंत बिक गया, जो दर्शाता है कि नॉन फंजिबल टोकन्स मार्केट की धीमी रिकवरी के बावजूद कुछ वर्चुअल एसेट्स की मजबूत मांग अभी भी मौजूद है। कार्टून ने सोमवार को एक बयान में कहा, हाल ही में पॉपुलर कॉमिक बुक राइटर के 100th बर्थडे की स्मृति में ये ब्रॉडर स्टैनली कलेक्टिबल्स यूनिवर्स रोल आउट के पहले फेज को चिन्हित करती है। ली स्पाइडरमैन, द हल्क और आयरन मैन सहित कई वेल नोन सुपर हीरोज बनाने के लिए फेमस हैं। कार्टून स्टूडियोज के पार्टनर वेवे ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि हर कलेक्टिबल $15 में बेचा गया है, जिसका अर्थ है कि 8294 NFTs ने लगभग $120,000 का रेवेन्यू दर्ज किया। वेवे कलेक्टिबल ऐप के अनुसार सोमवार की सुबह न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार उसमें कम से कम 500% की बढ़त हुई थी। सुबह 10:40 पर सेल के लिए अवेलेबल सबसे चीपेस्ट कलेक्टिबल $81 पर सूचीबद्ध थी, जबकि सबसे महंगी $749 थी। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मार्स, जो एक टॉप मेटावर्स और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, ने नए फीचर्स पेश किए हैं जो मेटावर्स से जुड़ी आगे की कैपेबिलिटीज को उजागर करने में मदद करेंगी। वे मानते हैं कि बाउंड्रीज और सीलिंग्स कमजोर दिल वालों के लिए हैं, न कि USM वर्स के लिए। कंपनी Web3 और मेटावर्स के साथ कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए नए रास्ते तलाशने में लगी हुई है। हालांकि फोकस ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस और टोकनाइजेशन को आगे बढ़ाने पर काम करने पर रहा है। उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता एक डेमोक्रेटाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड माइंडसेट बनाना है, जो सभी को एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पर लाए। USM ने ये सुनिश्चित किया है कि फीचर्स का प्रेजेंट सेट बरकरार रहे और यूजर्स को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए इसमें एडिशंस फीचर्स जोड़े गए हैं। ऑल इंक्लूसिव वर्चुअल स्पेसेस से लेकर क्रिएटिव टोकन यूसेज मॉडल्स के माध्यम से वे सफलतापूर्वक USM वर्स को ऊपर उठाने में कामयाब रहे हैं। बदले में इंटरैक्शन, एंगेजमेंट और ग्रोथ के संबंध में ऑप्शंस ऑफर करने की स्थिति में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने कहा कि देश की एनुअल ब्रॉड पॉलिसी आउटलाइन में ऐसे मेजर शामिल हैं जो यूजर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हैं और साथ ही Web3 टोकन्स के उपयोग के लिए एनवायरनमेंट में सुधार और कंटेंट इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करते हैं। किशिदा ने मंगलवार को शुरू हुए टोक्यो में वेबएक्स कॉन्फ्रेंस में एक रिकॉर्ड किए गए वीडियो ब्रॉडकास्ट में ये टिप्पणियां की, जिसमें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा Web3 को अपनाना जारी रखा गया। देश के नेता ने दोहराया कि Web3 कैपिटलिज्म के नए रूप का हिस्सा है। उनकी फ्लैगशिप इकोनॉमिक पॉलिसी का जिक्र करते हुए इनोवेशन, स्टार्टअप्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करके ग्रोथ और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देना है। जापानीज लेजिस्लेटर्स का एक छोटा ग्रुप पिछले साल से NFTs, स्टेबल कॉइन और डाउस के लिए रेगुलेशन और पॉलिसीज पर काम कर रहा है। उन्होंने उस कठिन टैक्स ऑब्लिगेशन को भी समाप्त कर दिया है जो प्रोजेक्ट क्रिएटर्स को देश से बाहर धकेल देता था। ओवर टू यू रोशनी। डोजकॉइन में लगातार दूसरे दिन तेजी आई क्योंकि नए रीब्रांडेड एक्स प्लेटफॉर्म पर मीम कॉइन द्वारा बड़ी भूमिका निभाने की स्पेकुलेशंस ने रैली को बढ़ावा दिया। कॉइनगेको स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पिछले दिन डोज 10% तक बढ़कर 7.7 सेंट से अधिक हो गया है, जिसमें $2.3 बिलियन का ट्रेड हुआ है। इनमें से ज्यादातर वॉल्यूम का ट्रेड साउथ कोरियन एक्सचेंज अपबिड पर कोरियन वोन ट्रेडिंग पेयर के खिलाफ किया गया था, जो स्पेक्युलेटिव बेट्स लगाने के लिए फेमस है। कॉइन ग्लास स्टैटिस्टिक्स के अनुसार फ्यूचर ट्रेडर्स को डोज कॉइन प्राइस चेंजेस के पक्ष और विपक्ष दोनों में बेटिंग में लगभग $10 मिलियन का नुकसान हुआ। एनालिस्ट का कहना है कि ट्विटर, जिसने सोमवार को हर चीज को एपेक्स में बदल दिया, आने वाले महीनों में यह जल्द ही डोज टोकन स्वीकार कर सकता है,
क्योंकि ओनर एलॉन मस्क के मीम कॉइन के प्रति दीवानगी दिख रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3wordsTV.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। थैंक यू। अपने फैंस को वर्चुअली दुनिया की सैर कराएंगे स्नूप डॉग। खुली फियोशियस की किस्मत, फिजिकल स्नीकर NFT पास के लिए एडिडास के साथ मिलाया हाथ। $95,000 की क्रिप्टोपंक NFT को किया गया बर्न। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रुचि शर्मा। स्नूप डॉग के साथ फैंस के वर्चुअल टूर से लेकर NFTs की नीलामी और क्रिप्टोपंक NFT के बर्न करने तक कई मजेदार NFT न्यूज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए तैयार। NFT वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से होगी मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हालचाल। पिछले हफ्ते $82 मिलियन की NFT सेल्स के साथ इथेरियम ने फिर से मारी बाजी, जो नंबर 1 की अपनी पोजीशन पर कायम है। तो वहीं दूसरी पोजीशन पर रही बिटकॉइन $21 मिलियन की NFT सेल्स के साथ। सोलाना को मात देते हुए तीसरी जगह ली BNB ने $7.7 मिलियन की NFT सेल्स के साथ। इस आंकड़े के काफी करीब थी सोलाना NFTs, जिसने $7.6 मिलियन की NFT सेल्स दर्ज की। और पांचवी पोजीशन पर कब्जा जमाया माइथोस चेन ने $6.6 मिलियन NFT सेल्स के साथ। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, मिस्टर गौरव राज ठाकुर, फाउंडर मेटावर्क्स। वेलकम टू 3.TV मिस्टर गौरव। मिस्टर गौरव, NFT की करंट मार्केट सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं और क्या है NFTs का फ्यूचर? Okay, the current situation of the NFT market, it went through a fall last year. Sales on OpenSea and LooksRare and all these platforms dipped. They dipped immensely, but then it again rose. I think last month there were a lot of NFT projects which sold within 10 minutes, but that's from the art and culture perspective of it. There are other use cases of NFTs which are still there. For example, Polkadot is doing an event on 20th of this month, and they're issuing NFTs to attendees of that event. So that's a proof of attendance. There's another NFT category which is the loyalty category, and I cannot stop mentioning Starbucks and what Polygon did with them. People are still using those NFTs and holding them dear. So that's another use case you have. So the culture part of NFTs, the art part of NFTs, that will keep on seeing ups and downs. To mention here, just last week there was a sale of NFT of a project called the Goose. That NFT was sold, and it was the second highest price of NFT which was ever done till now. I mean historically. So the collectors market is there. Those NFTs will still be traded, will keep on going, and the use case market is there where people use it as in-game tokens, where people use it as proof of attendance, where people use it as soul tokens, where certifications and university certifications are issued. And going forward, I think land records would be issued as NFTs. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। NFT की दुनिया से कुछ अलग ही लगाव है स्नूप डॉग को। कभी BAYC थीम्ड रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, कभी म्यूजिक वीडियो रिलीज करते हैं, तो अब स्नूप डॉग सीधा अपने फैंस को परदेश की सैर करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, स्नूप डॉग ने लॉन्च किया है स्नूप डॉग पासपोर्ट, एक ऐसा NFT पास जो उनके अपकमिंग टूर के लिए एक्सेस प्रोवाइड करेगा। इस पास की बदौलत फैंस एक्सक्लूसिव कंटेंट और कई तरह की एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर सकते हैं। स्नूप डॉग पासपोर्ट NFT को इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क आर्बिट्रम पर 0.025 ETH के लिए मिंट किया जाएगा। इन पासेस को मिंट करने पर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। यूजर्स एक वक्त पर 100 पासेस तक खरीद सकते हैं। इन डिजिटल टूर कलेक्टिबल की मदद से यूजर्स बिहाइंड द सीन फुटेज और स्नूप डॉग के हाई स्कूल रियूनियन टूर के फेलो रैपर्स विज खलीफा, टू शॉट और वॉरेन जी से जुड़ा बहुत सा मजेदार कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। ये NFTs मर्चेंडाइज, टिकट सेल्स और म्यूजिक प्लेलिस्ट के लिए भी एक्सेस अनलॉक करेगी। इसके साथ ही NFT बायर्स को एयरड्रॉप के जरिए स्नूप सेलेक्ट्स भी मिलेंगे, जो कि टेरल जोन्स, कोल्डी और एलियन क्वीन जैसे आर्टिस्ट के साथ क्रिएट किया गया स्नूप डॉग का डिजिटल आर्टवर्क है।
इस NFT ड्रॉप को ट्रांजिएंट लैब के साथ पार्टनरशिप में क्रिएट किया गया था। फियोशियस की किस्मत के भी क्या कहने, टीनेज से लगातार सिर्फ सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं विक्टर लंगोइस और फियोशियस इन दिनों सातवें आसमान पर है। और हो भी क्यों ना, उन्होंने फिजिकल स्नीकर कोलैबोरेशन के लिए ग्लोबल अपैरल जायंट एडिडास के साथ डील जो की है, उनकी कलेक्शन एक NFT रिडेम्पशन पास के जरिए बेची जाएगी। फियोशियस और एडिडास की कोलैबोरेशन से NFT मिंट पास के 4500 एडिशंस रिलीज किए जाएंगे, जिसे नाम दिया गया है ट्रीफॉइल फ्लावर। ये मिंट पास एक्सक्लूसिवली ओपन सी मार्केट प्लेस पर 22 जून से अवेलेबल होगा। ये पास एक डायरेक्ट रिडेम्पशन टिकट की तरह काम करेगा, जिसे यूज करके पास होल्डर्स कस्टम डिजाइन फिजिकल स्नीकर्स पा सकेंगे। इन स्नीकर्स को नाम दिया गया है एडिडास ओरिजिनल्स कैंपस 00S। वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए हर स्नीकर में NFC टैग लगाया जाएगा। ये टैग वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है जिसे अक्सर फोन्स, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स और पासपोर्ट में स्कैनिंग के लिए लगाया जाता है। इन NFTs को मिंट करने का मौका सबसे पहले एडिडास के होल्डर्स को दिया जाएगा, फिर फियोशियस NFT होल्डर्स को, और फिर ये मिंट बाकी होल्डर्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जो कि इन NFTs को 0.25 ETH पर मिंट कर सकेंगे। इथेरियम NFTs जल रही हैं, बिटकॉइन इंस्क्रिप्शंस में बदल रही हैं। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? चलिए आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स को देखकर सिर्फ इथेरियम का दिल नहीं जल रहा, बल्कि इथेरियम NFTs भी जल रही हैं। जी हाँ, एथस्कैन के मुताबिक हाल ही में एक क्रिप्टो पंक NFT को $95,000 के लिए इथेरियम पर बेचा गया, और फिर कुछ घंटों बाद उसी NFT को बिटकॉइन पर इंस्क्राइब करके इथेरियम नेटवर्क से परमानेंटली रिमूव करने के लिए बर्न कर दिया गया। क्रिप्टो पंक NFT को बर्न करना एक कम्युनिटी लेड एफर्ट था। वुल्फ कैपिटल डेवलपर नेथन स्टाइन और बिटकॉइन बैंडिट्स के होल्डर्स ने साथ मिलकर ये डिसीजन लिया था। इस बर्निंग प्रोसेस में करीब 150 लोग इन्वॉल्व थे। जब किसी डिजिटल एसेट को बर्न किया जाता है तो वो हमेशा के लिए एक डिजिटल वॉलेट में लॉक हो जाता है, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्रिप्टो पंक #8611 को ऐसे वॉलेट में भेजा गया है जिसमें $21 मिलियन वर्थ इथेरियम भी है। मिन नाम के एक ट्विटर अकाउंट होल्डर ने क्रिप्टो पंक #8611 को परचेज करने से लेकर बर्न करने तक के पूरे प्रोसेस का एक वीडियो बनाया है और इसे ट्विटर पर पोस्ट भी किया है। इस शख्स के मुताबिक ये पूरा प्रोसेस केओटिक येट ब्यूटीफुल था। कहीं NFTs बर्न हो रही हैं तो कहीं नीलाम। लगता है NFT के अच्छे दिन अभी दूर हैं। जिस नीलामी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, वो आखिरकार पूरी हो गई। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो हेज फंड 3 Arrows कैपिटल की जब्त की गई NFTs का दूसरा ऑक्शन पूरा हो गया। इस नीलामी में 3 Arrows कैपिटल की NFT ने करीब $11 मिलियन की सेल दर्ज की। ये लाइव ऑक्शन न्यूयॉर्क में हुआ, जिसमें ग्रेल्स कलेक्शन के पीसेस भी मौजूद थे। इन टोटल इस ऑक्शन में डिमिट्री चेरनियाक, टाइलर हॉब्स, जेफ डेविस जैसे कई जनरेटिव आर्टिस्ट के 37 आर्टवर्क्स शामिल थे। इस ऑक्शन की हाईलाइट थी डिमिट्री चेरनियाक की NFT रिंगर्स #879, जो द गूज नाम से मशहूर है। माना जा रहा था कि ये फेमस आर्ट पीस $2 से $3 मिलियन में बिकेगा, लेकिन काफी बिडिंग के बाद इसे NFT इन्वेस्टर 6529 में $6.2 मिलियन में खरीदा। ऑक्शन के बाद सदबी ने ट्वीट करके बताया कि ये जनरेटिव आर्ट की अब तक की सेकंड हाईएस्ट सेल थी। इन दिनों मेरे दिलो दिमाग में एक ही गाना चल रहा है, और वो गाना बेस्ड है इथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन पर। हैरान हो गए ना कि आज तक कभी सातोशी नाकामोटो पर गाना नहीं बना, सैम बैकमैन-फ्रीड पर गाना नहीं बना, तो फिर विटालिक पर क्यों बना ये गाना? चलिए बताते हैं आपको। Sound.xyz के सिनोनिमस को-फाउंडर गीगा मेश और इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन ऑप्टिमिज्म के को-फाउंडर बेन जोन्स साथ मिलकर लेकर आए हैं 1978 की बोनी एम के हिट डांस ट्रैक रेस्पुटिन के स्टाइल में बनाया गया विटालिक बुटेरिन पर बेस्ड एक सॉन्ग। और ये गाना Web3 म्यूजिक प्लेटफॉर्म Sound.xyz पर NFT के तौर पर फ्री में मिंट करने के लिए अवेलेबल होगा। Sound.xyz ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करना चाहते हैं, और इसलिए वो अब अपनी ब्लॉकचेन पर सॉन्ग सेल शुरू कर रहे हैं, जिसमें आर्टिस्ट के लिए फीस कम होगी और फैन से डायरेक्टली रेवेन्यू भी कमाया जाएगा। ऐसे में दोनों फाउंडर्स साथ लेकर आए हैं ये प्रोजेक्ट, जिसके तहत बुटेरिन पर बेस्ड ये ट्रैक लॉन्च किया गया है। अब तक इस गाने की 30,000 से ज्यादा NFTs मिंट की गई हैं।
Well, that's all in this episode of NFT Verse. वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी. Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें. Hello and welcome to $3.TV. I am your host Vishakha Thakur and today's special segment is about one of the world's largest mobile maker, Apple, and its ongoing tussle with Bitcoin wallet Zeus. Well, the tech giant Apple has rejected the latest version of non-custodial Lightning-enabled Bitcoin wallet Zeus, according to a tweet by Zeus founder Evan Kalodis. In the rejection statement, Apple pointed out, "Your app facilitates the transmission of a virtual currency, but was not submitted by a corresponding exchange or recognized financial institution." Now, this comes a day after Apple spat with another popular Lightning-enabled Bitcoin app, Demis, a decentralized social media platform that runs on the Nostr protocol. Nostr is an acronym for Notes and Other Stuff Transmitted by Relays. According to tweets from Demis, Apple took issue with the Demis Zap feature, which allows users to send small amounts of Bitcoin over the Lightning Network to their favorite content creators as a token of their appreciation, much like Twitter's tip feature. Lightning is Bitcoin's second-layer payment network for cheaper and faster transactions. Now, after picking a spat with Demis, Apple has now turned its attention to Zeus. The world's largest technology company by revenue has asked the wallet's creator to provide proof of requisite licenses and permissions for approval to facilitate transmission of a virtual currency or face rejection by Apple's App Store, according to Kalodis. Zeus is apparently in violation of Apple's guidelines, which require apps to provide proof of appropriate licenses such as money transmitter licenses in order to facilitate the transmission of cryptocurrencies. Many legal experts agree that non-custodial wallets like Zeus that don't take custody of funds or private keys should not be classified as money transmitters, a classification typically reserved for custodial wallets like those offered by Coinbase and Binance that do assume custody of customer funds. Non-custodial wallets should be approved, tweeted Breeze, another non-custodial Bitcoin wallet currently in Apple's App Store. Now, there's a specific exception in the same section. There are a lot of wallets in the App Store. The prior version of Zeus is still in the App Store. It's not clear that changes Kalodis made to the new version. Meanwhile, Zeus received community support. Twitter founder and Square CEO Jack Dorsey criticized the Apple's move, calling it as an incorrect. Twitter executive Elon Musk was on the same page as Dorsey. Epic Games founder and CEO Tim Sweeney was of the opinion that if Apple can tax this, they can tax digital banking, payroll, and anything else. Well, that's all in today's special segment. We will meet again. Till then, keep watching 3.TV. Please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. With 3.TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.TV in the metaverse.
So many coins, so much volatility. Readout TV delivers the news that matters. Whether you are an entrepreneur, investment banker, or market participant, You would definitely want to know about mergers and acquisitions, fundraising, and which way millions of dollars are heading in the big deals of the Web3 world. Find out all of that and more on a special show, Deal Corner, every Monday at 6:45 p.m. only on 3.0 TV. When I was in school, I still remember how all my teachers and my fellow peeps took the movie 2012 a little too seriously and thought the world was gonna end in 2012. We all know it's a catch-22 situation. Unless you're living under a rock, you might know that a lot of scientists have speculated that if a doomsday occurs, there may be life on Mars. Some scientists have also uncovered further evidence that liquid water exists beneath the ice cap at the southern pole of Mars, and it may mean that the planet is geothermally active. All these factors have kept me wondering how life on Mars would look like. Now, not only me, but all of us can have a similar experience on Mars. We already experienced the idea of colonizing planets Mars in several movies such as Total Recall, Mission to Mars, The Red Planet, and the most recent Golden Globe Award-winning movie, The Martian. In the movie, Matt Damon played the lead role and his survival instinct mesmerized many moviegoers. As they say, men are from Mars and women are from Venus. For now, our journey to Venus can wait, as it is inhabitable anyway. Definitely, Mars gives us hope to make mankind a multiplanetary species. Coming back to the gaming zone, Mars 4 is a 3D metaverse game that aims to offer something a little different, something real, since it is a simulator game. You guys, simulation games are enormous business because they provide a real-world type of escapism. The market for simulation games is expanding. Meanwhile, Statista estimates that global market volume in this genre will reach $24.14 billion by 2027. Simulation games are more appealing because they provide players with a realistic glimpse into their real-world jobs other than their own. While some virtual worlds in the metaverse are entirely fictitious, a product of designers' imagination, others use real-world data to create a canvas that combines interplanetary travel with the escapism of a fantasy game. Mars 4's virtual world, which players can explore, is based on a NASA data, resulting in a highly realistic representation of the red planet's terrain. This land was subsequently subdivided into small plots represented by non-fungible tokens. So my couch potatoes, if you want to understand how it feels on Mars, this game is just right for you. Mars 4 players can embark on journeys and explore stunning sights 140 miles away from the comfort zone of their own homes. They'll be tasked with things like driving rovers, creating colonies, setting up camps, and harvesting resources, and they'll be able to collaborate with other players to prosper in the harsh environment. The Web3 game's creators claims they wanted survival elements to be an important part of each player's experience, which means they'll need to keep track of their water and oxygen levels, as well as quick temperature variations to stay alive. If you have ever played the Hitman series or Mortal Kombat or PUBG, you must be familiar how they provide you with the survival mechanics, wherein the health goes down and you have to drink energy drinks or something like that. So what the developers of this game wanted was pretty much the same. Self-care must be mastered before other skills in the game may be learned. Because this game accurately depicts the topography of Mars, it includes a large area and players must navigate it with a rover. There are two models available right now. The Carpian GT has ground-penetrating radar capabilities that allows players to detect the mineral makeup of rocks and locate scare source, whilst the Karkanda Exotransport is a multi-purpose machine that can drive on tough terrain, resist severe storms, and access difficult-to-reach regions. There are more rovers that were rolled out this summer, and with each model having a normal, epic, and legendary tier, there are many qualities and capabilities to discover. Rovers, Mars, dinosaurs, all this sounds so cool.
Oh, by the way, you guys, dinosaurs reminded me of Barry Sonnenfeld's Dinosaur vs. Aliens. It reminded me how me and all my friends, used to sneak comic books in my bag and then read comics instead of textbooks in school. Anyways, Orange Comet, a leading next-generation gaming and entertainment company, announced a partnership with Barry Sonnenfeld to create a first-of-its-kind, action-packed and cinematically driven Web3-enabled video game that will bring iconic prehistoric and otherworldly creatures to life in a never-before-seen way. The game is now in early development by Orange Comet and is based on Sonnenfeld and Grant Morrison's 2012 graphic novel about a secret World War II combat and that was never chronicled in our history books. For your information, all you peeps who don't know Barry Sonnenfeld is the director of the movie series Men in Black, Addams Family, Wild Wild West, and much more celebrated movies across the world. The news of Dinosaurs vs. Aliens follows Orange Comet's recent partnership with Miston Labs, which announced the launch of 3 new titles, including the upcoming The Walking Dead Lands, and demonstrates how Orange Comet is pushing boundaries of innovation and imagination to deliver unparalleled gameplay. Orange Comet is a premier next-generation gaming and entertainment firm that develops immersive Web3-enabled games. Every night. What's up, music lovers? Are you ready to travel the world with Snoop Dogg? Why wait? Get your NFT passport ready and onboard the first flight to enjoy Snoop Dogg's musical tour across North America. Confused? What is this NFT passport? What is this grand tour? And how can you join it from the comfort of your home and still travel the world? Well, don't worry. We are here to explain everything step by step. Rapper and entertainer Calvin Snoop Dogg Broadus Jr. is taking yet another step into Web3 with the launch of Snoop Dogg Passport, an NFT pass that unlocks access to exclusive content and opportunities tied to his upcoming concert tour. How will that help? Let me explain. Each Snoop Dogg Passport NFT is minted on Ethereum scaling network Arbitrum and sells for 0.025 ETH. Which is about $43 worth at present. The supply is not capped and users may purchase up to 100 passes at a time. The evolving digital tour collectible will unlock behind-the-scenes footage and content tied to Snoop Dogg's high school reunion tour with fellow rappers Wiz Khalifa, Too Short and Warren G, among others. The tour will kick off on July 7 in Vancouver before wrapping up the run in Irvine, California on August 27. The tour will see Snoop and Wiz Khalifa perform in other cities including Denver, Toronto, Brooklyn, Atlanta, Austin and Sacramento, among others. That's not enough. Well, the NFT will also unlock access to merchandise, ticket sales and music playlists. Furthermore, NFT buyers will be airdropped a piece of Snoop Select's digital artwork with artists like Terrell Jones and the pseudonymous Collide and Alien Queen contributing pieces. The NFT drop was created in partnership with Transient Labs in a deal brokered by talent agency WME. Snoop Dogg has been actively involved in the Web3 world for the past 2 years, engaging in various ventures such as NFT collaborations, avatar launches, virtual real estate acquisitions in metaverse games, partnerships with crypto platforms. So much for engaging music lovers and ensuring a fair share for Web3 space as well. We all have got our Snoop Dogg passport. Have you got yours? Are we ready to take off, girls? Let's fly!
Hello and welcome to $3 TV. I am your host Vishakha Thakur, and today's special segment is about one of the world's largest mobile maker, Apple, and its ongoing tussle with Bitcoin wallet Zeus. Well, the tech giant Apple has rejected the latest version of non-custodial Lightning-enabled Bitcoin wallet Zeus, according to a tweet by Zeus founder Evan Kalodis. In the rejection statement, Apple pointed out, "Your app facilitates the transmission of a virtual currency, but was not submitted by a corresponding exchange or recognized financial institution." Now, this comes a day after Apple spat with another popular Lightning-enabled Bitcoin app, Demis, a decentralized social media platform that runs on the Nostr protocol. Nostr is an acronym for Notes and Other Stuff Transmitted by Relays. According to tweets from Demis, Apple took issue with the Demis Zap feature, which allows users to send small amounts of Bitcoin over the Lightning Network to their favorite content creators as a token of their appreciation, much like Twitter's tip feature. Lightning is Bitcoin's second-layer payment network for cheaper and faster transactions. Now, after picking a spat with Demis, Apple has now turned its attention to Zeus. The world's largest technology company by revenue has asked the wallet's creator to provide proof of requisite licenses and permissions for approval to facilitate transmission of a virtual currency or face rejection by Apple's App Store, according to Kalodis. Zeus is apparently in violation of Apple's guidelines, which require apps to provide proof of appropriate licenses such as money transmitter licenses in order to facilitate the transmission of cryptocurrencies. Many legal experts agree that non-custodial wallets like Zeus that don't take custody of funds or private keys should not be classified as money transmitters, a classification typically reserved for custodial wallets like those offered by Coinbase and Binance that do assume custody of customer funds. Non-custodial wallets should be approved, tweeted Breeze, another non-custodial Bitcoin wallet currently in Apple's App Store. Now, there's a specific exception in the same section. There are a lot of wallets in the App Store. The prior version of Zeus is still in the App Store. It's not clear that changes Kalodis made to the new version. Meanwhile, Zeus received community support. Twitter founder and Square CEO Jack Dorsey criticized the Apple's move, calling it as an incorrect. Twitter executive Elon Musk was on the same page as Dorsey. Epic Games founder and CEO Tim Sweeney was of the opinion that if Apple can tax this, they can tax digital banking, payroll, and anything else. Well, that's all in today's special segment. We will meet again. Till then, keep watching 3.0 TV. Please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Whether you are an entrepreneur, investment banker, or market participant, You would definitely want to know about mergers and acquisitions. fundraising, and which way millions of dollars are heading in the big deals of the Web3 world. Find out all of that and more on a special show, Deal Corner, every Monday at 6:45 p.m. only on 3.0 TV. The idea of harnessing artificial intelligence for development was once considered science fiction. In this digital age, artificial intelligence is also developing into an appealing investment opportunity. However, now that huge tech companies like Alphabet, Zoho are embracing AI technology, big investors are doing the same.
Recently, GitHub jointly conducted a survey with Wakefield Research to survey 500 US-based enterprise developers. They found that 70% of the programmers believe AI is providing significant benefits to their code. According to a new GitHub programmer survey, 92% of US-based developers are already using AI coding tools both in and outside of work. Only 6% of developers said they solely use these tools outside of work. In other words, today, AI programming tools are part and parcel of modern business IT. Furthermore, according to a recent McKinsey & Company analysis, generative AI may be able to fully automate 50% of all work activities carried out on now in just 22 years, including duties linked to decision making, management, and interacting with stakeholders. The prediction came out from the management consulting firm report on June 14th, forecasting 75% of generative AI value creation will come from customer service operations, marketing, and sales software engineering, as well as research and development positions. The firm explained that recent developments in generative AI has accelerated its midpoint prediction by nearly a decade from 2053, its 2016 estimate, to 2045. McKinsey explained that its broad range of 2030 to 2060 was made to encompass a range of outcomes, such as the rate at which generative AI is adopted, investment decisions and regulations, among other factors. Its previous range for 50% of work being automated was 2035 to 2070. The consulting firm said, however, the pace of adoption across the globe will vary considerably from country to country. Generative AI systems now have the potential to automate work activities that absorb 60 to 70% of employees' time today, McKinsey estimated. Interestingly, the report estimates generative AI will likely have the biggest impact on high-wage workers, applying a high degree of expertise in the form of decision-making, management, and interfacing with stakeholders. The report also predicts that the generative AI market will add between $2.6 to $4.4 trillion to the world economy annually and be worth a whopping $15.7 trillion by 2030. Artificial intelligence can transform the productivity and GDP potential of the global economy. Strategic investment in different types of AI technology is needed to make that happen. Initial GDP growth will be driven by increases in labor productivity as businesses look to augment the labor force's productivity with AI technology and automate certain positions and duties. According to PricewaterhouseCoopers research, product improvements will increase consumers' demand and account for 45% of all economic gains by 2030. This is due to the fact that when AI develops, product variety will expand along with personalization, allure, and cost. Meanwhile, China will have a 26% increase in GDP by 2030, and North America will experience a 14.5% increase, totaling $10.7 trillion, and accounting for about 70% of the global economic impact as per the report. We will keep updated. More such updates. Until then, keep watching 3.0 TV. Do not forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Do log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। बीपल, वो फेमस डिजिटल आर्टिस्ट जिसने एनएफटी की दुनिया को दी पहली सबसे महंगी एनएफटी। एवरीडेज नाम की इस एनएफटी ने $69 मिलियन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल जुटाकर एनएफटी की दुनिया में बड़ा धमाका किया था। इतना ही नहीं, इसके बाद बीपल ने लगातार 2 और हाई सेल एनएफटीज देकर एनएफटी वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। अब सोचिए, वही फेमस आर्टिस्ट बीपल अगर आपको एनएफटी बनाने और उन्हें हिट करने के गुर सिखाए तो होगा ना ये कमाल का आइडिया। वेल, मुस्कुराइए क्योंकि ये आइडिया बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया ने इंट्रोड्यूस की है वर्ल्ड की फर्स्ट मास्टर्स डिग्री इन मेटावर्स स्टडीज। डिजिटल एसेट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इस यूनिवर्सिटी के करिकुलम पर बिल्ड किया जाएगा ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पूरी तरह से ऑन चेन डिलीवर किया जाएगा और मेटावर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। ये दुनिया का पहला मेटावर्स में पढ़ाया जाने वाला मास्टर्स इन मेटावर्स साइंस कोर्स होगा।
खबर है कि pseudonymous digital artist CryptoPunk 6529 बतौर फैकल्टी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जो वहां NFT के बारे में पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी में बीपल गेस्ट लेक्चर देने आएंगे। बीपल के अलावा बाला श्रीनिवासन, फ्रेड विल्सन और क्रिस डिक्सन भी यहाँ गेस्ट लेक्चर्स देने आएंगे। पिछले साल अक्टूबर में जब यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया ने ये कोर्स शुरू किया था, तब 20,000 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ये कोर्स ज्वाइन किया था। इस सक्सेस को देखते हुए निकोसिया यूनिवर्सिटी इस बार मेटावर्स स्टडीज में MSc कोर्स के लिए 3 लाख यूरोस का स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाई है। ये कोर्स सितंबर 2023 में शुरू होगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और मजेदार स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। 3.TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.TV delivers the news that matters. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. И тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». The Defense Ministry tried to deceive the public and the president, to tell a story that there was a crazy aggression from the Ukrainian side, and that they were joining with the NATO alliance to attack us. Therefore, the so-called special operation of the 24th of February was started for other reasons. Hello and welcome to 3.TV. I am your host Shikha Singh. On Friday evening of 16th of June, trading volume in Tether's USDT, the largest stablecoin among digital currency, rose through the roof after the news of Russia's infamous Wagner mercenary group staged what looked like the beginnings of a military coup. Initially, the Wagner forces took control of Southern Military Command headquarters in Rostov and then began moving towards Moscow by Saturday afternoon. It looked like Wagner were on track to reach Moscow by Sunday morning. But all of a sudden, Wagner's leader, Yevgeny Prigozhin, turned around saying that a deal had been done to avoid further bloodshed. This failed coup by Wagner Group has inadvertently fanned the flames of interest in trading the rubles against the cryptocurrency USDT. According to insights given by Kaiko, a renowned data analytics firm, the trading volume involving a USDT and the Russian ruble has skyrocketed, achieving an unprecedented peak since December 2022. The total volume of trades between rubles, Russia's currency, and Tether's USDT, a stablecoin pegged to the US dollar, almost quadrupled from $4 million on Saturday, June 24th to $15 million on Sunday, June 25th, according to digital assets data provider CC Data. This is not the first time the Russians have displayed rising enthusiasm towards the cryptocurrency sector due to some severe issues. It is worth mentioning that the trading volume peaked at over $30 million per day when Russia launched its special military operation against Ukraine at the beginning of 2022.
Tether is currently the third largest cryptocurrency by market capitalization, with a valuation of $83.6 billion, commanding 7.5% of the total cryptocurrency market capitalization. USDT dominates the stablecoin market with a 64% share out of a total stablecoin market capitalization of $130.2 billion. The supply of the second largest stablecoin USDC is nearly 3 times smaller than USDT. It has been observed in the past that geopolitical concerns always drove investors to safe haven, that's dollar. More recently, the increased adoption of virtual digital currencies has resulted in stablecoins replacing US dollar as currency of last resort. Economic crises in Argentina and Venezuela drove investors towards stablecoins. In case of Russia, which is facing international sanction, the locals here have sought refuge in dollar-backed USDT. Well, that's all in today's special segment. We will meet again. Until then, keep watching 3.0 TV. For more such updates, please log on to our website www.freeversetv.io or scan the QR code to know more. If you wonder what led the recent surge in Bitcoin price to near one-year high, let me help you understand the reason for the same. There are dozens of factors that led the rally in Bitcoin, but the key catalyst behind several financial biggies joining the race of launching the spot Bitcoin-based exchange-traded funds, or the ETF. As we know, ETFs, the bundled securities like stocks and commodities, allow investors to take exposure in underlying securities indirectly and dodge the vagaries such as exposure risk, regulatory issues, and etc. Given the rise in investor appetite for cryptocurrencies such as Bitcoin, who has stayed the test of time, a large number of traditional companies have made plans of launching spot Bitcoin-backed exchange-traded fund products. There is a lot of buzz around this, with a number of companies preparing to enter the virtual currency ecosystem. According to a report by Block, Fidelity Investments, one of the biggest asset manager companies in the US, is possibly on the verge of submitting a request for the approval of their own spot Bitcoin ETF. That's what the reports have suggested. Soon after BlackRock submitted a request to create a spot Bitcoin ETF, other financial giants such as Invesco, WisdomTree, and Bitwise evinced their interest to offer similar products. Clearly, the race for the other ETFs has just begun. There is a strong investor appetite for such products. In fact, the retail participation has increased in the cryptocurrency space following the Black Swan events in the United States, where several lenders faced investor ire after the fall of 3 major lenders in the US, such as Silicon Valley Bank, Signature Bank, and the Silvergate Bank. Many lenders still operate under the shadow of the possible bank runs, making investments, deposits in them highly risky. Hence, the demand for the alternative investments class such as crypto has grown manifold. However, the regulatory activities has intensified against the crypto exchanges that are pulled up by the US Securities and Exchange Commission for offering unregulated products. A case in point in Binance, the world's largest crypto exchange, and Coinbase, the only listed company with the SEC approval. The regulator alleged these exchanges for offering products that lack regulatory approvals. As a result, investors are left with little option, but seek refuge in other masked products. So I think it's not a kind of ETF because even there are lots of clarification from the finance, like is a different kind of instrument, a different kind of thing. It's not actually the government or US is approving as a crypto as asset. So, but I believe like there are regulators coming up, like suppose we have seen the MiCA regulator, or we have seen the VARA regulator coming into Dubai. So I think it's going to be the good future about the tokenization, or especially crypto when we declare crypto as asset. The situation is perfectly ripe for the financial service providers such as BlackRock, Invesco, WisdomTree, and others to explore the opportunity in adversity. According to the market grapevine, asset management giant Fidelity is readying to foray in the ETF space through offering spot Bitcoin-backed ETF. It must be noted that earlier in 2022, Fidelity Corp has approached SEC with an ETF proposal. However, the Security Exchange Commission rejected Fidelity's ETF filing.
host of other financial biggies have joined the race of ETF filing. ARK Investment Management submitted a comparable application to the Securities and Exchange Commission before BlackRock did so for its own spot Bitcoin ETF. Cathie Wood, the famous investor, reported earlier in the month of April. The flurry of ETF filing pushed price of the largest cryptocurrency, Bitcoin, by more than 20% in the past 7 days. For the year to date, Bitcoin price have jumped 80%. Well, considering the SEC's track record, the future of ETF hangs in balance for now. The SEC has long opposed the creation of a spot Bitcoin ETF. It permitted trading in ETF that are based on valuations of the cryptocurrency futures contracts. Maybe this time SEC may have taken a different approach, but fingers crossed. That's it from today's special segment. This is Manoj Dara signing off, but keep watching 3.0 TV for more such interesting analysis. Thank you. नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रोशनी शिंगरे। 3.0 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास सेगमेंट में हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं ब्लॉकचेन से जुड़ी एक और खास अपडेट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो हर सेक्टर पर अपने पैर जमा रही है, लेकिन अब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं हटा है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं भारत की टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की हिस्ट्री पर। दोस्तों, हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन की कहानी शुरू हुई थी 1850 में, जब इंडिया को पहली बार टेलीग्राफ मिला था, यानी तार भेजने का सिस्टम। टेलीकम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है अपने से दूर बैठे व्यक्ति से बात करना। फिर धीरे धीरे पोस्ट, टेलीग्राम और फिर टेलीफोन आया। टेलीफोन की अगर बात करें तो ये एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था, क्योंकि हजारों सालों से हम सिर्फ चिट्ठियों द्वारा बातें करते आए थे और अचानक से आए इस टेलीफोन ने दुनिया बदल कर रख दी थी। जब इंडिया में टेलीफोन आ भी गया तो हमारे पास इसका काफी कम एक्सेस था, क्योंकि ये लाइंस तब सिर्फ सरकार द्वारा बिछाई जाती थी, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में टेलीफोन एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ अमीर लोगों के घरों में और फिर काफी बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में ये लाइंस बिछाई गई थी। 1979 तक लगभग हर 200 में से सिर्फ 2 घरों में ही टेलीफोन्स हुआ करते थे और ये अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन हम अगर आज की बात करें तो ये चीज बहुत ही हैरान करने वाली है कि आजकल हर घर में कम से कम 2 फोन्स तो है, यानी सिर्फ 3 दशकों में 100% से ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर 1.17 बिलियन के सब्सक्राइबर बेस के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। 2016 में आए जियो को तो हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि जियो ने जैसे ही मार्केट में एंटर किया, इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर हमेशा के लिए बदल गया। 2016 में जब जियो आया था तब इसने अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री में सर्विस दी थी, जिससे जियो को काफी लॉयल कस्टमर्स मिल गए। आज इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर में जियो इकलौता है जो कटिंग एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम कंपनीज के लिए कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें ट्रांजैक्शन के हर पॉइंट पर सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, डेटा इम्यूटेबिलिटी और इकोसिस्टम पर कंट्रोल शामिल है। रोमिंग समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉकचेन टेलीकॉम कंपनीज के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकती है। रोमिंग पार्टनर सेटलमेंट वर्तमान में बिचौलियों द्वारा नियंत्रित होते हैं और अक्सर इन इश्यूज को सॉल्व करने में 2 महीनों तक का अधिक वक्त लगता है। इस स्ट्रक्चर के वजह से अक्सर ह्यूमन एरर्स, ट्रांसपेरेंसी की कमी, फ्रॉड और पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। पर अब आइए देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सारी त्रुटियों को कैसे दूर करेगी और इसमें टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के लिए कौन-कौन से लाभ शामिल है। बिचौलियों को हटाना। ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेवल एग्रीमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट को संदर्भित करता है जो सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट के बीच कमिटमेंट को रेखांकित करता है, जिसमें सर्विस की डिटेल्स प्रोवाइडर द्वारा पालन किए जाने वाले स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए मैट्रिक शामिल है।
जिससे इसे ऑटोमेट करने के सभी स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी मिलती है और एंड यूजर्स को टैम्पर प्रूफ, वेरीफाइबल ट्रांजैक्शंस और रियल टाइम यूसेज अपडेट्स के माध्यम से त्वरित विवाद समाधान में सहायता करते हैं। रोमिंग फ्रॉड की रोकथाम, रेवेन्यू लीकेजेस और फ्रॉड्स ट्रेडिशनल इकोसिस्टम के परिणाम है। अप्रैल 2023 की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर देखें तो धोखाधड़ी के नुकसान का अनुमान 1.76 लाख करोड़ के करीब था, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसका समाधान लेकर आई है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रोमिंग फ्रॉड को कम कर सकता है और प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके आईटी मैनेजमेंट में सुधार कर सकता है। अगर आज के जमाने की बात करें तो यूजर्स को कई वेंडर्स और सर्विसेज के लिए साइन अप करने के लिए बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रदान करनी होती है। ब्लॉकचेन के साथ एक शेयर्ड लेजर डिजिटल आइडेंटिटी से पब्लिक की का उपयोग करके एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाते हुए आइडेंटिटी ट्रांजैक्शंस को स्टोर कर सकता है और नेम्स, एड्रेसेस आदि जैसे स्टैंडर्ड फील्ड्स का एक सेट बनाता है। अंत में कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज जो डेटा अटैक्स को डिटेक्ट करता है और वो अपनी प्राइवेट की का उपयोग करके एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड करता है। नेटवर्क की इनअक्यूरेसी को कम करना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली एक मोबाइल टर्मिनल नेटवर्क लोकलाइजेशन मेथड मोबाइल टर्मिनल्स का पता लगाने और जीपीएस सिग्नल कमजोर होने पर लोकेशन ब्रॉडकास्ट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने में इनअक्यूरेसीज को कम कर सकती है। हर कस्टमर्स के लिए कनेक्टिविटी पासपोर्ट का उपयोग, ऑपरेटिंग मॉडल और सर्विस प्रोवाइडर्स में चैलेंज की हाई फ्रीक्वेंसी के कारण कस्टमर का प्रबंधन टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्लॉकचेन संचालित कनेक्टिविटी पासपोर्ट का उपयोग करके कस्टमर्स अपनी जानकारी सहमति से साझा कर सकते हैं, जिससे टेलकोस को पर्सनलाइज सर्विस बनाने और मार्जिन बढ़ाने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा सटीक बिलिंग के लिए एक्चुअल यूसेज डेटा को हर नेटवर्क के साथ साझा किया जा सकता है। 5G फैसिलिटेशन, 5G टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन से प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने और हर यूजर्स या मशीन के लिए सबसे फास्टेस्ट एक्सेस नोड को सिलेक्ट करने के लिए एक नई पीढ़ी के मैकेनिज्म को सक्षम करने के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग से लाभ हो सकता है, जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू। Whether you are an entrepreneur, investment banker, or market participant, You would definitely want to know about mergers and acquisitions, fundraising, and which way millions of dollars are heading in the big deals of the Web3 world. Find out all of that and more on a special show, Deal Corner, every Monday at 6:45 p.m. only on 3.0 TV. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. The metaverse market has faced a downturn in recent months amid growing popularity of the artificial intelligence industry. Several industry experts have observed that we were experiencing winter season in metaverse space. However, those chills are slowly disappearing and warm weather conditions are slowly developing. Clearing the air is a report by Dap Rada, which says amongst all Web3 investments, metaverse projects have succeeded in attracting 44% of total investments in 2023. The sector has managed to raise over $700 million from the venture capital firms since the beginning of this year, despite of bleak macroeconomic conditions. Well, investors are still holding bullish outlook, and it is likely that the investments will surely increase in the coming 5 years, as according to a report by KPMG. The institutional or venture capital investors have dedicated plans to increase overall metaverse investments in the next 5 years. Well, there are numerous reasons for holding this bullish investment outlook that sparked institutional investors or venture capital firms' interest into the metaverse.
First, most of the investors see early investment as a great opportunity to reap rich rewards. According to a report by KPMG, 1/3 or 36% of the investors feel that by not investing or investing too less in metaverse projects or technologies have made them realize they are missing a windfall opportunity. Client interest is another major reason which drives them to maintain or increase their metaverse investment strategies. The third reason being the venture capitalist exploration journey of emerging technologies, which attracts audiences and clients. Also, venture capital funds are interested in keeping up with emerging technology. Now, if we look at the bigger picture, the funding which has been deployed this year is way less than that of last year. According to the DAP Radar report, there has been a massive dip in funding as compared to last year, where the industry had raised $7.6 billion. Of course, there are a few reasons that have led to this decline in funding. So let's understand what these reasons are. The major reason is the decline in the price of metaverse tokens such as Mana and Sand of Decentraland and Sandbox respectively. The metaverse token price rose around 5% after Apple announced its mixed reality headset last month. However, the price of both tokens experienced a downfall after the US SEC labeled Decentraland's Mana, Sandbox's Sand and Axie Infinity's AXS token as securities. The sales of virtual land started this year with a bang, where the trade volumes increased by 4 times since May 2022 and touched around $311 million in Q1. Later, the trading volume decreased almost 81% due to interest in DeFi protocols or resurgence of meme coin speculation. The major world project Yuga Labs are the site too contributed to the downfall as its quarterly volume came down to $44 million from $294 million. Though the venture capital firms are bullish on metaverse and plan to invest more in the coming 5 years, there are certain factors such as interoperability across metaverse platforms, wider workplace adoption, and more affordable hardware options, which will play a crucial role in boosting investor confidence. Well, that's all in the story. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Global apparel giant Adidas has teamed up with prominent digital artist Fewocious on a physical sneaker collaboration with the kicks to be sold via an NFT redemption pass. Exploring the art of play, Fewocious collaboration with Adidas will span 4,500 editions of an NFT mint pass called Trefoil Flower, which will be available for purchase exclusively via the OpenSea marketplace on June 22nd. Follow 3.0 for more such updates. AI-generated avatar helps Synthesia enter billion-dollar club. El Salvador's Bitcoin miner Volcano Energy launches with $250 million investment. Tyco raises $22 million across 2 rounds for its Type 1 ZK EVM. Bitcoin life insurance startup raises $19 million in seed rounds led by Sam Altman, Gradient Ventures. Hyperplay raises $12 million to accelerate Web3 game launcher. For more such updates, keep watching 3.0 TV. So let's practice. You ready? If you see anyone besides me, what do you do? Great. Perfect. Come back now. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my pants. Put suckers in fear. Whoa!
Who doesn't like a walking, talking car that also becomes your friend like in those Transformer movies, right? Well, now that fantasy is a step closer to becoming reality. German automaker Mercedes-Benz announced that it will add OpenAI's ChatGPT chatbot to its cars via a beta program for the Mercedes-Benz user experience feature in its vehicles, enabling AI-driven voice commands and additional functionality. The beta will begin on Friday, June 16 and run for 3 months. The initiative will be limited to the United States market. Follow 3.TV for more such updates. Recently, blockchain gaming behemoth Animoca brand's subsidiary, Anichess, has raised $1.5 million to develop a decentralized chess game. Isn't it amazing, guys? Anichess, a community-driven free-to-play game, combines classic chess rules with a spell of magic, offering offensive, defensive, and counter tactics. Challenges add esports-like elements, and the game is partnered with Animoca brands and chess.com. Now, the immutable X-developed game Gods Unchained has made moves as it has been listed on Epic Games. The NFT gaming space is flushed with funds, and it's quite evident from MetaBlaze, a pioneering Web3 gaming and AI company, as it has raised an impressive $4 million with over 2,200 holders in its pre-sale round. Big financial institutions, banks are wasting no opportunity to engage customers, particularly in the US. It does not matter whether these institutions have to offer products based on Bitcoin or Ethereum. The race seems to have just begun to serve customers with access to digital asset exchanged traded funds in the Asian continent as well. Productions Limited, the production company managing the intellectual property of iconic British rock band Queen, has filed a series of patents relating to the metaverse and NFTs. The company also envisions creating a virtual marketplace featuring a range of items including virtual clothing, footwear, audio gear, CD and record players. Follow 3.TV for more such updates. If you wonder what led the recent surge in Bitcoin price to near one-year high, let me help you understand the reason for the same. There are dozens of factors that led the rally in Bitcoin, but the key catalyst behind several financial biggies joining the race of launching the spot Bitcoin-based exchange-traded funds, or the ETF. लेजेंडरी रॉक बैंड क्वीन ने रखा एनएफटी की दुनिया में कदम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस को मिलेगा उनसे मिलने का सुनहरा मौका। अर्मिस बेटा बर्किन कोर्ट केस में अर्मिस के हक में सुनाया गया फैसला। जानने के लिए देखिए हमारा स्पेशल शो एनएफटी वर्स। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए फॉलो करें 3.TV। Will the golden days of NFTs return? Because any asset, if give a enormous growth within 1 year, of course, some point in time it have to crash, right? So it can't be keep growing always. So and also it is directly relates with the crypto market, right? NFTs and crypto right now works, hand to hand. एक आम इंसान का सपना होता है एक अच्छी कार खरीदना, जिससे उसे कंफर्ट और सेफ्टी तो मिल जाती है, लेकिन कौन सी कार अच्छी है कौन सी नहीं, इसका फैसला कैसे किया जाए। आपकी इसी मुश्किल को हल करने के लिए आ गई है एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पोर्शा, BMW, फोर्ड, मर्सिडीज-बेंज, रेनॉल्ट जैसे कई वर्ल्ड फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की मदद से आम इंसान बेफिक्र होकर कार खरीद सकता है, इस विश्वास के साथ कि वो सोच समझकर अच्छा फैसला ले रहा है। Bet
roadmap theory to bridge gap between Bitcoin and Metaverse. Binance and The Weeknd enters Metaverse. FIFA files for Metaverse trademark applications. Nuclear Blast Records and Sandbox to launch Blast Valley. HSBC files trademark applications for NFT and Metaverse. Want to know more? Watch our weekly show Metaverse Magic every Monday, and for more such updates, follow 3.0 TV. Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Ruchi Sharma. And in today's special segment, we are discussing the Azuki airdrop and its impact on the overall NFT market. Over the last 24 hours, the NFT market has experienced a sharp decline following the backlash of the Azuki Elementals airdrop last week. According to data from NFT Go, BAYC has lost 16% and fell below 30 ETH. MAYC shed 20% and quoted below 5 ETH, and Azuki dropped 11% and was offered below 6 ETH. The overall market value of the NFT market has more than half, losing 53% to 3.33 million ETH in the past year. So, Azuki Elementals Mint was launched last week on June 27th with great excitement in the Web3 community. Marketed as the next stage of the well-known anime-themed PFP projects, Elementals quickly sold out, with all 20,000 NFTs being minted even before the pre-sale phase concluded. However, people were highly upset over the identical Elementals art, and the excitement around Elementals NFTs seemed to be fading very soon. As per the latest report, some holders have been selling Elementals well under the floor price. On the day of the launch, the Azuki Elementals NFTs sold for 2 ETH, about $3,800 a piece, or the floor price. However, the floor price has come crashing down to now under 0.8 ETH in a week of launch, as per the data from OpenSea. A lot of people who own or collect NFTs as well as creators have been expressing their dissatisfaction on social media about the appearance of the Azuki Elementals. They feel that the artwork of these NFTs is quite similar to the original anime-themed Azuki PFPs. People are worried that the Elementals collection will make the original Azuki project less special and valuable. Because of this, many people are selling their original Azuki NFTs. Well, that's all in today's special segment. We will meet again. Till then, keep watching 3.0 TV. For more updates, please log on to our website www.3worldstv.io or scan the QR code. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. You are watching our special show Metaverse Magic, wherein we bring to you important updates from the Metaverse space. Metaverse gaming platform Avatar Life has raised $1.5 million from InfoEdge Ventures, the venture capital arm of InfoEdge India. MetaGod creators are now all set to provide virtual experience of Vrindavan Chandrodaya Mandir. Meta has recently launched VR subscription service with its Quest Plus. Blockchain Sports and Polygon are all set to launch a sports academy in Metaverse. Well, there's a lot happening in the Metaverse space. Isn't that amazing? So let's dive deep into the world of magical Metaverse. Avatar Life, a Metaverse gaming platform, has raised $1.5 billion in a seed funding round led by InfoEdge Ventures, the investment arm of Naukri.com parent InfoEdge India Limited. Avatar Life, co-founded in 2022 by Sushant Chandrasekhar and Gaurav Gupta, offers single-player, multiplayer and play-to-earn skill-based games in virtual world. The company is in the midst of developing mobile-based 3D goods aimed at users in India. According to Markets and Markets, the global metaverse market is expected to increase from $61.8 billion in 2022 to $426.9 billion by 2027.
Well, in the virtual world, you can do almost anything, and now you can even go to a temple. Yes, making this a reality are MetaGod creators. MetaGod Creators, a platform that aims to revolutionize how people experience spirituality and devotion in the mixed reality, has been awarded the Phase 1 mandate for Vrindavan Chandrodaya Mandir Trust in the Metaverse platform. The mandate comprises the creation of a Metaverse platform for the temple's Phase 1 South Wing. Users can access daily aarti, and users can even practice cow worship and prasadam service. Let me tell you something very interesting about the temple. Vrindavan Chandrodaya Mandir, a project by ISKCON Bangalore devotees, is the world's highest temple under construction in Vrindavan, Mathura. The temple will be the tallest, finest and largest religious building in India, spanning several acres. According to project organizers, the 70-story tall temple will hold or include a capsule elevator that would transport guests from the ground level to a viewing gallery at the top, providing a panoramic view over the Braj area. Sounds interesting, right? So let's listen into what the founder of MetaGod, Mr. Anish Katyal, has to say about it. With this Vrindavan Chandrodaya temple, which is going to be one of the most iconic temples of the world, Right. we thought, this is going to be a really a good marriage between a metaverse and a iconic temple, so that because both of the things are new and it's going to be iconic when we launch this. And we are very near to the launch, which is going to happen in November. Now, in this entire metaverse of VCM, which is Vrindavan Chandrodaya Mandir, people will be able to experience not only the temple, but will be able to actually have an experience of one-on-one interaction with their deity. They can have Gita Sar sitting at their home. They can do virtual parikrama of Vrindavan. All these features will be a part of our metaverse, which we are going to launch. And apart from that, whatever prasadam they are going to offer, it will be delivered to your place, whether you are in India or abroad. Well, there are few barriers which restrict people to enter a virtual world, such as high costs of VR headsets. But now, users have an opportunity to subscribe to certain games. Yes, making this a reality is none other than tech giant Meta. Meta has unveiled a virtual reality subscription service that will provide consumers with 2 new games every month. Meta Quest Plus will cost around $7.99 per month, and it works with the Quest 2, Quest Pro and future Quest 3. Well, this can be seen as Meta's latest endeavor to create recurring revenue from its Reality Labs arm, which is developing virtual reality and augmented reality technology, is the subscription service. So every month on the 1st, new games will be released for Meta Quest Plus subscribers. And now, good news for all the sports lovers. We are familiar with Polygon's integrations in the world of sports. And now, Blockchain Sports, a Web3 environment that helps young athletes become pros, has recently partnered with Polygon and Ethereum scaling network to develop a metaverse initiative. The two intend to establish a sports academy in the metaverse. Isn't that cool? A sports academy in the metaverse? Well, Blockchain Sports intends to provide metaverse sports experiences, and Polygon has been hired by the Web3 firm to power its highly anticipated metaverse sports project. Polygon, like Ethereum, uses a proof-of-stake consensus mechanism to process transactions on-chain. Now, as we know, metaverse has the potential to transform almost every sector, be it education, gaming, entertainment, aviation, or healthcare. Well, the first hospital to test the waters of metaverse was Yashoda Hospitals of Hyderabad. And now, Kakao Healthcare, a South Korean digital healthcare platform unit, has been chosen as the final operator of 2023 Metaverse Pioneer Project in the medical sector. The project's goal is to overcome the spatial and time limits of metaverse and healthcare services, as well as to enhance national health and develop future food. Well, that's all in this episode of Metaverse Magic. I will be back with more such interesting updates from the Metaverse space. Do like, share and subscribe to our channel, and for more such interesting updates, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off.
Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Manoj Dara. So investors are well aware about the fact that Bitcoin has succeeded in distancing itself from the falling under preview of the Securities Exchange Commission since it has been classified as a commodity. However, investors are wondering as to why SEC approval is necessary for a product which is derived from Bitcoin, an asset categorized as a commodity, and its ETF as security. We will try to decipher as to why ETFs, by the virtue of being a financial contract, are regulated by the SEC and the intricacies behind its regulations by the SEC, even as a Bitcoin is not considered as a security. Here is why SEC thinks ETFs can be a security. There are three contours to the SEC categorizing ETFs as securities. The most basic being it involves investments of money. So when you purchase shares in Bitcoin ETF, you invest in pool of assets, in this case Bitcoin. You may not be buying Bitcoin directly, but your investments in funds result in creating an exposure into the Bitcoin. This means you are contributing to a common pool or a common enterprise, in this case the ETF fund. When an investor invests in Bitcoin ETF, he or she doesn't own the Bitcoin directly. Instead, the ETF creates a position in futures contracts based on the Bitcoin, while the investors own shares in that ETF. The futures contract is a standardized contract where two parties agree to exchange a specific quantity of assets on a specific day for a particular price. Thus, investors are pooling resources together with other investors into a common enterprise. The pooling of funds is done with the expectations of a profit, of course. So the basic idea of an investor to buy a share of a Bitcoin ETF is to earn money. That's what the intention is. Hence, there is an expectation of making a profit, and that's how the products are designed. The ability to fulfill these expectations is based on the efforts of others. In this case, the management of the ETF, it depends upon who is managing the ETF, who safeguards the Bitcoin and tracks its price. The above three conditions, according to SEC, qualifies a Bitcoin ETF as an investment contract, which in turn is categorized or which is put under the category of securities. Hence, the SEC needs to approve any ETF before it can be listed on a traditional exchange, helping to protect investors by overseeing the issuer's financial condition, disclosures, and operations. Interestingly, the SEC has not approved any Bitcoin spot ETFs for the funds that hold Bitcoin. Instead, it has approved Bitcoin ETFs linked to the Bitcoin futures contract that traded on the Chicago Mercantile Exchange as far as ETF preference over the spot Bitcoin is concerned. The ETFs offer many advantages, and it not only helps to address high price volatility related to the Bitcoin, or for that matter Ethereum, but also circumspect other key factors such as holding wallet, remembering key, possibility of being hacked, and the most important, the lack of regulatory oversights. Well, investing in VDAs or cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, and other digital assets remains a risky proposition. Buying ETFs can be a viable option to tackle the related issues. That's all there is in this special segment. This is Manoj Dara signing off. Keep watching 3.0 TV for more such interesting analysis and update from the crypto world. Thank you. With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. 15 मिनटों में $38 मिलियन बटोरने वाली अज़ूकी एलिमेंटल्स ने NFT होल्डर्स को किया निराश। चैरिटी के लिए केंडल जेनर, केट मॉस और कई सितारे जज करेंगे एक डिजिटल आर्ट कंपटीशन। युगा लैब्स जैक ग्रुप के साथ मिलकर लॉन्च करेगा क्रिप्टोपंक्स पर एक किताब।
and a very warm welcome to all of you. मैं हूँ रुचि शर्मा। स्नूप डॉग की सॉन्ग NFT पर बेस्ड यूनिक कॉन्टेस्ट से लेकर केट मॉस और केंडल जेनर का एड्स रिसर्च के लिए चैरिटी इवेंट को जज करने तक कई मजेदार NFT न्यूज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो जाइए तैयार। NFT वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से होगी मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हालचाल। मई के मुकाबले जून 2023 में NFT सेल्स 4.3% घटकर $707 मिलियन रही। टोटल सेल्स में से 63% शेयर यानी $452 मिलियन कंट्रीब्यूट कर इथेरियम NFT सेल्स नंबर 1 पोजीशन पर रही। दूसरे पायदान पर $110 मिलियन NFT सेल्स के साथ कायम है बिटकॉइन NFTs। तो वहीं $70 मिलियन की सेल्स के साथ सोलाना तीसरे पायदान पर रही। चौथे और पांचवें पायदान पर रही माइथोस और पॉलीगॉन $28 मिलियन और $27 मिलियन के साथ, जिनके बीच कंपटीशन अब कड़ा होता जा रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर हर्ष छाछरा का। NFT की करंट मार्केट सिचुएशन कैसी है और NFT का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? The global non-fungible market size was valued at around $20 billion in 2022. And it had expected to grow at a rate of 34% approximately from 2023 to 2030. So I think there are a lot of attributes and factors which have contributed in this sense of ownership via NFTs, why NFTs in the global space is getting more traction. So the global NFT industry has lately demonstrated immense development in terms of how creators are getting onboarded, how musician artists are getting onboarded onto NFTs and working deeper with the communities and their fan base. A lot of these big companies, big brands have also started their NFTs, which gives the consumers a sense of ownership altogether and being exclusive in the space. So the primary parameter causing a surge in this performance of the market is the escalating global demand for digital art and digital music, plus the cryptocurrency usage in the space as well. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अज़ूकी एलिमेंटल्स लॉन्च हो गए। ये लॉन्च अब तक के सबसे एक्साइटिंग NFT ड्रॉप्स में से एक था। महज 15 मिनटों में 10,000 इथेरियम प्रोफाइल पिक्चर्स $38 मिलियन में बिक गई। ऐसे जबरदस्त सक्सेस को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन असल ट्विस्ट तो अभी बाकी था। इस एयर ड्रॉप के बाद अचानक की एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई और बायर्स ने इन NFTs को मिंट प्राइस से भी कम कीमत में बेचना शुरू कर दिया। 2 ETH पर पीस के प्राइस से शुरू हुई अज़ूकी एलिमेंटल्स का फ्लोर प्राइस कुछ ही घंटों में 1.32 ETH तक गिर गया। कई NFT होल्डर्स और क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया पर अज़ूकी एलिमेंटल्स के काफी नेगेटिव कमेंट्स भी पोस्ट किए। सभी कमेंट्स में यही शिकायत थी कि ये एलिमेंटल्स ओरिजिनल अज़ूकी के आइडेंटिकल हैं, इनमें कोई फर्क है ही नहीं। तो कुछ ने अज़ूकी एलिमेंटल्स के वीक डिजाइन की डिटेल्स भी हाईलाइट की है। दरअसल होल्डर्स ने इस डर से अज़ूकी एलिमेंटल्स को मास सेल ऑफ कर दिया कि ये अज़ूकी ओरिजिनल प्रोजेक्ट की अपील और वैल्यू को डाइल्यूट कर देंगी। ऐसे में सेकेंडरी मार्केट पर लिस्टेड सबसे सस्ती अज़ूकी NFT का फ्लोर प्राइस पिछले 24 घंटों में 44% गिर गया है। एक तरफ अज़ूकी एलिमेंटल्स को होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया, तो दूसरी तरफ वी फ्रेंड्स का नया कॉन्टेस्ट क्रिएटर्स को नचा रहा है। यस, क्वाइट लिटरली। प्रोजेक्ट वी फ्रेंड्स लेकर आया है एक यूनिक और मजेदार कॉन्टेस्ट। वी फ्रेंड्स के क्रिएटर गैरी वी और स्नूप डॉग ने एक गाना तैयार किया है जिसका नाम है प्लीज टेक अ स्टेप बैक। कॉन्टेस्ट के लिए क्रिएटर्स को इसी गाने के ओरिजिनल ऑडियो को यूज करके 60 सेकंड का एक वीडियो बनाना है और उसमें अपना टैलेंट शोकेस करना है। इतना ही नहीं, क्रिएटर्स को अपना वीडियो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करना होगा। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। क्रिएटर्स को कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले एक प्लीज टेक अ बैक सीट NFT खरीदनी होगी और उसे बर्न करना होगा, तभी वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये कॉन्टेस्ट जून 30, 2023 को 12 PM EDT को शुरू हुआ था। इस कॉन्टेस्ट के 10 विनर्स को गैरी वी के साथ अटलांटा में एक यूनिक एक्सपीरियंस एंजॉय करने का मौका मिलेगा, जिसमें एक प्राइवेट जैम सेशन के साथ साथ स्नूप डॉग और विज खलीफा के कॉन्सर्ट की VIP टिकट्स भी शामिल होंगी। डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड NFT कलेक्शन के लॉन्च के महज 2 महीने बाद फॉर्मर फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी तैयार है अपनी दूसरी NFT कलेक्शन लेकर।
और इस बार उनकी NFT यूएस इंडिपेंडेंस डे को समर्पित है। मिसेस ट्रम्प की इस NFT कलेक्शन को नाम दिया गया है द 1776 कलेक्शन। 6 पेजेस की इस NFT डिजिटल कलेक्शन में यूएस की अलग अलग आइकॉनिक लोकेशंस की इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है। इस NFT कलेक्शन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, माउंट रशमोर और द लिबर्टी बेल की इमेजेस शामिल होंगी और हर एक पीस में पेट्रियोटिक थीम म्यूजिक ट्रैक यूज किया जाएगा। 7 अलग अलग डिजाइन के साथ इस NFT में कुल 3500 NFTs होंगी। ये NFT कलेक्शन जून 29 से यूएसए मेमोरेबलिया पर अवेलेबल होंगी और इस कलेक्शन की कीमत $50 पर पीस रखी गई है और इससे होने वाली कमाई चैरिटी में दी जाएगी। इस NFT कलेक्शन की सेल का एक हिस्सा फॉस्टरिंग द फ्यूचर बी बेस्ट इनिशिएटिव को दिया जाएगा ताकि फॉस्टर केयर कम्युनिटी में रहने वाले बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और स्कॉलरशिप दी जाएं। भाई आज सितारे जमीन पर उतर आए हैं और वो भी एक नोबल कॉज के लिए। सोशल कॉज NFTs की लिस्ट में जुड़ने वाला है अब एक और नया नाम। केंडल जेनर, केट मॉस, म्यूजिशियन जे बॉल्विन, आर्टिस्ट जेफ कून्स और फिल्म मेकर बैज लर्मन, इतने सारे सितारे एकजुट हो गए हैं, वो भी एक नेक काम के लिए। जी हाँ, ये तमाम सितारे जज की कुर्सी संभालने वाले हैं, जहां ये चुनेंगे कुछ बेहतरीन डिजिटल आर्ट पीसेस जो शामिल किए जाएंगे एक खास NFT कलेक्शन में। इस NFT कलेक्शन की सेल से जमा होने वाली पूरी राशि द फाउंडेशन फॉर एड्स रिसर्च को चैरिटी में दी जाएगी। 9 जुलाई से पहले दुनिया भर से क्रिएटर्स को अपने ओरिजिनल डिजिटल बैकग्राउंड सबमिट करने होंगे। टोटल बैकग्राउंड्स में से 100 सिलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें AMFAR द्वारा क्रिएट किए गए फोरग्राउंड कैरेक्टर्स के साथ कंबाइन करके AMFAR की पहली NFT कलेक्शन तैयार की जाएगी। इस कलेक्शन से होने वाली कमाई एड्स रिलेटेड रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इन डिजिटल आर्टवर्क्स की ओरिजिनलिटी, मीनिंग और AMFAR के प्री डिजाइंड फोरग्राउंड कैरेक्टर्स के साथ मेल खाते इन आर्टवर्क्स के एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए सेलिब्रिटीज जजेस की टीम बेस्ट कलेक्शन को सिलेक्ट करेगी। किताबों पर NFTs के बनने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने किसी NFT पर लिखी गई किताब के बारे में सुना है? नहीं ना? लेकिन NFT की इस अजब गजब दुनिया में सब मुमकिन है। युगा लैब्स कुछ बहुत अनोखा करने जा रहा है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि युगा लैब्स जैक ग्रुप के साथ मिलकर पब्लिश करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बुक जो क्रिप्टो पंक्स के अब तक के सफर को डॉक्यूमेंट करेगी। क्रिप्टो पंक्स का एक ऑफिशियल कैटलॉग बनेगा। है ना बड़ी हैरान कर देने वाली खबर? क्रिप्टो पंक्स इथेरियम पर हिट होने वाली शुरुआती NFT प्रोजेक्ट में से एक है, जिसने क्रिप्टो आर्ट मूवमेंट के आगाज में अहम रोल निभाया है। क्रिप्टोपंक्स के 10,000 यूनिक जनरेटिव कलेक्टेबल अवतार्स हैं, जिनकी ओनरशिप के प्रूफ इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड है। युगा लैब्स और जैक ग्रुप के कोलैबोरेशन के पीछे मकसद है क्रिप्टोपंक्स की अनसुनी कहानी और कल्चरल इन्फ्लुएंस को दुनिया के सामने लाना। इस किताब में क्रिप्टोपंक्स के बनने की पिक्सल बाय पिक्सल की कहानी तो होगी ही, साथ ही स्नोफ्लो, बीपल, 6529, डेफ बीफ जैसी कुछ बड़ी हस्तियों का क्रिप्टोपंक्स की सफलता में योगदान का जिक्र भी होगा। आर्टिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, क्यूरेटर्स और क्रिप्टोपंक्स कम्युनिटी भी इस कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिकेशन को तैयार करने में अपने क्रिएटिव इनपुट्स देगी। उम्मीद है कि इस साल के अंत से पहले ये किताब रिलीज हो जाएगी। Well, that's all in this episode of NFT Verse. वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। Hello and welcome to 3.2TV. I am Vishakha Thakur. According to Bloomberg Intelligence, there have been about 30 attempts for a spot Bitcoin product as of last week from various asset managers including Fidelity, WisdomTree, Vanek, ARK Invest, Invesco and BlackRock.
Unfortunately, the US SEC has said that the wave of spot Bitcoin exchange-traded funds applications filed this month are inadequate. The SEC believes that the applicants, including BlackRock, have not provided sufficient details on how they will manage a surveillance sharing agreement to prevent fraud and manipulation. The price of Bitcoin immediately plunged by $1,000 or more than 3% in the span of a few minutes, and at the cut-off time for this bulletin, Bitcoin was trading around $30,630. Follow 3.2 TV for more such updates or log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड एनएफटी कलेक्शन के लॉन्च के महज 2 महीने बाद फॉर्मर फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी तैयार है अपनी दूसरी एनएफटी कलेक्शन लेकर, और इस बार उनकी एनएफटी कलेक्शन यूएस इंडिपेंडेंस डे को समर्पित है। मिसेस ट्रंप की इस एनएफटी कलेक्शन को नाम दिया गया है द 1776 कलेक्शन। 6 पेजेस की इस एनएफटी डिजिटल कलेक्शन में यूएस की अलग अलग आइकॉनिक लोकेशंस की इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है। इस एनएफटी कलेक्शन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, माउंट रशमोर और द लिबर्टी बेल की इमेजेस शामिल होंगी, और हर एक पीस में पेट्रियोटिक थीम म्यूजिक ट्रैक यूज किया जाएगा। 7 अलग अलग डिजाइन के साथ इस कलेक्शन में कुल 3500 एनएफटीज होंगी। ये एनएफटी कलेक्शन 29 जून से यूएसए मेमोरेबिलिया पर अवेलेबल होगी। इस कलेक्शन की कीमत $50 पर पीस रखी गई है और इससे होने वाली कमाई चैरिटी में दी जाएगी। इस एनएफटी कलेक्शन की सेल का एक हिस्सा फॉस्टरिंग द फ्यूचर बी बेस्ट इनिशिएटिव को दिया जाएगा, ताकि फॉस्टर केयर कम्युनिटी में रहने वाले बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। 3.2 TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा अपडेट्स और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर, या फिर QR कोड को स्कैन करें। Rapid fire round. Think of 3 video games that you played the most in your childhood. Let me guess. Contra? Tetris? Prince of Persia? Sonic the Hedgehog? Or Super Mario? I know, be it anything. You must have thought about Super Mario once or twice, I can bet. Because why not? All my friends used to play Super Mario a lot. Which is why every time I play games that are quite similar to Mario, they just make me blabber with joy. Okay, I know I exaggerated the scenario, but seriously, I feel very, very, very nostalgic whenever I look at games, with a similar graphics and all. By the way, I was the first in my entire friend circle to complete all Super Mario levels. Then they launched Super Mario Kart. My god, I love the game. I may not be someone's a passenger princess, but I always was Princess Peach while playing Super Mario Kart. Yeah, lame, I know. But reminiscent to Mario Kart, we have a new NFT-inspired car racing game by the developers of D-Labs, none other than Rumble Racing Star. Rumble Racing Star is a multiplayer racing game in which wild and wacky characters ride lawnmowers very slowly. I still miss Mario, Toad, Bowser, Metal Mario, Yoshi, Lucky 2, Luigi. But never mind, I know old is gold, but this new game also offers amazing characters like the Bored Ape Yacht Club, Pudgy Penguins, Wideable OTs, Goblin Town, Vikings. I know what you're thinking. By now you must have guessed where we are headed at. Yes, Rumble Racing Star, also known as RRS,
capitalizes on its inherently ludicrous premise by allowing players to unlock a variety of characters based on NFT collections. RRS has a modern AAA look with vibrant colors, high-quality images, and a country theme. The game's distinguishing feature is the seamless implementation of non-fungible tokens, which encourages active social interaction. NFT allows players to completely customize their cards, drivers, and profile images. RRS has also partnered with several NFT-based profile photo collections to provide its holders with exclusive in-game advantages. I find the tutorial to be really clear and straightforward. It's perhaps too simple, but with a game that requires the usage of the arrow keys and the control and alt keys, RRS might be enjoyed by both young children and casual adult players. The game's menus and typefaces look like a combination of Fortnite and Fall Guys. While some may find the UI lacking in creativity, its familiar feel may appeal to some younger players. Overall, the game feels like something I would have found addictive as a child under the age of 14. Players can connect their existing blockchain wallets or establish new ones straight within the game to manage their in-game NFTs. D-Labs is presently investigating the integration of more third-party wallets and social logins to ensure that all players have equal access. Events, airdrops, tournaments, and quests in-game allow players to get NFT-based customization goods, which can be then exchanged on decentralized marketplaces like OpenSea. Furthermore, the RRS team has taken care to keep all players on an equal playing field, regardless of whether they have NFTs or not. To be clear, in-game assets do not provide direct racing benefits. Therefore, this ensures that both Web 2 and Web 3 players have equal chances of winning. Non-NFT cards will feature equally powerful upgrades, modifications, and cosmetics akin to their NFT-based counterparts. The graphics, in my opinion, is cute. It unleashed my inner child. The game is amazing overall. The NFT gaming ecosystem is expanding, and the gamers have experienced a substantial increase in the skins market, which is an opportunity for the NFT gaming ecosystem. So basically, guys, the skins and NFTs are virtual commodities used in gaming universes, with NFTs based on blockchain technology. Skins are now mainstream, and the growing popularity of gaming skins suggests a bright future for NFTs. The NFT industry has a good opportunity and can capitalize on this trend by marketing NFTs as a channel for buying and selling skins, ensuring unique products and traceability, which is crucial in the gaming community. Okay, we have been faffing around a little too much. I guess I'm just gonna go play some games and review it in the next episode of Gaming Zone. Until then, keep watching 3.0 TV and do not forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Also, do log on to our website at www.freeversetv.io to know more. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. You are watching our special show Metaverse Magic, wherein we bring to you important updates from the Metaverse space. Punjab National Bank has launched a virtual branch in Metaverse. Qatar Airways has added exciting new features to its Metaverse platform, Qverse. Infosys and the International Tennis Hall of Fame are collaborating to build a Metaverse museum, and Metaverse dominates Web3 investments. Well, there's a lot going on in the world of Metaverse. Isn't that amazing? So let's listen in to what Mr. Akhil Damodaran, founder of Ethereum, has to say about the factors that will drive the growth or adoption of Metaverse. I mean, it's a nice question that, the Metaverse is actually dominating the Web3 investments. The reason is pretty simple. I mean, if you look at the main pillars of investment in Web3 at this moment is more towards blockchain, and then decentralized applications, then you have DeFi, and then Metaverse. But if you look at it, Metaverse is something which is more front-end compared to all the other technologies. I mean, if you look at it, it has a much more important potential
to make sure to disrupt the customer experience. I mean, how to make sure that you have enhanced customer experience for the next era. I think metaverse is what the biggest bet will be. And that's the reason why every company is now focusing towards metaverse. And I think the bet is coming more and more towards metaverse. I mean, if you look at Punjab National Bank has started their own metaverse in banking. Healthcare executives are now trying to use metaverse in terms of counseling the patients. Apart from that, you have museums and artifacts getting inside metaverse, in which people can buy the artifacts NFTs, so that becomes a revenue stream for the museums and libraries. I mean, there are much more potential for metaverse directly connected to the customer, and that's exactly the main crucial part is. Also, because metaverse is the only platform apart from all of them which has the potential to amalgamate all the other technologies within them. Be it AI, be it blockchain, be it any other technology, can all come and immerse inside the metaverse ecosystem. And now let's dive deep into the world of magical metaverse. Banking in the metaverse will be an exciting experience, and financial institutions are betting big on it. Punjab National Bank, or PNB, has recently announced the launch of PNB Metaverse, a virtual branch. Yes, the bank has joined the metaverse with a virtual branch where its customers will have access to a virtual environment and can explore all services from the comfort of their home or workplace using a laptop or mobile phone. Bank deposits, government flagship schemes, retail or MSME loans, digital products, and other services are all available to both existing and new customers. The virtual branch will provide immersive experiences while customers execute typical banking activities via their avatars. Well, the aviation industry too is embracing metaverse. The thought of getting on a plane excites everyone, but the steps involved in boarding a flight can be annoying at times. But what if I tell you that you can explore all your travel arrangements before physically arriving at the airport? Well, this will soon become a reality thanks to Qverse, the metaverse platform of Qatar Airways. Qverse, which was launched last year in the month of April, has been upgraded with exciting new features. Qatar Airways will provide all the travelers with an opportunity to explore their travel arrangements in the virtual world even before they arrive physically at the airport. While exploring these new digital environments, you can also receive up to 10% discount on the prices of air tickets. Not only this, you can now take virtual reality tours where the digital meta-human cabin crew of Qatar Airways named Sama will guide you. Metaverse has the potential to transform various sectors, including the world of sports. Well, there is good news for all the tennis lovers. The International Tennis Hall of Fame and Infosys have joined hands to deliver tennis history, artifacts, and great stories to all fans across the world in order to connect those who love the sport of tennis. They have begun a genuinely transformative effort to replicate the physical museum into a 3D digital world. In the Hall of Fame's collection, fans may find iconic objects from tennis history, such as an original pair of Stan Smith Adidas sneakers, a racket used by Stephanie Graf during her Golden Slam in 1988, and a dress worn by American tennis player Serena Williams at the 2018 US Open. Well, not only tennis, you can also play golf in the metaverse. The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews in Scotland, more commonly known as the R&A, has collaborated with the virtual reality-focused company Golf 5 to launch a metaverse event named We Are Open in Metaverse. Through this virtual event, all golf fans can engage with the championship like never before. You can participate in the exciting golf game of the virtual event and win a ticket to the 152nd Open Golf Tournament, which is going to be held next year in England. Well, the rules of game will be exactly the same as that of the actual tournament. The finale is all set to take place between July 15 and August 19, 2023. Not only this, if you get qualified, you will be eligible for a vanity card, unlocking access to the virtual open zone at Hoylake, England. Finally, the winner can enjoy watching live the Open tournament in England. And now, good news for all metaverse lovers. The metaverse market has faced a downturn in recent months with the growing popularity of artificial intelligence industry.
Several industry experts declared that we were going through the winters of metaverse, but now ending those chills and clearing the air is a report by DAPRADA, which says that amongst all the Web3 investments, metaverse projects have succeeded in attracting 44% of 2023 Web3 investments. The sector has managed to pull in over $700 million from the venture capital firms since the start of this year, and despite the macroeconomic conditions. Well, that's all in this episode of Metaverse Magic. I will be back with more such interesting updates from the Metaverse space. Do like, share and subscribe to our channel, and for more such interesting updates, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Whether you are an entrepreneur, investment banker, or market participant, You would definitely want to know about mergers and acquisitions, fundraising, and which way millions of dollars are heading in the big deals of the Web3 world. Find out all of that and more on a special show, Deal Corner, every Monday at 6:45 p.m. only on 3.0 TV. Credit Suisse has decided to join the NFT bandwagon. The Swiss banking major will enter the space to support women's soccer in Switzerland. On July 3rd, Credit Suisse entered into a collaboration with the Swiss Football Association, whereby the bank will release 756 Ethereum NFTs, and the proceeds of which will be used to support Swiss women's soccer team. By implementing the project, Credit Suisse is setting another milestone in the development of the Swiss digital asset market, the bank said in a press release. For the benefit of buyers, Credit Suisse has added a new function under digital assets to its app CSX. As a result, these NFTs will be available on the app, which doesn't actually necessitate owning a crypto or crypto wallet. Further, to ensure seamless buying process, the buyer can access these digital assets on the CSX app. This will result in customers enjoying simple and hassle-free transactions, which will help in broadening client base. Interestingly, these NFTs are available for purchase in Swiss francs on the app. Meanwhile, each NFT is based on player from the Swiss women's national team. These NFTs will have 3 rarity levels based on which the NFT holders will be eligible for perks and other benefits. As far as pricing of these NFTs are concerned, they are based on the rarity level. Higher the rarity feature, costlier the collectible will be. Least rare NFTs can be purchased for as low as 150 Swiss francs, whereas for the 11 most rare features, holders will have to pay as high as 10,000 Swiss francs. The NFTs will be on sale from July 11th to August 31st on Credit Suisse CSX digital banking app. This means the NFTs are only available to residents of Switzerland with a client relationship with the bank. It may be recalled that Credit Suisse was acquired by Swiss investment bank UBS last month. That's all in this special story. This is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV, and for more updates log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. Venture capital investment in crypto companies has fallen over 70% in 1 year. During the month of June 2022, the digital asset space received $1.81 billion in 149 rounds, whereas this year only 83 projects registered $520 million, the lowest funded month to date. The fall in crypto VC investment is due to dismal actions by companies such as FTX and Terra, along with the banking turmoil that took down 4 of the crypto-friendly banks. The former high-flying crypto asset class has taken a back seat to other investments, namely artificial intelligence or AI.
This shift is due to the ability of AI products and applications to cater to a broader audience while the crypto industry continues to focus on itself. Follow 3.0 TV for more such updates or log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Ruchi Sharma, and in today's special segment we are going to explore the new BRC token standard launched for Bitcoin ordinals. The BRC69 standard brings with it an innovative way to reduce the time and cost it currently takes to make an inscription. Ordinals, Bitcoin's version of NFTs, allows non-fungible data to be stored on blockchain. Previously, ordinals had a 4 megabyte limit on what could be inscribed on Bitcoin. BRC69 looks to bypass that limit through what's known as recursive inscriptions. Recursive inscriptions are a mechanism that allows user to extract data from existing inscriptions and use them to create new ones. According to the protocol's GitHub, the BRC69 token standard is a way of recycling data already inscribed and reducing the current cost by more than 90%. Well, that's all in today's special segment. We will meet again. Till then, keep watching 3.0 TV. For more such updates, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Ruchi Sharma. In today's bright new episode of Deal Corner, where we dwell into interesting aspects of Web3 space, the fundraising, mergers and acquisition, try to ascertain what prompts various companies to close such deals successfully. Was it to do with the mere expansionary vision, or they are just trying to thwart competition any which way? Let's try and understand the game behind Web3 funding. Global VC funding plummeted 49% year-on-year in the second quarter of 2023, falling to $65 billion from $127 billion in the same period previous year. This was also an 18% decrease from the first quarter of the year. Funding plummeted 51% to $144 billion in the first half of 2023, from $293 billion the previous year. Inflection AI, based in Palo Alto, California, announced the completion of a $1.3 billion funding round headed by Microsoft, Reid Hoffman, Bill Gates, Eric Schmidt, and NVIDIA. The extra funds will go towards the construction of a 22,000-unit NVIDIA H100 Tensor GPU cluster, which the company claims is the largest in the world. The GPUs will be utilized in the development of large-scale artificial intelligence models. Inflection AI is also working on its own personal assistance AI system known as Pi. According to the company, Pi is a teacher, coach, confidant, creative partner, and sounding board who can be reached immediately via social media or WhatsApp. The company's total funding amount has reached $1.525 billion since its inception in early 2022. Moving ahead on our list is yet another deal in the AI segment. Celestial AI announced a $100 million Series B funding round. IAG Capital Partners, Koch Disruptive Technologies, and Temasek Zora Innovation Fund lead the round. According to CEO David Lazowski, the tranche, which brings Celestial AI's total raise to more than $165 million, will be used to assist the production of Celestial's Photonics platform by growing the company's engineering, sales, and technical marketing teams. Celestial, a portfolio company of the Intron, developed a photonics-based architecture that scales across multiple chip systems. The technology uses light to transfer data, allowing information to be beamed within chips and chip-to-chip, making memory and compute available for AI workloads. Celestial claims that its photonics reduce the amount of electricity needed for data movement, indirectly boosting a chip's performance. This reduces the power required for data movement, allowing a chip to increase its compute power in theory.
From AI to crypto exchange, we move ahead to next deal. OKX, a cryptocurrency exchange, has expanded its collaboration with Manchester City, the English Premier League soccer club, to become the team's official sleeve sponsor. According to Forbes, the new multi-year agreement will see OKX pay Manchester City more than $70 million over the course of the 3-year partnership. OKX branding will appear on both the men's and women's first team playing jerseys left sleeve. OKX became Manchester City's official cryptocurrency partner in March 2022, and the agreement was later expanded to include sponsorship of the team's training gear. Manchester City is coming off a remarkable treble season in which it won 3 major championships: the Premier League, the FA Cup and the UEFA Champions League. The partnership is intended to help the world learn more about blockchain and its use cases, including what we can do with our partnership to go beyond fan tokens. Moving on to the next deal. Cat Paradise, a peer-to-peer blockchain game built on the TON network, has announced a significant preliminary round of funding. The round garnered about $1 million with a valuation of $15 million, with participation from Mars Network and Moon Capital. The funds will be used to upgrade existing on-chain technology, hire more qualified developers, and expand its customer base. Cat Paradise offers players incentives and tokens for participating in community events and caring for digital cats without creating profiles or linking wallets. The platform utilizes augmented reality and NFT, allowing users to bond with digital cats and access early access to community features, curated content, and collaborations with major labels and artists. The final deal on our list is data analytics firm. CryptoQuant, a data analytics platform, announced that its parent company, Team Blackbird, has closed a $6.5 million Series A sponsored by Atenum Investment of South Korea. The revenues will be used to recruit for both its South Korean and overseas operations, according to the company. With prior investments from Galaxy Interactive and Mirai Asset Cash, the company's total cash raising now stands at $9 million. That's all in today's session. Keep watching 3.0 TV for more such interesting updates from Web3 space. And for more information and updates, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Folks, have you often wondered about watching a live golf tournament, and that too the Open, the golf's original championship? What if I tell you that you can win a ticket to the 152nd Open Golf Tournament? Well, let me tell you, how can you win the ticket of the oldest golf tournament in the world? Metaverse has changed the way we engage ourselves in recreational activities. Realizing the potentials, sports industry is already embracing Metaverse. Confirming these discernible changes are recent reports that suggest that the sports Metaverse is poised to become $80 billion market. What follows next will surely interest you. Now, you can not just experience the virtual sports but also participate in the oldest golf tournament in Metaverse. Yes, the Royal and Ancient Golf Club of St Andrews in Scotland, more commonly known as the R&A, has collaborated with the virtual reality-focused company Golf5 to launch a Metaverse event named We Are Open in Metaverse. Through this virtual event, all golf fans can engage with the championship like never before. You can participate in the exciting golf game of the virtual event and win a ticket to the 152nd Open Golf Tournament, which will be held next year in England. Well, the rules of the game will be exactly same as that of the actual tournament. The finale is all set to take place between July 15 and August 19, 2023.
This one-of-a-kind experience will allow all the qualified players as green badge players, and all the other non-qualified players can certainly play as red badge ones. It's not over yet. If you qualify to participate, you will be eligible for a vanity card unlocking access to the virtual open zone at Hoylake, England. Finally, the winner can enjoy watching live the Open tournament in England. So are you ready to discover the exciting golf game in the virtual world? Comment down below and let us know. To get more interesting updates from the Web3 space, do like, share and subscribe to our channel and log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. आज के इस खास सेगमेंट में हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं ब्लॉकचेन से जुड़ी एक और खास अपडेट। एनालॉग फोन से लेकर वॉकी टॉकी से लेकर मोबाइल CDMA इंस्ट्रूमेंट्स और इवेंचुअली स्मार्टफोन्स तक इन्वेंटर ग्राहम बेल के कम्युनिकेशन टूल की यात्रा में लगभग 150 सालों में कई अपग्रेड हुए। लेकिन साल 2023 इस स्मार्ट डिवाइस में एक और आयाम जोड़ेगा जो संभवतः इसे अब भविष्य के निर्माण के लिए इंटेलिजेंट बनाएगा। हम एक और रेवोल्यूशन या यूं कहे कि नए फोन के निर्माण के बीच में हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रोशनी शिंगरे। 3.0 टीवी में आप सभी का स्वागत है। हाँ, आपने सही पहचाना, हम क्रिप्टो फोन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के तरीकों को बदल देगा। क्रिप्टो फोन्स वेब 3.0 और ब्लॉकचेन तकनीक के लिए एक एक्साइटिंग गेटवे ऑफर करेंगे। वेब 3.0 इंटरनेट की नेक्स्ट जनरेशन है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फाउंडेशन के रूप में उपयोग करती है और नेटवर्क पर वैल्यू के सिक्योर और अफोर्डेबल ट्रांसफर्स को सक्षम बनाती है। तो आइए जानते हैं ये क्रिप्टो फोन क्या है और ये हमारे कम्युनिकेशन के तरीकों को कैसे बदल देगा। क्रिप्टो फोन एक ब्लॉकचेन सेंट्रिक डिवाइस है जो क्रिप्टो, मेटावर्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के समर्थन के साथ स्मार्टफोन के स्टैंडर्ड फीचर को जोड़ता है, जैसे कि एक क्रिप्टो फोन यूजर्स को प्राइवेट कीज को सुरक्षित रूप में स्टोर करने, क्रिप्टो को माइन करने, मेटावर्स में भाग लेने या ब्लॉकचेन नेटवर्क नोड्स चलाने की अनुमति दे सकता है। आपने इन्वेस्टर द्वारा अपनी की पासवर्ड्स भूल जाने के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी जो वैल्यू को अनलॉक करने का मेन फीचर है, पर क्रिप्टो फोन पे ऐसे मुद्दों से निपटने में मदद मिलने की संभावना है। जानते हैं क्रिप्टो फोन के इतिहास के बारे में। कई कंपनियों ने क्रिप्टो फोन का ओरिएंटेशन शुरू कर दिया है। ताइवानी स्मार्टफोन जॉइंट HTC ने इस मामले में बढ़त हासिल की है। HTC ने अक्टूबर 2018 में पहले क्रिप्टो फोन द एक्सोडस 1 के लॉन्च के साथ एक नए युग की शुरुआत की है। इस जेनेसिस मॉडल में एक क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट है और ये अन्य कैपेबिलिटीज के साथ एक फुल बिटकॉइन नोड चला सकता है। क्रिप्टो फोन कई बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, तो आइए देखते हैं उनमें से कौन कौन से प्रमुख बेनिफिट्स है। बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स। ज्यादातर बिल्ट इन हार्डवेयर वॉलेट्स या फिर कोल्ड स्टोरेज के साथ आते हैं जो डिजिटल एसेट को स्टोर करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। यूजर सुरक्षा उल्लंघनों के डर से बिना चलते फिरते अपने क्रिप्टो तक पहुंच सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि इंक्रिप्शन से हैकर्स के लिए आपके डेटा तक पहुंच कठिन हो जाता है। डिसेंट्रलाइज एप्स तक नेटिव एक्सेस। हालांकि रेगुलर स्मार्टफोन्स आपको डी एप्स डाउनलोड करने की अनुमति दे सकते हैं, क्रिप्टो फोन में वे इनबिल्ट होते हैं जो यूजर्स को उन्हें आजमाने में कम परेशानी प्रदान करता है। आप अपने स्मार्टफोन के इनबिल्ट वॉलेट और डी एप्स के बीच सीमलेसली और सेफली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ऐप स्टोर में कटौती। डी एप्स न सिर्फ क्रिप्टो करेंसी इंथुजियास्ट के लिए उपयोगी है बल्कि बिजनेसेस के लिए भी उनका उपयोग करने की काफी संभावनाएं हैं। जैसे कि एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाने वाली एक रेस्टोरेंट चेन की कल्पना करें जो कस्टमर्स को उनकी खरीदारी के आधार पर रिवॉर्ड्स देती है, या फिर ऑनलाइन कार डीलरशिप जो ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेती है। क्रिप्टो करेंसी तक सुविधाजनक पहुंच।
क्रिप्टो फोन क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करना और उपयोग करना आसान बनाते हैं। उनके हार्डवेयर वॉलेट आपको अपने कॉइन्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करने की अनुमति देते हैं और डी एप्स आपको अपने क्रिप्टो को जल्दी और आसानी से उपयोग करने का विकल्प देते हैं। प्राइवेसी, क्रिप्टो फोन में आपको डेटा को प्राइवेट रखने के फीचर्स है। इसमें एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और आपके लोकेशन को छुपाने की क्षमता शामिल हो सकती है। यूजर बेस के संभावित विस्तार का लाभ उठाने के लिए कई कंपनियां मैदान में उतर आई है। तो आइए देखते हैं टॉप क्रिप्टो फोन्स कौन से हैं। नथिंग फोन 1, पॉलीगॉन नेटवर्क शानदार डिजाइन वाले मिड रेंज नथिंग फोन 1 के साथ क्रिप्टो फोन मार्केट में अपनी शुरुआत कर रहा है। फोन मेकर नथिंग के साथ पार्टनरशिप करके इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन Web3 को वाइडर स्मार्टफोन ऑडियंस तक लाने की उम्मीद करता है। नथिंग फोन 1 यूजर्स को पॉलीगॉन नेटवर्क पर दी एप्स और गेम तक सीमलेसली एक्सेस करने में मदद करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। ये क्रिप्टो सिक्योर स्टोरेज और पेमेंट फंक्शनैलिटीज को भी जोड़ता है और पॉलीगॉन आईडी का उपयोग करता है। एक नई ब्लॉकचेन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। पॉलीगॉन एक डिसेंट्रलाइज और सेल्फ ओन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो यूजर्स को अपने डेटा को बड़ी टेक कंपनीज को सौंपे बिना अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने की अनुमति देती है, जहां थर्ड पार्टीज द्वारा इसमें समझौता किया जा सकता है। यहां तक कि अपने आई कैचिंग आईफोन्स जैसे लुक, रीजनेबल स्पेक्स और पॉलीगॉन पावर्ड Web3 इंटीग्रेशन के साथ नथिंग फोन 1 की कीमत लगभग $479 यानी इंडियन रुपीस में 39,500 के करीब है। सोलाना सागा, अगर कोई एक डिवाइस है जो क्रिप्टो फोन और ब्लॉकचेन टेक हाइप को वापस लेकर आया है तो वो है सोलाना सागा। OSOM के साथ पार्टनरशिप में सोलाना लैब्स द्वारा विकसित किए जा रहे एक क्रिप्टो फोन के रूप में सोलाना सागा में ऐसे फीचर्स है जो इसे मेन स्ट्रीम स्मार्टफोन से अलग करती है। डिवाइस में प्राइवेट की स्टोर करने के लिए एक सीड वॉल्ट, QR कोड पेमेंट के लिए सोलाना पे, एक मोबाइल वॉलेट अडाप्टर और एक डी ऐप स्टोर की सुविधा है। सोलाना सागा की शिपिंग 2023 के क्वार्टर 1 में लगभग $1,000 यानी 82,600 रुपीज से शुरू हुई है। गैलेक्सी S22, सैमसंग का सबसे नया फोन गैलेक्सी S22 एक ऐसे फीचर के साथ आया है जो क्रिप्टो करेंसी प्रेमियों को खुश कर देगा। नॉक्स के अतिरिक्त सुरक्षा के साथ सैमसंग ब्लॉकचेन की स्टोर और वॉलेट आपकी वर्चुअल एसेट्स को सुरक्षित रखते हैं। मेजर और नॉन मेजर वर्चुअल एसेट्स के लिए समर्थन नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और इसमें बिटकॉइन, इथेरियम, ERC20, ट्रॉन और अधिक जैसे पसंदीदा शामिल है। BGR की एक रिपोर्ट के अनुसार गैलेक्सी S22 में एक प्री इंस्टॉल सैमसंग वॉलेट है जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन का समर्थन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ब्लॉकचेन से जुड़े अपडेट्स हर मंगलवार मैं आपके लिए लेकर आऊंगी 3.0 TV पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ये दो शब्द नहीं पर वो दो पंख हैं जो हमारी टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया को नई ऊंचाई पे ले जाने की क्षमता रखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एलॉन मस्क से लेकर इन्फोसिस तक और टाटा से लेकर एप्पल तक हर कोई AI की रेस में रोज नया आयाम दर्ज कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने देश के पब्लिक सेक्टर में भी AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है? हेलो एंड वेलकम टू 3.0 TV। मैं हूं आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर और आज के इस खास सेगमेंट में हम उन 3 विभिन्न पब्लिक सेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिनमें भारत सरकार AI का उपयोग कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर तो वही है जिसकी हमें रोज जरूरत पड़ती है। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि उसके साथ ही रोड सुरक्षा भी आ जाती है। ट्रांसपोर्ट अर्थात यातायात और रोड सुरक्षा। ट्रांसपोर्ट यानी यातायात की बात करें तो रोड सेफ्टी पहला अहम मुद्दा उभर कर आता है। AI के प्रेडिक्टिव पावर को हार्नेस करते हुए 2030 तक रोड दुर्घटनाएं 50%
कम हो जाएं, इसलिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट आय रास्ते को लॉन्च किया है। The road safety is the major concern across the world and has become a challenge for developing countries like India. India accounts for about 5 lakhs road accidents annually and one of the highest in the world, in which about 1.5 lakh people die and 3 lakh have serious injuries affecting their livelihood. Unfortunately, 70% of deaths are in the age of group of 18 to 45 years. The road safety is the topmost priority of our government. There is a need for extensive integration of AI-based technology which will remove human interference and possibility of errors. The artificial intelligence powered drones and robots can be used for forensic level investigation of road accidents. I encourage use of AI-based solutions for high priority areas like forensic post-crash investigations, pattern of accidents due to black spots, fatigue indicators and sleep detectors for drivers. आय रास्ते का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। आशा करते हैं कि प्रोजेक्ट आय रास्ते रोड दुर्घटना को कम करने के अपने लक्ष्य में कामयाब होगा। रोजाना कामकाजी जिंदगी से जुड़ी दूसरी अहम पब्लिक सर्विस भला आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा क्या हो सकती है, लेकिन यहाँ आज हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड की और उससे जुड़े आधार मित्र की। जैसा नाम वैसे लक्षण। क्या आप आधार कार्ड बनवाने या उसमें अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के झंझट से तंग आ चुके हैं? कहाँ जाएं, कैसे अपने आधार एनरोलमेंट या अपडेट स्टेटस को ट्रैक करें? इन सारी प्रॉब्लम्स के वन स्टॉप AI पावर्ड सॉल्यूशन का नाम है आधार मित्र। ये भारत सरकार का एक ऐसा चैटबॉट है जो आपको आधार रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में प्रोवाइड करेगा और वो भी एकदम मुफ्त। मैं तो कहती हूँ आधार मित्र से दोस्ती कर ही लीजिए, फायदे में रहेंगे। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कहने वाले सही कहते हैं कि जान है तो जहान है। भला स्वास्थ्य से बढ़कर भी क्या हो सकता है आदमी के लिए। गर्व की बात है कि भारत दुनिया भर में कई क्षेत्रों में अग्रसर हो रहा है, लेकिन कुछ जगह नंबर 1 होना भी सही नहीं होता। जैसे नंबर 1 होने का ये खिताब डायबिटीज के मरीजों की संख्या को लेकर भारत दुनिया में नंबर 1 बन गया है। बेहद चिंता का विषय है। डायबिटीज मॉडर्न डे लाइफस्टाइल से जुड़ी शिकायत है और सभी उम्र के लोगों को हो रही है। डायबिटीज स्वास्थ्य और हमारी लाइफस्टाइल पर कई तरह की मर्यादा डालती है, लेकिन शायद डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आंखों की रोशनी धुंधली होने की शिकायत शायद अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अब AI ने इसका हल ढूंढ लिया है। भारत सरकार का नीति आयोग एक ऐसा AI एल्गोरिदम डेवलप कर रहा है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के अर्ली डिटेक्शन में सहायक होगा। इतना ही नहीं, गूगल भी एक ऐसा AI एल्गोरिदम लेकर आ रहा है जो बिना ब्लड टेस्ट किए सिर्फ आंखों की संरचना को पढ़कर डायबिटीज को डिटेक्ट कर सकता है। Healthcare is one of the most important fields AI is going to transform. Last year, we announced our work on diabetic retinopathy. It's a leading cause of blindness, and we use deep learning to help doctors diagnose it earlier. And we've been running field trials since then at Aravind and Sankara hospitals in India, and the field trials are going really well. सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए ही नहीं, अन्य सभी लोगों के लिए भी AI का ये करिश्मा निश्चित रूप से आशा की नई रोशनी लेकर आएगा। हेल्थ सेक्टर के अलग अलग क्षेत्रों में भी AI बहुत मददगार साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जरा सोचिए, जैसे आज हम मोबाइल और इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसी आसानी के साथ इन AI बेस्ड एल्गोरिदम्स की तकनीक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लाएंगे तो जिंदगी बेहतर भी बनेगी और सुरक्षित भी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।
हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर। आज थर्सडे है और हम एक बार फिर हाजिर हैं Web3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंडपिक डील्स के साथ। ये डील्स अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिक इंडस्ट्री, Web3 गेमिंग, सॉफ्टवेयर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो आइए सीधे बढ़ते हैं इस हफ्ते की पहली डील की तरफ। लंदन बेस्ड प्रोलिफिक स्टार्टअप ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके बारे में प्रोलिफिक का मानना ये है कि एआई मॉडल को इन्फॉर्म करने और स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए 120,000 ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के अपने नेटवर्क का उपयोग करके अनट्रेन्ड एआई मॉडल द्वारा बनाई गई प्रॉब्लम से निपटने में मदद कर सकता है। हाल ही में ऐसी सर्विसेज की मांग बढ़ रही है और प्रोलिफिक के लिए ये सही समय है जिसमें प्रोलिफिक फंड रेज करके अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड कर सके। प्रोलिफिक को 3 इन्वेस्टर्स द्वारा फंड किया गया है और पार्टेक, ऑक्सफोर्ड साइंस एंटरप्राइजेस सबसे रीसेंट इन्वेस्टर्स में से हैं। 2014 में स्थापित प्रोलिफिक पहले से ही अपने कस्टमर्स में गूगल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन और यूरोपियन यूनियन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल करता है। साथ ही नए प्रोडक्ट्स का परीक्षण करने और आई ट्रैकिंग जैसे क्षेत्रों में एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए अपने प्रतिभागियों के नेटवर्क का उपयोग करता है। वास्तव में प्रोलिफिक ने इस राउंड से पहले जो एकमात्र फंडिंग हासिल की थी वो $1.4 मिलियन का सीड राउंड था। प्रोलिफिक ने सेकेंड राउंड में कुल $33.7 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। प्रोलिफिक की लेटेस्ट फंडिंग 12 जुलाई 2023 को सीरीज ए राउंड से जुटाई गई थी। G2 स्टैक के अनुसार प्रोलिफिक HTML5, गूगल एनालिटिक्स और गूगल फॉन्ट सहित 21 टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और सर्विसेज का उपयोग करता है। बिल्ड विद के अनुसार प्रोलिफिक अपनी वेबसाइट के लिए सक्रिय रूप से 55 तकनीकों का उपयोग कर रहा है। इनमें लेट्स एनक्रिप्ट, HSTS और IPv6 शामिल हैं। इस हफ्ते की दूसरी डील म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। म्यूजिक प्लेटफॉर्म साउंड ने फरवरी में क्लोज हुए सीरीज ए फंडिंग राउंड से $20 मिलियन जुटाए। इस राउंड का नेतृत्व वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म एंडरसन हॉरोविट्ज ने किया, जिसमें रैपर स्नूप डॉग, आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर रियान टेडर, एक्टर एश्टन कटर के नेतृत्व वाली फर्म साउंड वेंचर्स और अन्य की भागीदारी थी। जुटाए गए फंड से आर्टिस्ट को अपने करियर के दौरान स्टेडी इनकम अर्जित करने में मदद मिलेगी। साउंड ने 2 फंडिंग राउंड में कुल $25 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। उनकी लेटेस्ट फंडिंग 12 जुलाई 2023 को सीरीज ए राउंड से जुटाई गई थी। साउंड को 39 इन्वेस्टर्स द्वारा फंड किया गया है। कोलैब, प्लस करेंसी और कूप रिकॉर्ड सबसे रीसेंट इन्वेस्टर्स में से हैं। साउंड का लक्ष्य अपने आर्टिस्ट रिलेशंस, इंजीनियरिंग और मार्केटिंग टीम्स का विस्तार करने के लिए फंडिंग का उपयोग करना है। इस हफ्ते की तीसरी डील बाइनेंस लैब्स को लेकर है। बाइनेंस लैब्स ने Web3 गेमिंग स्टार्टअप एक्सटेरियो में $15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सटेरियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन और इसके टोकन के लॉन्च सहित गेम और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग का उपयोग करने की योजना बनाई है। एक्सटेरियो एक फ्री टू प्ले गेमिंग प्लेटफॉर्म है और एक गेमफाई एज अ सर्विस प्रोडक्ट प्रदान करता है जो डेवलपर पार्टनर्स को थर्ड पार्टी गेम बनाने में मदद करता है। एक्सटेरियो अब अपने एआई ड्रिवन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस का विस्तार करने और एक एआई टूल के डेवलप करने की योजना बना रहा है जो कंसिस्टेंट प्रोडक्शन क्वालिटी वाली 2D और 3D एसेट्स जेनरेट कर सकता है। बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल अलूवियल के $12 मिलियन राउंड के फंडिंग राउंड में ब्रेवन हॉवर्ड भी शामिल हुई। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के फंड रेजिंग इनिशिएटिव में कई बड़े नाम शामिल हुए, जैसे कि एथरियल वेंचर्स और वेरिएंट ने ब्रेवन हॉवर्ड डिजिटा, एवन वेंचर्स, नेसेंट कैपिटल, ए कैपिटल, रोबोट वेंचर्स, फेनबुशी, IOSG और ब्लॉक डेमन सहित अन्य की भागीदारी के साथ फंड को को-लीड किया। कंपनी के अनुसार अलूवियल ने पहले कॉइनबेस वेंचर्स, क्रैकन, फिगमेंट और किल सहित स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स से $6.2 मिलियन का सीड राउंड जुटाया था। अलूवियल ने 2 राउंड में कुल $2.5 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। अलूवियल को 4 इन्वेस्टर्स द्वारा फंड किया गया है। माइक ऑल्सन और लक्स कैपिटल सबसे रीसेंट इन्वेस्टर्स में से हैं। बढ़ते हैं इस हफ्ते की 5वीं और आखिरी डील की तरफ। वर्मोंट कैलिफोर्निया बेस्ड एक्सटेंसिबल ब्लॉकचेन नेटवर्क के प्रोवाइडर आर्टेला ने फंडिंग राउंड में $6 मिलियन जुटाए हैं।
इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व श्रीमा कैपिटल ने A&T कैपिटल, बिग ब्रेन होल्डिंग, 7X वेंचर्स, डिस्पर्शन कैपिटल, अमीनो कैपिटल और अन्य के साथ भागीदारी में किया था। ये फंडिंग टेक डेवलपमेंट, टीम ग्रोथ और मार्केट एक्सपेंशन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे Web3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी और ऐसी ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड। Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. As promised, the insolvent trading platform for digital currencies, FTX Derivatives Exchange, has opened a claim page that will allow all of its creditors to formally submit claims as one of the first stages in regaining their frozen cash from the trading platform. The action follows the current FTX management's recovery of more than $7 billion. The obvious beneficiary of this move is the defunct trading platform's native token FTT, which has recorded a 17.27% growth over the past 24 hours with a current price tag of $1.65. The claim portal is accessible via the claims.ftx.com platform, and the user interface of this portal is simplified in a one-pager to enable anyone navigate the platform easily. Follow 3.0 TV for more such updates. The stories of Good Samaritan always warm my heart. Here's one I pick for you, good soul, just in case if you are searching for it in the cryptocurrency space. Guess what? The Good Samaritan is played by none other than Conor Grogan, the head of product at Coinbase. He detailed the discovery in a recent tweet. During the Ethereum blockchain fork in 2016, Ethereum Classic was created. Any investor who held the now standard Ether on-chain was airdropped an identical amount of ETC. Many never touched these new funds, said Grogan. Grogan's painstaking efforts helped him reach the actual owner, informing him about the bounty lying idle in his wallet. In the end, he managed to contact the legal name associated with the wallet and made his day. Follow 3.0 TV for more such updates. जस्टिन बीबर को लगा बड़ा झटका। 1.3 मिलियन डॉलर्स में खरीदी एनएफटी की वैल्यू 95% गिरी। सलमान अमिताभ के बाद अब तापसी भी एनएफटीज में हाथ आजमाएंगी। डायमंड से जुड़ी एप्पल स्मार्ट वॉचेस की बनी एनएफटी। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रुचि शर्मा। जस्टिन बीबर की BYC एनएफटी की वैल्यू गिरने से लेकर तापसी पन्नू के एनएफटी डेब्यू तक कई मजेदार एनएफटी न्यूज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए तैयार। एनएफटी वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल के साथ साथ एक खास गेस्ट से होगी मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हालचाल। CryptoSlam.io के डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते एनएफटी सेल्स में 23.39% की गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, एनएफटी बायर्स के आंकड़े में भी 96.48% की भारी गिरावट देखी गई है। हर बार की तरह इथेरियम एनएफटीज 130.77 मिलियन डॉलर्स की एनएफटी सेल के साथ सबसे आगे रही, जो कि टोटल एनएफटी सेल का 66.73% हिस्सा है। हालांकि पिछले हफ्ते के मुकाबले इथेरियम एनएफटी सेल 14.77% गिरी है। दूसरी पोजीशन पर है बिटकॉइन एनएफटीज 23.37 मिलियन डॉलर्स एनएफटी सेल्स के साथ, तो वहीं तीसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन पर है सोलाना, बीएनबी और पॉलीगॉन। किसी एनएफटी में रेयरिटी फीचर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जस्टिन बीबर ने पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। जिनकी 1.3 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अब महज 5% वैल्यू की रह गई है। वर्ल्ड वाइड सिंगर सुपरस्टार जस्टिन बीबर इन दिनों खासे परेशान हैं
और हो भी क्यों ना, जो BAYC NFT एप #3001 उन्होंने इतने चाव से जनवरी 2022 में 500 ETH यानी $1.3 मिलियन में खरीदी थी, उसकी कीमत अब 95% गिरकर महज 59,000 ही रह गई है। इतना ही नहीं, एप #3001 खरीदने के महज एक हफ्ते बाद जो NFT एप #3850 उन्होंने 166 ETH यानी $470,000 में खरीदी थी, उसके लिए अब $59,000 की बोली लग रही है। दरअसल जस्टिन की खरीदी इन दोनों BAYC NFTs में कोई पर्टिकुलर रेयर फीचर नहीं था। ऐसे में इन पर इतनी भारी भरकम रकम खर्चने के लिए क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ने इन्हें खासा क्रिटिसाइज भी किया था। वैसे BAYC का फ्लोर प्राइस काफी समय से लगातार गिर रहा है। इस आग में घी का काम किया है अज़ूकी एलिमेंटल्स ने, जिनकी वजह से ओवरऑल NFT मार्केट डाउन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि BAYC का फ्लोर प्राइस फिलहाल अपने 2 ईयर लो पर है। BAYC NFTs का करंट फ्लोर प्राइस 27 ETH है, जो कि इससे पहले अक्टूबर 2021 में देखा गया था। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट यश गावड़े का। वेलकम टू 3.2 TV। ब्लू चिप NFT का फ्लोर प्राइस ऑलमोस्ट 90% नीचे है, तो वहीं रॉयल्टीज भी अपने 2 ईयर लो पर हैं। आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? Yeah, so NFT market is at its worst stages at this point, and definitely everything falling is affecting the whole NFT space. But my point is that there are few projects which are doing pretty great. Like Pudgy Penguins have their own IPs and they are doing great into Web2 world. In real life, they are selling their own IPs as like soft toys. So that's great. Along with that, other side is creating their own metaverse. By that I mean BAYC and Yuga Labs is creating their own metaverse and a gaming thing. So that will add utilities to the NFTs, and as the space grows and as the bull market comes in again during the halving probably, that would really benefit most of the NFT projects as well. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सलमान खान, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के बाद लगता है अब तापसी पन्नू भी जल्द NFT की दुनिया में अपना ग्लैमर बिखेरेंगी। तापसी इन दिनों अपने इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक कई दिलचस्प आर्टवर्क की पिक्चर्स पोस्ट करके कहीं ना कहीं डिजिटल आर्ट और NFTs में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। ऐसे में खबरें गर्म है कि तापसी जल्द ही NFT मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं और इसके लिए तापसी कई आर्टिस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ ही दिनों पहले तापसी ने आर्टिस्ट द इंडियन डूडलर का बनाया गया आर्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें तापसी फूलों से घिरी है और वहां एक शेर भी मौजूद है। इसके अलावा तापसी ने आर्टिस्ट @मनोज ड्रॉस का एक आर्ट शेयर किया, जहां तापसी एक पोर्टल से ऐसी दुनिया में दाखिल हो रही है जहां एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। तो वहीं तीसरा आर्ट जिसे @मंजू गोटूर ने क्रिएट किया है, उसमें तापसी किसी दूसरे डायमेंशन में मौजूद अपने डिजिटल अवतार से बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हाल ही में तापसी ने डिजिटल वर्ल्ड के लिए अपनी फैसिनेशन और क्रिएटिविटी की पोटेंशियल जाहिर करने के लिए अपने फैंस के बनाए डिजिटल आर्ट भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए। बड़े बड़े ब्रांड्स NFT सेक्टर का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड NFT की दुनिया में दाखिल होकर शायद इसकी किस्मत बदलने वाला है। एक ऐसा ब्रांड जो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, कोका कोला। ये जायंट सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड अब NFTs की दुनिया में कदम रख रहा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है सर्बिया के कोका कोला की, जो सोलाना के NFT प्लेटफॉर्म सोलसी के साथ मिलकर सर्बिया में होने वाले एक म्यूजिक इवेंट के लिए NFTs लॉन्च करने जा रहा है। इस डील के तहत कोका कोला कुछ खास पार्टिसिपेंट्स को NFTs के साथ साथ 100 लिमिटेड एडिशन हुडीज भी देगा। इस फेस्टिवल में मैजिक मिरर नाम का एक ऐसा टूल मौजूद है जिसे यूज करके लोग खुद को रैंडम मर्चेंडाइज पहने हुए 3D इमेज में देख सकते हैं। एक QR कोड को स्कैन करके वो इस इमेज को पा भी सकते हैं। डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, जिस किसी ने ये लिखा है ना, बहुत खूब लिखा है, क्योंकि अब एक वुमन एप्पल वॉचेस पर डायमंड्स लगाकर नायाब लग्जरी कफ्स की NFT बना रही है। एंटरप्रेन्योर निकोल स्टील ने ओल्ड वर्ल्ड क्राफ्टमैनशिप और Web3 टेक्नोलॉजी के मेल से तैयार किया है एक ऐसा प्रोडक्ट जो ब्लॉकचेन में लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा देगा। पेरिस हॉट कुट्योर वीक के दौरान निकोल ने अनवेल किया है एक लग्जरी कफ की कलेक्शन जो कि एप्पल वॉच से जुड़ी है। दरअसल निकोल ने एप्पल वॉचेस में हीरे जड़कर उसे लग्जरी ज्वेलरी पीस में तब्दील कर दिया है। इन हाई लग्जरी कफ्स में 2.5 कैरेट के कुल 400 VVS डायमंड्स लगे हुए हैं,
जिन्हें व्हाइट गोल्ड पैलेडियम में सेट किया गया है और इन्हें बनाने में करीब 136 घंटों की कारीगरी लगी है। इन कफ्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इन्हें पहनने के बाद जो भी मैसेजेस या नोटिफिकेशंस एप्पल वॉचेस पर आएंगे वो किसी और को दिखाई नहीं देंगे। हर एक स्मार्ट वॉच एक्सेसरी में NFC चिप लगा है जो यूजर्स को डिजिटल ID के साथ साथ तमाम इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी देगा। ये इंफॉर्मेशन NFT के तौर पर पॉलीगॉन पर सिक्योर होगी। NFTs का क्रेज और सक्सेस देखकर क्रेडिट स्विस भी NFT के समंदर में गोते लगाने को तैयार है। स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस ने स्विस फुटबॉल एसोसिएशन के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत वो स्विस विमेन फुटबॉल टीम पर बेस्ड NFT कलेक्शन लेकर आएंगे और इस NFT कलेक्शन से होने वाली सेल्स की पूरी राशि विमेन फुटबॉल टीम को सपोर्ट करने के लिए डोनेट की जाएगी। इस NFT कलेक्शन में डिजिटल पोर्ट्रेट्स की एक सीरीज होगी जो स्विस विमेन फुटबॉल टीम के मेंबर्स पर बेस्ड होगी। क्रेडिट स्विस की ऑफिशियल ऐप CSX पर जल्द ही एक डिजिटल एसेट का फंक्शन जोड़ा जाएगा और ये NFT कलेक्शन भी इसी ऐप पर अवेलेबल होगी। इसके साथ ही इन NFTs को खरीदने या बेचने के लिए क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। इन NFTs की पेमेंट के लिए स्विस फ्रैंक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रेडिट स्विस की इस NFT कलेक्शन में कुल 756 NFTs होंगी जो कि परचेज के लिए 11 जुलाई से क्रेडिट स्विस की डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन CSX पर अवेलेबल होगी और इथेरियम पर मिंट की जाएगी। ये NFTs सेल के लिए 3 पैकेजेस में अवेलेबल होंगी। इसकी रेंज 150 से 10,000 स्विस फ्रैंक तक होगी। साथ ही इन NFTs के साथ कुछ बेनिफिट्स भी जुड़े होंगे, जैसे कि फिजिकल आर्टवर्क का काउंटर पार्ट, प्लेयर्स के साथ एक मीट एंड ग्रीट सेशन, साथ ही प्लेयर्स की साइन की गई जर्सीज। वेल, दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ NFT वर्स। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.2TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। Of getting on a plane excites everyone, but the steps involved in boarding a flight can be annoying at times. But what if you can explore all your travel arrangements before physically arriving at the airport? Well, this will soon become a reality thanks to Qverse, the metaverse platform of Qatar Airways. Qverse, which was launched last year in the month of April, has been upgraded with exciting new features. Qatar Airways will provide all the travelers with an opportunity to explore their travel arrangements in the virtual world even before they arrive physically at the airport. While exploring these new digital environments, you can also receive up to 10% discount on the prices of air tickets. Not only this, you can now take virtual reality tours where the digital meta-human cabin crew of Qatar Airways named Sama will guide you. Isn't that amazing? Imagine digital meta-human cabin crew serving you your favorite dishes. Well, the crew will also allow passengers to explore different travel classes including business and economy class cabins and also the first class check-in counters. Interestingly, Qverse supports different languages such as Arabic, Chinese, English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish and Thai languages. Well, Qatar Airways was an early adopter of Web3 and the metaverse. Only a few months after launching Qverse, the airline announced the addition of NFTs and ticket sales to its metaverse platform, allowing clients to gain more utility such as cheaper tickets by interacting with Qverse. So, get ready to fly in the future with Qverse. That's all in the story. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such interesting stories, like, share and subscribe to our channel and log on to our website www.3verstv.io or scan the QR code.
Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Shikha Singh, and today's special segment is about the surge in Bitcoin mining stocks amid rally in the world's largest cryptocurrency by market capitalization. The rise in the price of Bitcoin this year has led to rise in stocks such as cryptocurrency broker Coinbase Global and MicroStrategy, a software company that has invested heavily in the token, something that has boosted Bitcoin miners. There is a direct correlation between a rise in price of Bitcoin and the surge in Bitcoin mining stocks. Bitcoin price gained around 68% in the first quarter of 2023, and it has roughly increased around 7% in the second quarter of 2023. However, if we have a look at Bitcoin's year-to-date performance, it has increased by 84.3%. Bitcoin miners have done even better. From being among the most beaten down names in crypto during 2022 to the biggest winners of 2023. It's a kind of revelation that left many astonished. Riot Platforms has gained 248% so far in 2023, while Marathon Digital is up 305%. If you're not convinced with this part of story, then what follows next will definitely make you wonder as to why the sector is buzzing. According to crypto analytics firm Coinmetrics, Bitcoin miners earned $184 million from transaction fees between April to June amid Bitcoin ordinals fervor. It makes sense because miners stand at the heart of a process called proof of work, which runs the Bitcoin network. They use computers running on powerful chips, often warehouses of computers, to solve complex puzzles in a process that facilitates securing the network and processing transactions. Payments are in Bitcoin. The difficulty level of the puzzles, which affects how much energy is required to solve them, is largely determined by how many miners are participating in the process. Energy accounts for between 90% to 95% of Bitcoin mining costs and plays an extremely critical role in determining profitability for the cryptocurrency miners. The average cost of mining single Bitcoin is at least $17,000 versus the $5,000 to $10,000 range a year ago, according to Bitcoin mining data resources Hashrate Index and Luxor. As of July 7, 2023, the price of Bitcoin is over $30,000, so miners make profit of over $13,000 per Bitcoin. Meanwhile, the race is on to file applications for spot Bitcoin ETF. Analysts believe if any single Bitcoin spot ETF gets approved by the US SEC, then it will lead to a bull run for Bitcoin. This will be hugely beneficial for Bitcoin mining companies. The prospect of the rally in Bitcoin hinges on the regulatory approval for spot Bitcoin ETFs. Will the ETFs get approved or not remains to be seen. For now, the Bitcoin miners are not complaining and are busy minting money. Shall we say Bitcoin? Well, that's all in today's special segment. We will meet again with another interesting updates. Until then, keep watching 3.0 TV. For more such updates, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. Tennis, the world's most popular individual racket sport, was originated in the 16th century in France. Back then, the players would yell "tennis" upon starting a game, thus it got its name. Later in the 19th century, it was further modified in England and appeared in its modern avatar, the lawn tennis. By the turn of 21st century, the world witnessed many transformations, and so also the world of sports. Now, with the help of virtual technology, many sports organizations can establish virtual stadiums in the metaverse where fans can watch live games, connect with other fans, and buy team merchandise.
Well, there is good news for all the tennis lovers. The International Tennis Hall of Fame and Infosys have joined hands to deliver tennis history, artifacts and great stories to all fans across the world in order to keep all tennis lovers connected and serving them historic events from this great sport. Infosys, the global leader in next-generation digital services and consulting, and the United States-based International Tennis Hall of Fame, a non-profit organization that preserves and promotes the history of tennis and celebrates its champions, are partnering together to build a fully interactive museum. The Hall of Fame honors tennis superstars and traces the sport's history. Infosys and Hall of Fame partnership is very important for the growth of global tennis. Infosys and the International Tennis Hall of Fame have begun a genuinely transformative effort to replicate the physical museum into a 3D virtual world. In the Hall of Fame's collection, fans can find iconic objects from tennis history, such as an original pair of Stan Smith Adidas sneakers, a racket used by Stephanie Graf during her Golden Slam in 1988, and a dress worn by American tennis player Serena Williams at the 2018 US Open. Fans can watch larger-than-life hologram sculptures of Hall of Famers in the metaverse and learn about superstars through their career stats, trivia, and much more. They can also look through various Hall of Famers and artifacts to learn more and answer some questions to earn rewards in the ITHF virtual shop. Users can also build and personalize their digital avatars as well as step foot on the famed horseshoe court and play a game of tennis. Well, the new ITHF experience debuts only weeks before the Infosys Hall of Fame Open and the induction of wheelchair tennis icons Esther Vergeo of the Netherlands and Rick Rainey of the United States, which will take place on July 21, 2023. Well, that's all in the story. This is me, Vishakha Thakur, signing off. To like, share and subscribe to our channel. And for more such updates, log on to our website www.3worstv.io or scan the QR code. Whether you are an entrepreneur, investment banker, or market participant, you would definitely want to know about mergers and acquisitions, fundraising, and which way millions of dollars are heading in the big deals of the Web3 world. Find out all of that and more on a special show, Deal Corner, every Monday at 6:45 p.m. only on 3.0 TV. Like most of us, I use public transport system to commute, be it the train, a bus or the metro. And one thing that I've noticed is a large number of commuters frantically swiping through reels and shorts on their smartphones while on their way to work. And those who are not doing that are even busier. They are head over heels into playing games on the phone. Games are aplenty and to each one of his or her own, but the common crush is, yes, you guessed it right, Candy Crush. Honestly speaking, I haven't had a crush on this one game, but that was only until my favorite Mahi started playing the game. If Mahendra Singh Dhoni is playing it, you ought to be a part of the game, right? At least that's how it works for me. Candy Crush started trending on Twitter, and media reports also claim that many users downloaded the popular games on their devices after the video of Dhoni playing Candy Crush went viral. Not only just Dhoni, but Microsoft CEO Satya Nadella also admitted that he too is a Candy Crush player. See, these types of games are the kind of games, you play when you want to spend some time, leisure time, or like kill the time, as they say. But what if I tell you that you can spend your leisure time earning some good amount of money?
And that some amount of good money isn't just any money, but hold your breath. I am talking about the world's largest cryptocurrency. Yes, Bitcoin. I know now you're curious to know about the game I'm talking about. So let's not beat around the bush, but head straight into this week's game and Candy Crush's clone, the Sweet Bitcoin. Sweet Bitcoin is not just a legitimate Candy Crush saga game, and it was not made by the mobile industry giant King. It's a really good rip-off that mimics the feel and flow of the successful brand, like so many iOS and Android games do. But in this instance, Blink Financial's rip-off game gets the fundamentals right while also rewarding you with a few bits of Bitcoin or Ethereum. Blink Financial Games has a lot of other jests like a Bitcoin Blast, Bitcoin Food Fight, Bitcoin Pop. We will definitely cover the gameplays of these games as well. But in this episode to come, right now, let's swing back to the process of Sweet Bitcoin, which is quite very simple. You need to log in with your Facebook or Gmail ID and then connect to your Coinbase wallet if you have one. As of now, this game is just available on Coinbase, you folks. Sweet Bitcoin is the game's token and is a multiplayer hyper-deflationary token that allows passive income automatically sent to your wallet by simply holding through our mindless mining protocol. Basically, by playing the game, you'll be rewarded with Blink points that can be exchanged for cryptocurrency. The amount you receive will be very small, but the more you play, the chances of earning Blink points grow manifold. Blink games allow players to earn real cryptocurrency for free and are devised as a non-gambling promotion. It is intended solely for entertainment purposes. The thing is, guys, that first, it is free to download. It is a play-to-earn game, which is why it boasts 10 million plus users, and till date, it has paid out 5 trillion plus Blink points. And. It has $2 million plus Bitcoin has been paid out to the players of this game. As per the website, win or lose, you'll always get Blink points. Redeem your Blink points every 7 days. Blink Games provides you with Blink points that can be redeemed for real Bitcoin or Ethereum. Blink Financial is backed by big cat investors like Block Tower, Gumi Cryptos, Coinbase Ventures, Wave Financial. From Sweet Bitcoin, let's move to another game that I've seen people play a lot, and that is none other than Eyeball Pool. For all the snooker lovers, mobile game maker Eyeball Games is partnering with Web3 platform Immutable to release Eyeball Pool, a blockchain-based mobile pool game. The game is currently in beta version with a full launch planned for early 2024. The partnership with Immutable will enable Eyeball Games to accelerate the development of its blockchain-based title, which gives players full ownership of their digital assets and includes other features that come from using blockchain. If you wonder why gaming sector is buzzing these days, you must know that the Web3 gaming industry is raising a lot of money, and the market for gaming tokens is also growing. For instance, the price of Axie Infinity increased 20% last week after an uncommon gaming competition sparked an unanticipated bull run. On-chain data indicates that the rally might not have ended because the tournament is still going on. Data gathered by blockchain forensics tool Sentiment indicates that the price increase is still going strong despite the surge in network activity. No wonder the number of gamers is rising steadily, as the DappRadar report states active users in this industry have soared by a whopping 500% between 2018 to 2022. Well, we will keep tracking the growing gaming sector and bring you more about such interesting updates. Till then, keep watching Sweet.TV and do like, share and subscribe to our YouTube channel. To stay connected, log on to our website at www.threeversetv.io or scan the QR code to know more.
हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर और आज के डील कॉर्नर के ब्रांड न्यू एपिसोड में हम आपको Web3 स्पेस में हो रही फंड रेजिंग डील्स और मर्जर एंड एक्विजिशंस के बारे में बताते हुए ये एनालाइज करेंगे कि इन कंपनीज ने ये डील्स क्यों क्लोज की। क्या ये कंपनी के स्टेक होल्डर्स का एक्सपेंशनरी विजन था या अपनी कंपटीशन को मात देने वाला एक स्ट्रैटेजिक कदम। इस हफ्ते की 5 डील्स की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता दें, जिसके अनुसार 2023 की दूसरी तिमाही में ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंडिंग में ईयर ऑन ईयर 49% की गिरावट आई, जो पिछले साल की समान अवधि के $127 बिलियन से घटकर $65 बिलियन हो गई। 2023 के पहले क्वार्टर में फंडिंग 51% गिरकर $144 बिलियन हो गई, जो पिछले वर्ष $293 बिलियन थी। अब रुक करते हैं इस हफ्ते की फर्स्ट टॉप डील की तरफ। कैलिफोर्निया के पोलो ऑल्टो में स्थित इन्फ्लेक्शन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट, रीड हॉफमैन, बिल गेट्स, एरिक श्मिdt और एनविडिया की अध्यक्षता में $1.3 बिलियन की फंडिंग राउंड को क्लोज करने की घोषणा की है। एक्स्ट्रा फंड्स 22,000 यूनिट एनविडिया H100 टेंसर जीपीयू क्लस्टर के निर्माण में खर्च किए जाएंगे, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के विकास में किया जाएगा। इन्फ्लेक्शन एआई अपने पर्सनल असिस्टेंट एआई सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, जिसे पाई के नाम से जाना जाता है। कंपनी के अनुसार पाई एक टीचर, कोच, कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव पार्टनर और साउंडिंग बोर्ड है, जिस तक सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत पहुंचा जा सकता है। 2022 की शुरुआत में अपनी स्थापना के बाद से कंपनी की कुल फंडिंग राशि $1.525 बिलियन तक पहुंच गई है। अब अगली डील की तरफ बढ़ते हैं, जो एआई सेगमेंट से ताल्लुक रखती है। सेलेस्टियल एआई ने $100 मिलियन के सीरीज बी फंडिंग राउंड की घोषणा की। आईएजी कैपिटल पार्टनर्स, कोच डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज और टेमासेक के जोरा इनोवेशन फंड इस दौर में सबसे आगे हैं। सीईओ डेविड लिव्जोव्स्की के अनुसार सेलेस्टियल एआई की कुल राशि को $165 मिलियन से अधिक तक बढ़ाने वाली किश्त का उपयोग कंपनी की इंजीनियरिंग, सेल्स और टेक्निकल मार्केटिंग टीम्स को बढ़ाकर सेलेस्टियल के फोटोनिक्स प्लेटफॉर्म के उत्पादन में सहायता के लिए किया जाएगा। द इंजन की पोर्टफोलियो कंपनी सेलेस्टियल ने एक फोटोनिक्स बेस्ड आर्किटेक्चर डेवलप किया है, जो मल्टीपल चिप सिस्टम में स्केल करता है। ये टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसफर करने के लिए लाइट का उपयोग करती है, जिससे इंफॉर्मेशन को चिप्स और चिप टू चिप के भीतर प्रसारित किया जा सकता है, जिससे एआई वर्कलोड के लिए मेमोरी और कंप्यूट अवेलेबल हो जाती है। सेलेस्टियल का दावा है कि इसके फोटोनिक्स डेटा संचालन के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा को कम करता है, जिससे इनडायरेक्टली चिप के परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी बड़ी डील की तरफ। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX ने इंग्लिश प्रीमियर लीग सॉकर क्लब मैनचेस्टर सिटी का ऑफिशियल स्लीव स्पॉन्सर बनने के लिए मैनचेस्टर सिटी के साथ अपने कोलैबोरेशन को एक्सपैंड किया है। फोर्ब्स के अनुसार नए मल्टी ईयर अग्रीमेंट के तहत OKX 3 साल की साझेदारी के दौरान मैनचेस्टर सिटी को $70 मिलियन से अधिक का भुगतान करेगा। OKX ब्रांडिंग पुरुषों और महिलाओं दोनों फर्स्ट टीम की जर्सी की बनाई स्लीव पर दिखाई देगी। OKX मार्च 2022 में मैनचेस्टर सिटी का आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी पार्टनर बन गया और बाद में टीम के प्रशिक्षण गियर के प्रयोजन को शामिल करने के लिए समझौते का विस्तार किया गया। इस साझेदारी के उद्देश्य दुनिया को ब्लॉकचेन और इसके उपयोग के मामलों के बारे में अधिक जानने में मदद करना है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। टर्न नेटवर्क पर बिल्ड पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन गेम कैट पैराडाइज ने फंडिंग के एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक दौर की घोषणा की है। मास्क नेटवर्क और मून कैपिटल की भागीदारी के साथ इस राउंड में $15 मिलियन के वैल्यूएशन के साथ लगभग $1 मिलियन की कमाई हुई है। फंड का उपयोग मौजूदा ऑन-चेन टेक्निक को अपग्रेड करने, अधिक योग्य डेवलपर्स को नियुक्त करने और अपने कस्टमर बेस के विस्तार करने के लिए किया जाएगा। कैट पैराडाइज प्लेयर्स को कम्युनिटी इवेंट्स में भाग लेने और प्रोफाइल बनाए या वॉलेट लिंक किए बिना डिजिटल कैट्स की देखभाल करने की प्रोत्साहन और टोकन प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म ऑगमेंटेड रियलिटी और NFT का उपयोग भी करता है, जिससे यूजर्स को डिजिटल कैट्स के साथ जुड़ने और कम्युनिटी एक्सेस, क्यूरेटेड आइटम्स और प्रमुख लेबल और आर्टिस्ट के साथ सहयोग तक क्विक एक्सेस प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ।
डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म क्रिप्टोक्वांट ने घोषणा की है कि उसकी पेरेंट कंपनी टीम ब्लैकबर्ड ने दक्षिण कोरिया में एटनम इन्वेस्टमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड $6.5 मिलियन सीरीज ए फंडिंग राउंड को क्लोज कर दिया है। कंपनी के अनुसार रेवेन्यू का उपयोग उसके दक्षिण कोरिया और ओवरसीज ऑपरेशंस दोनों के लिए भर्ती के लिए किया जाएगा। गैलेक्सी इंटरैक्टिव और मिराई एसेट कैश के पूर्व निवेश के साथ साथ कंपनी की कुल कैश रेजिंग अब $9 मिलियन हो गई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे Web3 स्पेस में धूम मचा देने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में 23 लाख लोगों को हर साल ब्रेस्ट कैंसर होता है। इस कैंसर के बढ़ते कदमों को प्रेडिक्ट करने के लिए यूके रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जो ये बता पाएगा कि ये कैंसर शरीर के बाकी ऑर्गन्स जैसे फेफड़े, दिमाग और हड्डियों में भी फैलेगा या नहीं। इस एआई एल्गोरिदम के क्लिनिकल ट्रायल्स अगर सक्सेसफुल होते हैं तो ये बहुत जल्द डॉक्टर्स को ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। Punjab National Bank has launched a virtual branch in Metaverse. Qatar Airways has added exciting new features to its Metaverse platform, Qwords. Infosys and the International Tennis Hall of Fame are collaborating to build a Metaverse museum, and Metaverse dominates Web3 investments. Want to know more? Watch our weekly show Metaverse Magic every Monday, and for more such updates, follow 3.0 TV. जिस एक वर्डिक्ट का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था एक्सआरपी, और आई थिंक ऐसा पॉजिटिव ही वो चाहते थे कि उनकी फेवर में फैसला आया, ऐसा हो गया। पार्शियल उनको विक्ट्री मिली क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी है लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी नहीं है। तो जब ये केस हुआ था और एसईसी ने ऐसा दावा किया था या इल्जाम लगाया था कि ये सिक्योरिटी है एक्सआरपी, तब बहुत सी एक्सचेंजेस ने इसे डीलिस्ट कर दिया था एक्सआरपी को अपने प्लेटफॉर्म से। लेकिन अब ये फैसला आने के बाद से, पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने के बाद से, बाकी जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने वापस एक्सआरपी को लिस्ट करने की बात कही है। और उसके साथ साथ जैसे कि हमने कहा कि 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी तो ये बनी गई है, एक पूरा पॉजिटिव मोमेंटम भी बन गया है। बिल्कुल। तो ये फैसला आने के पहले ही यहाँ पे जो है इनका जो प्राइस है, जैसे कि सोलाना है या पॉलीगॉन है, सभी का प्राइस भी ऊपर गया है। तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट वे बिटकॉइन हैज टच्ड अराउंड $31,000। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ये जो न्यूज़ आया है एक्सआरपी के लिए भी पॉजिटिव है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। बिल्कुल। There is a direct correlation between a rise in price of Bitcoin and the surge in Bitcoin mining stocks. If we have a look at Bitcoin's year-to-date performance, it has increased by 84.3%. Bitcoin miners have done even better, from being among the most beaten down names in crypto during 2022 to the biggest winners of 2023. It's a kind of elevations that left many astonished. Riot Platforms has gained 248% so far in 2023, while Marathon Digital is up 305%. The average cost of mining single Bitcoin is at least $17,000 versus the $5,000 to $10,000 range a year ago, according to Bitcoin mining data resources, Hashrate Index and Luxor. For now, the Bitcoin miners are not complaining and are busy minting money. Shall we say Bitcoin? Bitcoin has rallied over 82% this year so far,
but it's still below its record high of nearly $69,000 hit in November 2021. The adaptability of cryptocurrency is growing day by day. There are many utilities of crypto tokens. Government or US is approving as a crypto as asset. Plus the crypto winter is almost over. There is something right now happening macroeconomically where there's a quantitative tightening across the world. I haven't had a crush on this one game, but that was only until my favorite Mahi started playing the game. But what if I tell you that you can spend your leisure time earning some good amount of money? And that some amount of good money isn't just any money, but hold your breath. I am talking about the world's largest cryptocurrency. Yes, Bitcoin. Sweet Bitcoin is not just a legitimate Candy Crush saga game, and it was not made by the mobile industry giant King. It's a really good ripoff that mimics the feel and flow of the successful brand, like so many iOS and Android games do. But in this instance, Blink Financial's ripoff game gets the fundamentals right while also rewarding you with a few bits of Bitcoin or Ethereum. Hey folks, have you often wondered about watching a live golf tournament, and that too the Open, the golf's original championship? What if I tell you that you can win a ticket to the 152nd Open Golf Tournament? Yes, the Royal and Ancient Golf Club of St Andrews in Scotland has collaborated with the virtual reality-focused company Golf 5 to launch a metaverse event named We Are Open in Metaverse. So are you ready to discover the exciting golf game in the virtual world? Comment down below and let us know. Tennis, the world's most popular individual racket sport, was originated in the 16th century in France. Well, there is good news for all the tennis lovers. Infosys and the International Tennis Hall of Fame have begun a genuinely transformative effort to replicate the physical museum into a 3D virtual world. In the Hall of Fame's collection, fans can find iconic objects from tennis history. 'Twas born a brilliant man in Russia long ago. He dropped out of school with a perfect 4.0. He took an interest in a cryptocurrency, so he co-founded a Bitcoin magazine. He got bored of shitposts on inflation. Bitcoin had a one-track mind. What's up, Vitalik Vititin fans? To commemorate the launch of Sound.xyz on Optimism mainnet, the founders of both projects collaborated to bring the world a rousing Vitalik-themed single in the style of Boney M's hit 1978 dance track Rasputin. So far, more than 27,000 free NFTs of the song have been minted, and the mint will continue until June 19th. So what are you waiting for? Go mint yourself free NFT of Vitalik Vititin track before the time runs out. Follow 3.0 TV for more such updates. The thought of getting on a plane excites everyone, but the steps involved in boarding a flight can be annoying at times. But what if you can explore all your travel arrangements before physically arriving at the airport? Well, this will soon become a reality thanks to Qverse, the metaverse platform of Qatar Airways. जनवरी में बड़े चाव से जिस BAYC NFT ऐप #3001 को जस्टिन बीबर ने करीब $1.3 मिलियन में खरीदा था, उसकी कीमत 95% गिरकर अब सिर्फ $59,000 रह गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि BAYC का फ्लोर प्राइस अपने 2-year लो पर है और इसकी रॉयल्टी भी काफी गिरी है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिरकार किसी NFT की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है।
नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। NFT मार्केट इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है अज़ूकी एलिमेंटल्स। अज़ूकी एलिमेंटल्स की गलती का खामियाजा पूरी NFT मार्केट झेल रही है। अज़ूकी एलिमेंटल्स का इंतजार तमाम NFT एंथुसियास्ट बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन इस NFT कलेक्शन ने सबको धोखा दे दिया क्योंकि ये कलेक्शन ओरिजिनल अज़ूकी NFTs की ही कॉपी निकली। ऐसे में NFT होल्डर्स ने बिना वक्त गवाए अज़ूकी एलिमेंटल्स को फ्लोर प्राइस से भी कम कीमत पर सेकेंडरी मार्केट पे बेचना शुरू कर दिया, इस डर से कि कहीं इन एलिमेंटल्स की वजह से ओरिजिनल अज़ूकी की वैल्यू ना घट जाए। खैर, इससे पूरी NFT मार्केट बुरी तरह प्रभावित हुई और ज्यादातर NFTs के फ्लोर प्राइस में गिरावट देखी गई। वैसे BAYC के फ्लोर प्राइस में गिरावट के पीछे एक और बड़ी वजह है फेमस NFT कलेक्टर माची ब्रदर्स का अचानक करीब 50 BAYC NFTs को डंप करना यानी बेचना। जाहिर है ऐसे में BAYC NFTs का फ्लोर प्राइस तो अफेक्ट होना ही था। फ्लोर प्राइस की इस गिरावट के चलते सिंगर जस्टिन बीबर को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसी साल जनवरी में बड़े चाव से जिस BAYC NFT एप #3001 को जस्टिन बीबर ने करीब $1.3 मिलियन में खरीदा था, उसकी कीमत 95% गिरकर अब सिर्फ $59,000 रह गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि BAYC का फ्लोर प्राइस अपने 2 ईयर लो पर है और इसकी रॉयल्टी भी काफी गिरी है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिरकार किसी NFT की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है। तो चलिए आज यही समझाने की कोशिश करते हैं। NFTs की वैल्यू तय करने में फ्लोर प्राइस का बड़ा हाथ होता है। फ्लोर प्राइस यानी वो मिनिमम वैल्यू जो सेलर अपने आर्ट के लिए तय करता है। फ्लोर प्राइस के अलावा इथेरियम का प्राइस भी एक बड़ा प्राइस इंडिकेटर है जो काफी फ्लक्चुएट होता रहता है। इन दो मेन रीजंस के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिससे NFT की वैल्यू डिफाइन होती है, जैसे कि कल्चरल सिग्निफिकेंस, रेयरिटी, रैंकिंग और कलेक्टर्स की उस एसेट के साथ पर्सनल एफिलिएशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेयरिटी ट्रेड्स की। रेयरिटी ट्रेड्स का मतलब है किसी डिजिटल एसेट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेड एडिशन रिलीजेस या एक्सक्लूसिव फीचर्स जो किसी NFT का डिजाइन, डिटेल्स या प्रॉप्स तक हो सकते हैं, जैसे कि बोर्ड एप में उनके फर का रंग, आंखों से निकलती रेस एटसेट्रा। इन रेयर ट्रेड्स की वजह से किसी BAYC या क्रिप्टोपंक को ओन करना किसी लिमिटेड एडिशन बैग या वॉच ओन करने जैसा है, क्योंकि रेयरिटी ट्रेड्स NFTs की स्कैर्सिटी और उन्हें ओन करने की डिजायरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे NFT की वैल्यू अफेक्ट होती है। रेयर ट्रेड्स NFTs से जुड़ी एक खास बात यह है कि भले ही फ्लोर प्राइस गिरे या बढ़े, लेकिन रेयरिटी फीचर्स वाली NFTs का प्राइस तकरीबन वही रहता है। इनफैक्ट कुछ रेयरिटी ट्रेड्स या कल्चरल सिग्निफिकेंस वाली NFTs की वैल्यू को तो ओवरऑल कलेक्शन के प्राइस ड्रॉप के बावजूद बढ़ते हुए देखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जस्टिन बीबर की BAYC NFT में कोई खास रेयरिटी ट्रेड्स नहीं थे, इसीलिए फ्लोर प्राइस के गिरते ही उनकी NFT की कीमत भी गिर गई। बिना किसी रेयरिटी ट्रेड की NFT खरीदने के लिए NFT इन्फ्लुएंसर्स ने जस्टिन को क्रिटिसाइज भी किया था। रेयर ट्रेड्स NFTs के प्राइस पर सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का असर पड़ता है और कंज्यूमर इंटरेस्ट का। तो वहीं NFTs जो इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट, आइकॉनिक मोमेंट्स या सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट से जुड़ी होती हैं, हिस्टोरिकल या आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस की वजह से उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे कि पजी पेंगुइन्स कलेक्शन के साथ हुआ। जैसे ही इस प्रोजेक्ट को एंटरप्रेन्योर लुका नेट्स ने खरीदा, इस प्रोजेक्ट की किस्मत ही पलट गई। डिमिट्री चेरनियाक की फेमस NFT द गूस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस आर्ट पीस की वैल्यू 2 से 3 मिलियन के बीच लगाई जा रही थी, लेकिन ऑक्शन में ये $6.2 मिलियन में नीलाम हुई। इसकी 2 वजह थी। एक तो ये कि आर्ट पीस इतनी बारीकी और कारीगरी से बनाया गया है कि ये हूबहू एक असल गूस की तरह दिखता है, और दूसरा ये बैंकरप्ट हो चुकी 3 Arrows कैपिटल की NFT ऑक्शन में नीलाम हुई थी। ऐसे में यही समझा जा सकता है कि अगर NFTs में आपकी दिलचस्पी है तो उसके रेयरिटी ट्रेड्स पर खासा ध्यान देने की जरूरत है, वरना वो NFT कब अर्श से फर्श पर आ गिरे कुछ कहा नहीं जा सकता। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। मैं रुचि शर्मा आपके लिए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहूंगी। 3.2 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।
Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. You are watching our special show Metaverse Magic, wherein we bring to you important updates from the Metaverse space. We begin this episode with an update from the European region. The European Union has unveiled its Metaverse strategy. Next, we travel to Asia. Hong Kong International Airport is all set to unveil its HKIA Metaverse. Moving on, Metaverse Studio Karta has secured $1.1 million funding, while BMW Motorrad has launched Metaverse platform MetaRide. And finally, the Magnificent Century TV series is set to be revitalized in the Metaverse. Well, there's a lot going on in the Metaverse space, so let's dive deep into the world of Metaverse. Metaverse has the potential to transform our lives for good, and countries are betting big on the virtual platform that offers immense potential. Countries such as South Korea and Dubai have already unveiled their Metaverse strategies. Joining the bandwagon, the European Union has also adopted a Web 4.0 and the Metaverse strategy. The aim of the European Commission is to create a digital environment that will be open, secure, as well as inclusive for all the users, and wants to ensure that the virtual world is not concentrated in the hands of key players. The Commission also aims to develop a citizen toolbox by the end of this year, which will increase public awareness as well as foster a pool of talented virtual world specialists. Also, the Commission plans to launch 2 flagship Metaverse projects named Cityverse and European Virtual Human Twin. And now let's listen in to what Vishal Patil, the VP of WTS Verse, has to say about the factors that will lead to the growth or adoption of Metaverse. We are already using the Metaverse from since long now. Like, people are using Snapchat, okay, which is basically the AR filter only. People were using the, virtual try-on, like Lenskart and the Zara e-commerce store have given this facility, which is again the augmented reality only. So it is not, nothing. It is nothing like we were not using the Metaverse. We are already well versed with it, but this terminology is quite new for the people. And in upcoming days, there are businesses which are coming up with the training programs which can be done in Metaverse. So there will be a mass adoption happening soon, and it depends on the different verticals in different business domain who are ready to take the initiative. And what I am feeling is, many businesses have taken good initiative in terms of Metaverse. Well, Metaverse is creating its magic everywhere, and the aviation industry is no exception. Recently, Terminal 2 of Bangalore Airport was recreated in Metaverse, and now Hong Kong International Airport is entering Metaverse. It has joined hands with JC de Kock's Transport of Hong Kong to launch the HKIA Metaverse. Yes, the collaboration between the two aims to provide brands an opportunity to explore an immersive virtual world in order to engage more international visitors as well as the local travelers, where they can indulge in various activities and play some exciting games. Visitors can also engage with other airport passengers and enter the boarding gate area to uncover all the required instructions for the game. Well, gaming and the entire entertainment industry will soon be reshaped by Metaverse. According to a recent report, Metaverse in entertainment market size is projected to reach $221.7 billion by 2031. The famous Turkish series Magnificent Century, which is based on the reign of Ottoman Empire's 10th Sultan Suleiman, is going to be revitalized in the Metaverse. The series portrays the personal life of Suleiman, including his political struggles. He was a great ruler and is known for his military conquests. At an event in Paris, some of the well-renowned TV shows will be brought to the Sandbox Metaverse. And now, good news for all bike lovers. There's an opportunity for all motorbike enthusiasts to embark on a virtual ride in the Metaverse. BMW, the popular German automotive manufacturer, has been the early adopter of Metaverse, and now, adding another feather to its cap, it is all set to transform the motorcycle industry with the help of Metaverse. Yes, BMW Motorrad, which is the motorcycle division of German automotive manufacturer BMW, is giving you an opportunity to go on a virtual motorcycle test ride.
MetaRide, the newly launched VR platform of BMW, allows users to take a test drive of the existing models such as the new BMW CE02 electric motorcycle as well as the upcoming motorcycle models of BMW. A recent report by Daprada says that amongst all the Web3 investments, Metaverse projects have succeeded in attracting 44% of 2023 Web3 investments, and Metaverse projects have managed to attract investments. And now, in a funding round led by Game Tech Ventures, Metaverse Studio Karta, which is based in London, has secured a $1.1 million investment from key players in the music, gaming and sports industry. The startup was launched in the year 2021 and has since delivered various projects for top platforms such as Roblox, Decentraland and Fortnite. These projects have helped Karta gain traction, such as getting shortlisted for Cannes Lion Awards. Well, that's all in this episode of Metaverse Magic. I will be back with more such interesting updates from the Metaverse space. Do like, share and subscribe to our channel, and for more such interesting updates, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. It's Monday today and we are back with the hand-picked deals that were sealed in the Web3 space, ranging from artificial intelligence, music, Web3 gaming, software and blockchain technology services. So let's get to the first thing first, and our first deal is Prolific raises $32 million to train and stress test AI models using its network of 120,000 people. This London-based startup has built a system which it believes can help tackle problems created by untrained AI models by tapping its own network of 120,000 human participants to inform and stress test AI models. Of late, the demand for such services is on the rise and is the right time for Prolific to raise funds and to expand operations. Prolific is funded by 6 investors, and Partech, Oxford Science Enterprises are the most recent investors. Founded in 2014, Prolific already counts organizations such as Google, Stanford University, the University of Oxford, King's College London, and the European Commission among its customers, using its network of participants to test new products, train AI systems in areas like eye tracking, and determine whether their human-facing AI applications are working as their creators want them to. Up to now, it's been revenue from users like these that have helped Prolific grow. In fact, the only money Prolific had raised prior to this round was a seed round of $1.4 million it got after going through YC. Prolific has raised a total of $33.7 million in funding over 2 rounds. Their latest funding was raised on July 12, 2023 from a Series A round. Prolific uses 21 technology products and services including HTML5, Google Analytics and Google Fonts, according to G2 Stack. Prolific is actively using 55 technologies for its website according to BuiltWith. These include Let's Encrypt, HSTS and IPv6. The next deal we are tracking is Snoop Dogg A16Z-backed Web3 music platform Sound's $20 million funding round. The monies raised will help artists earn a sustainable income throughout their careers. In Series A round, which closed in February, was led by venture capitalist firm Andreessen Horowitz, with participation from rapper Snoop Dogg, artist and producer Ryan Tedder, actor Ashton Kutcher, led firm Sound Ventures and more. Sound has raised a total of $25 million in funding over 2 rounds. Their latest funding was raised on July 12, 2023 from a Series A round. Sound is funded by 39 investors. Collab Plus Currency and Coop Records are the most recent investors. Sound aims to use the funding to expand its artist relations, engineering and marketing teams as it opens its platform to the public.
Ahead of its launch last year, Sound raised a $5 million seed round in December 2021 with backers including A16Z and rapper 21 Savage. Sound is actively using 35 technologies for its website according to BuiltWith. These include Viewport Meta, iPhone mobile compatible and Apple mobile web clips icon. In our third big deal, we have Binance Labs' investment of $15 million in Web3 gaming startup Exterio. Exterio plans to use the funding to further game and technology development, including artificial intelligence integration and the launch of its tokens. Exterio offers a free-to-play gaming platform and a GameFi-as-a-service product that helps developers partners create third-party games. The startup now plans to expand its AI-driven interactive experience and develop an AI toolkit that can generate consistent production quality 2D and 3D assets. Moving on, Brevan Howard joins $12 million round for liquid staking protocol Illuvial. Joining software development company fundraising initiative are Ethereum Ventures and Variant co-led the fund with participation from Brevan Howard Digital, A1 Ventures, Nascent Capital, A Capital, Robot Ventures, Fenbushi, IOSG and Block Daemon, among others. Illuvial previously raised a $6.2 million seed round from strategic participants including Coinbase Ventures, Kraken, Figment and Kill, according to the company. Illuvium has raised a total of $2.5 million in funding over 2 rounds. Their latest funding was raised on March 23, 2018 from a grant round. Illuvium is funded by 4 investors. Mike Olson and Lux Capital are the most recent investors. Illuvium is actively using 18 technologies for its website, according to BuiltWith. These include Viewport Meta, iPhone, mobile compatible and SPF. And last but not the least, Artela raises $6 million in seed funding. This Fremont, California-based provider of an extensible blockchain network funding round was led by Shima Capital with participation from ANT Capital, Big Brian Holdings, 7X Ventures, Dispersion Capital, Amino Capital and others. The company intends to use the funds to accelerate its technology development, grow the team and drive market expansion efforts. Artela has raised a total of $6 million in funding over 1 round. This was a seed round raised on July 12, 2023. That's all in today's special segment. Do keep watching 3.0 TV for more such interesting updates from Web3 space. And do not forget to like, share and subscribe our channel. For more updates, log on to our website www.3worldstv.io or scan the QR code. With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. The United States Financial Markets Regulator, the Securities and Exchange Commission, has formally accepted the BlackRock's application for launching a spot Bitcoin exchange-traded fund. It's a significant development considering that the BlackRock's application to introduce a Bitcoin ETF that focuses on spot Bitcoin has officially become part of the SEC's proposed rule change process. It also marks a crucial step forward for what is currently the most closely monitored Bitcoin-related proposal submitted to the SEC. The acceptance of BlackRock's application comes a day after similar application from the Bitwise. The SEC's official calendar currently shows that BlackRock's application will be published in the Federal Register and start a 21-day public comment period.
An arrangement for surveillance sharing with cryptocurrency exchange Coinbase is included in BlackRock's ETF registration. The regulator revealed on Friday, July 14, that it is now considering applications for a number of funds, including Wise Origin Bitcoin Trust, Wisdom Tree, VanEck, and Invesco Galaxy. The competition between firms competing to introduce a Bitcoin ETF in the US is seen favorably for the cryptocurrency industry. A spot Bitcoin ETF is still awaiting approval from the SEC in the US, but it is already on the market in Canada. That's all in this segment. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। अज़ूकी एलिमेंटल्स के फ्लॉप होने से पूरी एनएफटी मार्केट में गहरा प्रभाव पड़ा। मेजर एनएफटीज का फ्लोट प्राइस गिर गया। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बोर्ड एप यॉट क्लब एनएफटीज को, जिसका फ्लोट प्राइस 90% तक गिरा। और जाहिर सी बात है, अगर BAYC एनएफटी का फ्लोट प्राइस गिरेगा तो BAYC के मेटावर्स अदर साइड के कॉइन एप कॉइन पर तो इसका असर पड़ेगा ही। पिछले 2 हफ्तों में एप कॉइन 15% गिरा है। ऐसे में एप कॉइन ने अपने ऑल टाइम लो प्राइस $1.85 को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बोर्ड एप यॉट क्लब एनएफटीज के प्राइस ने थोड़ा रिकवर किया है, लेकिन एप कॉइन के प्राइस में रिकवरी ना के बराबर है। पिछले साल मार्च में लॉन्च हुए एप कॉइन ने अप्रैल में $26.7 का अपना ऑल टाइम हाई देखा था। उस वक्त एप कॉइन की मार्केट कैप $7.6 बिलियन तक पहुंच गई थी। खैर, फिलहाल एप कॉइन अपने पीक प्राइस से 93% डाउन है और इसकी मार्केट कैप अब महज $700 मिलियन के करीब है। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आपके लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा लाती रहूंगी। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। After Ripple Labs' partial victory before the Securities and Exchange Commission on July 13th, Ripple has now overtaken Bitcoin to become the 4th largest cryptocurrency by market valuation. According to documents filed on July 13th, Judge Torres has granted summary judgment in favor of Ripple Labs, ruling that XRP token is not a security but only in regards to programmatic sales on digital asset exchanges. However, the SEC also managed to notch a victory of its own, as the federal judge has ruled the XRP is a security when sold to institutional investors, as it met the conditions set in the Howey test. According to statistics from TradingView, the price of XRP increased by as much as 98% in the hours following the ruling peak at $0.93. Tech billionaire Elon Musk has made a habit to think out of the box. He recently launched a new artificial intelligence venture called XAI. According to Musk, the new project is aimed at or to understand reality. Musk's XAI team included former OpenAI, Google Research, Microsoft Research, and DeepMind employees. The launch caused an unknown and unrelated crypto token, XAI, to rally. After the launch of Musk's XAI, the XAI crypto token posted a 780% gain. However, the token's price has since fallen by 50%. AI-related crypto tokens also began to rally after Musk's announcement. Singularity Net rallied by more than 10%. Fetch.ai rose by around 7%, Numeraire rose by over 6%, and Phoenix rose by almost 10% on Friday, July 14, 2023. Follow 3.TV for more such updates and log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Hello and welcome to 3.0TV. I am Manoj Dara, and in today's special segment is about the dawn of India's blockchain era. With over 100 actual use cases across numerous industries, more than 50 governments worldwide have already adopted blockchain technology. Let's focus on India and the fascinating developments here in this regard.
As far as India is concerned, Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the use of blockchain technology will increase by 46% over the next few years. With over 90 projects currently in various deployment phases, India's public sector is quickly emerging as a key user of the blockchain technology. The adoption of this revolutionary technology is the public sector is being driven by the fact that almost 50% of the India states are actively involved in the blockchain related initiatives. Good example is the collaboration of the Zebi Data and the Hitachi to create blockchain based land registry systems in the Andhra Pradesh. Tamil Nadu and the Telangana government are also collaborating with individuals and organizations from the business sector, academia, startups, and Niti Aayog, a strategic think tank, to examine cross-sector blockchain use cases and advanced blockchain IP creations while teaching the next generation. The government of Uttar Pradesh has also teamed up with the United Nations Development Programme to use blockchain for its comparable goals. In West Bengal, the municipal corporations of the Durgapur and Bankura have collaborated with Link, a Dutch company, to issue birth and death certificates on the blockchain. Up there in the northeast is Assam has joined forces with a nuclear vision for the governance and citizen-facing applications. With the growing popularity of the blockchain technology, India is well positioned to lead the world in utilizing the revolutionary technology. Let's hear it from our esteemed guest, Mr. Amit Chandra, Blockchain Delivery Manager at Snapper Future Tech, about the rise of blockchain use cases in India. Amit, welcome on 3.0 TV. In the recent news, India's Finance Minister Nirmala Sitharaman has stated that there will be 46% growth in the blockchain technology, whereas 50% will along be in the public sector. I strongly believe in this statement because in the recent news we have seen that RBI has recently launched e-rupees, which is a digital currency and based on CBDC that include the CBDC wholesale and CBDC retail. It includes 9 banks, include State Bank of India, ICICI, SDFC, and many more. Niti Aayog partnership with 5R has launched a blockchain model which will educate 10,000 schools in India, whereas Indian government is closely working for the farmer supply chain process that will give the traceability of the seeds and incentivize the farmer crops. Once all the industries comes together and work in the progress of this technology, then surely there will be much more growth than 46% in the blockchain technology. Well, blockchain network will certainly alter how public sector services are provided, paving the way for the more inclusive and the prosperous future with increased efficiency, transparency, and security. India is at the fore of the blockchain era, prepared to embrace the advantages it brings. That's all there is in this special segment. This is Manoj Dara signing off. But keep watching 3.0 TV for more such interesting analysis and updates. Thank you. If riding a bike is your passion, you need to stick around for some more time. We are bringing you a latest update on riding opportunity, riding a famous brand from two-wheeler space. Yes, you heard it right. This opportunity is open for all motorbike enthusiasts who wish to embark on a virtual ride in the metaverse. The metaverse is poised to transform the automotive industry, and top automakers such as BMW, Maruti Suzuki and Hyundai are ready to grab this opportunity with both hands. BMW, the popular German automotive manufacturer, has been an early adopter of metaverse. And now, adding another feather to its cap, it is all set to transform the motorcycle industry with the help of metaverse. Yes, BMW Motorrad, which is the motorcycle division of German automotive manufacturer BMW, is providing an opportunity to go on a virtual motorcycle test ride. MetaRide, the newly launched VR platform of BMW, allows users to take a test drive of the existing models
such as the new BMW CE02 electric motorcycle, as well as the upcoming motorcycle models. The VR platform is built on the spatial metaverse platform and provides a variety of interactive activities such as virtual basketball and token gathering in order to improve the user experience. Users can also earn attractive jackets for their avatars, which adds a personal touch to the experience. Well, BMW Motorrad has extended its trademark protection to the metaverse, ensuring that its virtual products such as the vehicles and apparel are protected from any unauthorized use and imitation within the metaverse. That's all in the story. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such interesting stories, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. फ्लैश फिर लौटेगा अपनी NFTs के साथ। लग्जरी फैशन ब्रांड गुची के साथ मिलकर क्रिस्टीज लॉन्च करेगा NFTs। पुमा और जेजी मिलकर ला रहे हैं स्नीकर्स की डिजिटल NFT कलेक्शन। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रुचि शर्मा। वार्नर ब्रदर्स की लेटेस्ट मूवी फ्लैश की NFT से लेकर गुची और पुमा की NFTs तक कई मजेदार NFT अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए तैयार NFT वर्स के इस एपिसोड के लिए। इसमें हम आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ साथ एक गेस्ट से भी मुलाकात कराएंगे आपकी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हाल। इस हफ्ते NFT सेल्स पिछले हफ्ते के मुकाबले 4.33% गिरकर $148.5 मिलियन पर रही। नंबर 1 पर थी इथेरियम NFT, जिसमें 1.41% का उछाल देखा गया। $88.54 मिलियन के साथ इथेरियम सेल्स ने टोटल सेल्स का करीब 60% हिस्सा कंट्रीब्यूट किया। दूसरी पोजीशन पर कायम बिटकॉइन NFT सेल्स 14.37% गिरकर $25.9 मिलियन पर रही। सोलाना में भी गिरावट दर्ज की गई, जो $8.2 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर रही। चौथे पायदान पर जगह बनाई पॉलीगॉन NFTs ने, जिसकी सेल करीब 16.44% गिरकर $5.9 मिलियन पर रही। तो वहीं पांचवी पोजीशन पर BNB NFTs 5.3 मिलियन सेल्स के साथ पॉलीगॉन को कड़ी टक्कर देती दिखाई दी। वार्नर ब्रदर्स लेकर आए हैं अपनी लेटेस्ट सुपर हीरो मूवी फ्लैश की NFTs। ऐसा पहली बार हो रहा है कि वार्नर ब्रदर्स ने किसी ऐसी फिल्म की NFTs लॉन्च की है जो अभी सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है, वरना आमतौर पर फिल्म के सिनेमाघरों से उतर जाने के बाद ही उसके Web3 प्लान्स अनाउंस किए जाते हैं। खैर, 18 जुलाई से फैंस फ्लैश मूवी से जुड़ा एक शानदार इमर्सिव Web3 एक्सपीरियंस खरीद रहे हैं, जिसमें बोनस फीचर्स भी शामिल हैं। इस NFT के जरिए ओनर्स इस फिल्म को अपने डेस्कटॉप पर 4K UHD में, मोबाइल टैबलेट पर या फिर टीवी पर देख इसके स्पेशल फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे। इसके की आर्ट को कलेक्ट कर पाएंगे, साथ ही डिजिटल ईस्टर एग्स को डिस्कवर कर पाएंगे और हिडन AR कलेक्टिबल्स को अनकवर कर पाएंगे। इन NFT पैकेजेस में 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं, मिस्ट्री और प्रीमियम एडिशन। मिस्ट्री एडिशन, जिसकी कीमत $35 है, उसमें 4 में से एक एक्सप्लोरेबल लोकेशंस मौजूद है, जिसमें बैरी के बचपन का कमरा और बैट केव शामिल है। वहीं प्रीमियम पैकेज, जिसकी कीमत $100 है, उसमें तमाम डिजिटल कलेक्टिबल्स शामिल हैं। फैंस हिडन क्लूज अनकवर कर सकते हैं और कई तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट और बिहाइंड द सीन फुटेज को अनलॉक कर सकते हैं। हर परचेज के साथ फैंस के पसंदीदा कैरेक्टर से जुड़ा कोई की आर्ट होगा, जिसमें कई तरह के रेयरिटी लेवल्स होंगे। अगर आप आर्ट लवर हैं और लग्जरी फैशन ब्रांड्स के दीवाने हैं, तो अगली खबर सुनते ही आपका चेहरा खिल उठेगा। 256 साल पुराने ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज लग्जरी फैशन ब्रांड गुची के साथ मिलकर रिलीज करने जा रहा है खास NFT कलेक्शन। फ्यूचर फ्रीक्वेंसीज, एक्सप्लोरेशन इन जनरेटिव आर्ट एंड फैशन टाइटल की इस NFT कलेक्शन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिस्ट क्लेयर सिल्वर, जनरेटिव आर्टिस्ट एमिली, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस आर्टिस्ट बोटो और कई आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है। इस कलेक्शन में 21 NFTs फीचर होंगी। इस कलेक्शन की नीलामी क्रिस्टीज के डिजिटल आर्ट प्लेटफॉर्म क्रिस्टीज 3.0 पर 18 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हो रही है।
इस NFT कलेक्शन के लिए गुची टेक्सटाइल्स के कलर पैलेट्स और खासतौर पर गुची की आइकॉनिक सीरीज बैम्बू 1947 कलेक्शन, जो ब्रांड के सिग्नेचर बैम्बू हैंडल्स के लिए जानी जाती है, से इंस्पायर है। एल्गोरिथम्स और AI के इस्तेमाल से बनी इस कलेक्शन का एम है क्रिएटिविटी को एक्सपैंड करते हुए आर्ट, फैशन और टेक्नोलॉजी का संगम कराना। वहां फैशन और आर्ट का संगम हो रहा था, तो यहाँ स्पोर्ट्स और म्यूजिक का। नए फैशनेबल स्नीकर्स के साथ साथ लेटेस्ट म्यूजिकल ट्रैक्स सुनने को मिले तो इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। पूमा और रैपर Jay-Z की एंटरटेनमेंट कंपनी रॉक नेशन साथ मिलकर ला रही है एक स्नीकर कलेक्शन, जिसके साथ जुड़ी है NFTs और म्यूजिक। RS-XL मिक्सटेप स्नीकर कलेक्शन को डिजाइन किया है अलेक्जेंडर जॉन और एमरी जोन्स ने। इस कलेक्शन में 3 तरह के मिक्सटेप इंस्पायर्ड स्नीकर स्टाइल्स होंगे: कैसेट टेप्स, डिस्क और प्लेलिस्ट। हर स्नीकर की लेफ्ट टंग के नीचे एक यूनिक ब्लॉकचेन बैक्ड LGT टैग छुपा होगा, जिसे एक स्मार्टफोन के साथ स्कैन कर एक्सक्लूसिव डिजिटल कंटेंट को अनलॉक किया जा सकता है। इन NFT लिंक्ड LGT टैग्स की मदद से फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि स्नीकर्स और अपैरल्स को ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। इसके साथ ही बायर्स को वीकली मिक्स टेप के ड्रॉप्स का एक्सेस भी मिलेगा। रॉक नेशन के अपकमिंग आर्टिस्ट के अनरिलीज्ड म्यूजिक के 14 ट्रैक की प्लेलिस्ट का एक्सेस मिलेगा। साथ ही आर्टिस्ट की लाइफ के बिहाइंड द सीन्स का एक्सेस भी मिलेगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट आयुष रंजन का, जो वॉर्लैंड NFTs के CTO हैं। वेलकम टू 3.0 TV, आयुष। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आयुष, नई म्यूजिक NFTs आ रही हैं, नए म्यूजिकल NFT प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सिंगर्स और रैपर्स NFTs के साथ जुड़ रहे हैं। इस पर आपका व्यू क्या है और म्यूजिक NFTs का फ्यूचर क्या है? It's kind of a both, because see, whatever is in trend, everyone wants to do it. But I don't think it's just about the trend, because all the creative industry want to be part of the NFT organization, because it is like you are leaving something behind which is going to remain there. And for music artists, their albums and their covers, they are going to be part of the the blockchain forever, and people can actually own it. So luckily we also did a music project I think a few months back, which was very good. Good. And it was same. People can come to the music platform, they can buy, or the artists can sell their albums, etc. Okay. And it helps the artists also, because they get the 100% royalties. There is no middleman playing role in between. Right. So like any other creative industry, they want their products, or they want their whatever art or whatever it is, their music, they want it, that the persons buy it and they get all the money or all the royalties, and it will remain part of the digital platform forever. So I think it's not just a trend. I think it's going to benefit them in long term, and I think more and more industries will keep on coming. There will be obviously ups and downs, but I think overall every industry soon will be joining the NFT and the blockchain market in some or the other ways. थैंक यू सो मच आयुष, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। कुछ भी कहो, म्यूजिक NFTs हिट है, तभी तो अब एक नया म्यूजिक प्लेटफॉर्म भी आ रहा है जिसे भारी भरकम फंडिंग मिली है। साउंड्स गुड, हाँ? म्यूजिक NFTs इन दिनों खासे ट्रेंड में है, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि अब एक नया म्यूजिक NFT डिस्कवरी और डायरेक्ट टू कम्युनिटी मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म आ रहा है, जिसे नाम दिया गया है साउंड। साउंड ने सीरीज A फंडिंग में $20 मिलियन रेज किए हैं और इस फंडिंग राउंड को लीड किया है A16Z क्रिप्टो ने। इस फंडिंग राउंड में पाम ट्री क्रू, A कैपिटल, साउंड वेंचर्स, कोलैब प्लस करेंसी, स्केलर कैपिटल, स्नूप डॉग, रायन टेडर, टेकीथ ने भी पार्टिसिपेट किया। साउंड के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म बिना किसी थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट के आर्टिस्ट को अपना म्यूजिक अपलोड, स्ट्रीम और मोनेटाइज करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साउंड आर्टिस्ट बिना कोई ओनरशिप या पब्लिशिंग राइट्स दिए अपनी NFT सेल का 95% हिस्सा खुद रख सकते हैं। साउंड के मुताबिक उनके प्लेटफॉर्म पर आर्टिस्ट ने पिछले साल $5.5 मिलियन कमाए थे, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले 1.5 बिलियन स्ट्रीम्स के रेवेन्यू के बराबर है। इसके साथ ही साउंड कुछ ऐसे न्यू आर्टिस्ट टूल्स रिलीज करने जा रहा है जिसकी मदद से आर्टिस्ट इंस्टेंट पेमेंट्स कर सकेंगे। साउंड ने धीरे धीरे 500 आर्टिस्ट ऑन बोर्ड किए हैं। साउंड ने म्यूजिक NFTs रिलीज करने के प्रोसेस को रिफाइन किया है और सिंपल और इंट्यूटिव वे क्रिएट किया है। इतना ही नहीं, साउंड आर्टिस्ट की पहली म्यूजिक NFT को वो बिना किसी कोडिंग के रिलीज करते हैं।
म्यूजिक ट्रैक और म्यूजिक NFT से लेकर म्यूजिक कॉन्सर्ट की NFT टिकट्स तक Web3 की दुनिया में धूम मचा रहा है म्यूजिक। एम्स्टरडैम बेस्ड NFT टिकटिंग कंपनी गेट प्रोटोकॉल ने सीड फंडिंग राउंड में $4.5 मिलियन रेज किए हैं। गेट प्रोटोकॉल टिकटिंग इंडस्ट्री में एक नोवल अप्रोच के साथ आए हैं जो कॉन्सर्ट गोअर्स को NFT कलेक्टिबल्स के साथ रिवॉर्ड करेंगे। इस सीड राउंड में फ्लो वेंचर्स के साथ साथ एनिमोका ब्रांड्स, रेड बियर्ड वेंचर्स, फनफेयर वेंचर्स, साथ ही सैंडबॉक्स के को-फाउंडर सेबेस्टियन बॉर्गेट शामिल थे। गेट प्रोटोकॉल का मिशन है टिकटिंग सेक्टर को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए रीडिफाइन करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि गेट प्रोटोकॉल अब तक 4 मिलियन टिकट्स इशू कर चुका है। ये कंपनी NFTs को इवेंट अटेंडीज के लिए डिजिटल रिवॉर्ड के तौर पर इस्तेमाल करती है। Well, that's all in this episode of NFT Verse. वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2 TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। Whether you are an entrepreneur, investment banker, or market participant, You would definitely want to know about mergers and acquisitions, fundraising, and which way millions of dollars are heading in the big deals of the Web3 world. Find out all of that and more on a special show, Deal Corner, every Monday at 6:45 p.m. only on 3.2 TV. The District Court of New York issued an order to Ripple and Securities Exchange Commission. Lawsuit has sent several tokens, including the Ripple's payment token XRP, higher. The court observation on the programmatic sales of XRP to retail investors not qualifying as securities and sales of XRP to institutional categorized as a security, which has powered the optimism among the other tokens that were recently booked by the SEC. The court found that the XRP was not a security when sold to the public, but it is an unregistered securities offering when sold to institutional investors. Well, the ruling provided an optimistic outlook on the Ripple as it expects the United States banking sector will start using XRP to facilitate cross-border transactions. Ripple also uses blockchain to send messages to banks, which is similar to the SWIFT mechanism using the text messages to settle the cross-border payments. Well, the optimism on XRP token usage grew rapidly, pushing prices higher, nearly doubling over the past few days. The Ripple chief executive, Garlinghouse, in an interview called the ruling a huge win for the Ripple, but the more important for the industry overall in the US. Well, 2.5 years ago when the SEC first sued us, we said publicly that this wasn't just an attack on Ripple, it was an attack on the entire crypto industry. And I think we did see that play out with the SEC getting more and more aggressive in really trying to regulate through enforcement, which we clearly don't think is a healthy way to do it. I think this is a huge win, not just for Ripple, but for the whole industry. I think it really is the first time the SEC has lost a crypto case and really puts the SEC, some of the SEC's narrative and comments that they make publicly about all of these digital assets being securities, it puts that in check, and I think in a very good way. Garlinghouse's remark was based on many tokens feeling the brunt from the lawsuit filed in 2020 by the SEC. The agency alleged that the blockchain developer and creator of the XRP cryptocurrency token raised more than $1.4 billion in 2013 by selling XRP in an unregistered security offering to the investors. The SEC won a partial victory as the US District Judge Annalisa Torres found that the company's $728.9 million worth of XRP sales to hedge funds and other sophisticated buyers amounted to the unregistered sales of the securities. In the court, Ripple, relying on the previous comments of the SEC director to support in case, argued that the XRP should not be treated as a security. The case has been closely watched in the cryptocurrency market, and the pronouncement, partially in the favor of retail investors, fed optimism in the similar other tokens that are on the SEC radar.
It may be noted that the agency brought more than 100 enforcement crypto actions claiming various tokens are securities, but many of those have ended in settlements. Ripple ruling bolstered investor sentiment as the court order helped clear uncertainty related to the program contracts. Apparently, the global crypto market cap touched $1.3 trillion, adding $73.5 billion in just one day. XRP Ripple has been around for a long time. It's one of the most heavily regulated and most compliant cryptocurrencies in the world. It is registered in US. XRP, what essentially the SEC's debate was that XRP is a security. That has been the classic debate in crypto, that are cryptocurrencies, I don't like the word currencies because we are not trying to replace the dollar or the rupee, but are digital assets securities or not? The SEC believed that these are not utilities, but they should be identified as securities. Now, identifying it as security means that the price of Ethereum decides the value of the Ethereum as a company, but the cost and value of XRP does not dominate or dictate the value of the Ripple as a company. Hence, this debate. However, the Ripple as a company won. They were identified that XRP is not a security, which means that a lot of other companies who had cases, who had potential cases, who had rumors of cases happening against them, especially those registered in the USA, are all safe because this same landmark judgment can be applied in their cases. However, XRP led the gains. Other altcoins such as Cardano's, Solana Sol, Polygon Matic bagged the top slots among the XRP, XLM, to name the few. Lido DAO, the leading liquidity staking platform on Ethereum, has also surged, positioning itself among the top market winners. Liquid staking protocols enables users to stake their Ethereum while retaining the liquidity made possible by the liquidity staking tokens, which represent a claim on the staked assets. Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu also entered the winning list. Meanwhile, the Ripple ruling has brightened the prospects for Coinbase, Kraken, Binance, the exchange that are facing financial regulatory ire over the offering unregistered financial securities for the trading. Following the Ripple ruling, the above-mentioned exchanges have relisted XRP on their exchanges, which has also contributed to the price surge. That's all there is in this special segment. This is Manoj Dara signing off. But keep watching 3.0 TV for more such interesting analysis and update of the crypto world. Thank you. What is 2 plus 2? What is 4 plus 4? What is 8 plus 8? What is 16 plus 16? No, I'm not testing your mathematics skill. I'm just reminding you of a game, and I'm pretty sure you guys are smart enough to guess that game. I know, by now you have figured out the name of the game. 2048, right? Solving a mathematic-based puzzle fires up several neurons in brain, which often helps sharpen your IQ and activates brain cells or makes you smart. How about earning some money and at the same time you get to improve your IQ? Sounds interesting, right? Stay tuned to know more. What if I tell you that we have a Web3 game similar to the 2048 built on the Sui blockchain, Sui 8192? See, if you complete a title in 2048, you get nothing. But if you slide and you get 8192 in the Sui 8192 game, you can mint an NFT. Are you game? Now let me take you for a quick check on the game. Each instance of the game mints a new object similar to the minting an NFT, and each move in the game is recorded as a transaction and thus requires a gas fees payment. Oh, that's money expended. Now here's an interesting part. The game was created as a first entirely on-chain Sui game by Sui wallet provider Ethos Wallet. It is open source and was created to demonstrate how apps could evolve on the Sui blockchain. The Web3 gaming community is crazy about this game and frolicking more and more. As a result, Sui blockchain's native token by similar name increased in value as the game generated 258 million transactions
on the Sui blockchain as of 18th July 2023. And within 24 hours, the number of transactions on the blockchain topped 29 million, setting a new record. Since blockchain gaming is gaining popularity with more community members, I am also being greedy, like why not review another game? Not just Sui, but Nexon, one of the world's largest gaming firms, is dabbling in the Web3 space, similar to some of its Asian contemporaries. Prominent free-to-play 2D MMORPG game MapleStory developer is developing a blockchain-powered economy based on the 20-year-old massively multiplayer online game, in which players may trade in-game assets such as costumes, equipment, and virtual pets in the form of NFTs. According to data from Korea MapleStory, approximately 160,000 people in South Korea are still playing MapleStory nowadays. MapleStory has almost 180 million total global user base, and even more individuals adore the MapleStory IP. We anticipate that many players will enjoy MapleStory N and MapleStory Universe, according to Nexon. There is no cash shop in MapleStory N, and players obtain stuff through gameplay such as completing quests and slaying monsters. If users do not get what they desire, they can buy it from others via the ecosystem's secondary NFT marketplace. According to Nexon, gamers will eventually be able to exchange their in-game assets on other marketplaces. We Asians are second to none. When it comes to the blockchain gaming space, Asia's gaming market is promising. It is not the only largest market in the world, but brimming with growth potential. The 1.7 billion players in this region make up 55% of the world's gamers population, generating $72 billion or 52% of the world's annual gaming revenue. Its strong per capita GDP growth potential will accelerate in-game purchasing power, further driving up the market share in the global games market. Now you know why Asia is widely considered as the gaming powerhouse and the driving force behind the global gaming industry growth in the coming decades. That's it in today's special segment. We will keep you updated with more such updates. Until then, follow 3.0 TV or log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ये दो शब्द नहीं पर वो दो पंख हैं जो हमारी टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया को नई ऊंचाई पे ले जाने की क्षमता रखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एलॉन मस्क से लेकर इन्फोसिस तक और टाटा से लेकर एप्पल तक हर कोई AI की रेस में रोज नया आयाम दर्ज कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने देश के पब्लिक सेक्टर में भी AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है? हेलो एंड वेलकम टू 3.0 TV। मैं हूं आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर और आज के इस खास सेगमेंट में हम उन 3 विभिन्न पब्लिक सेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिनमें भारत सरकार AI का उपयोग कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर तो वही है जिसकी हमें रोज जरूरत पड़ती है। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि उसके साथ ही रोड सुरक्षा भी आ जाती है। ट्रांसपोर्ट अर्थात यातायात और रोड सुरक्षा। ट्रांसपोर्ट यानी यातायात की बात करें तो रोड सेफ्टी पहला अहम मुद्दा उभर कर आता है। AI के प्रेडिक्टिव पावर को हार्नेस करते हुए 2030 तक रोड दुर्घटनाएं 50% कम हो जाएं, इसलिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट आए रास्ते को लॉन्च किया है। The road safety is the major concern across the world and has become a challenge for developing countries like India. India accounts for about 5 lakhs road accidents annually and one of the highest in the world, in which about 1.5 lakh people die and 3 lakh have serious injuries affecting their livelihood. Unfortunately, 70% of deaths are in the age of group of 18 to 45 years. The road safety is the topmost priority of our government. There is a need for extensive integration of AI-based technology
which will remove human interference and possibility of errors. The artificial intelligence powered drones and robots can be used for forensic level investigation of road accidents. I encourage use of AI based solutions for high priority areas like forensic post crash investigations, pattern of accidents due to black spots, fatigue indicators and sleep detectors for drivers. आय रास्ते का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। आशा करते हैं कि प्रोजेक्ट आय रास्ते रोड दुर्घटना को कम करने के अपने लक्ष्य में कामयाब होगा। रोजाना कामकाजी जिंदगी से जुड़ी दूसरी अहम पब्लिक सर्विस भला आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा क्या हो सकती है, लेकिन यहाँ आज हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड की और उससे जुड़े आधार मित्र की। जैसा नाम वैसे लक्षण। क्या आप आधार कार्ड बनवाने या उसमें अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के झंझट से तंग आ चुके हैं? कहाँ जाएं, कैसे अपने आधार एनरोलमेंट या अपडेट स्टेटस को ट्रैक करें? इन सारी प्रॉब्लम्स के वन स्टॉप AI पावर्ड सॉल्यूशन का नाम है आधार मित्र। ये भारत सरकार का एक ऐसा चैटबॉट है जो आपको आधार रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में प्रोवाइड करेगा और वो भी एकदम मुफ्त। मैं तो कहती हूँ आधार मित्र से दोस्ती कर ही लीजिए, फायदे में रहेंगे। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कहने वाले सही कहते हैं कि जान है तो जहान है। भला स्वास्थ्य से बढ़कर भी क्या हो सकता है आदमी के लिए। गर्व की बात है कि भारत दुनिया भर में कई क्षेत्रों में अग्रसर हो रहा है, लेकिन कुछ जगह नंबर 1 होना भी सही नहीं होता। जैसे नंबर 1 होने का ये खिताब डायबिटीज के मरीजों की संख्या को लेकर भारत दुनिया में नंबर 1 बन गया है। बेहद चिंता का विषय है। डायबिटीज मॉडर्न डे लाइफस्टाइल से जुड़ी शिकायत है और सभी उम्र के लोगों को हो रही है। डायबिटीज स्वास्थ्य और हमारी लाइफस्टाइल पर कई तरह की मर्यादा डालती है, लेकिन शायद डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आंखों की रोशनी धुंधली होने की शिकायत शायद अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अब AI ने इसका हल ढूंढ लिया है। भारत सरकार का नीति आयोग एक ऐसा AI एल्गोरिदम डेवलप कर रहा है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के अर्ली डिटेक्शन में सहायक होगा। इतना ही नहीं, गूगल भी एक ऐसा AI एल्गोरिदम लेकर आ रहा है जो बिना ब्लड टेस्ट किए सिर्फ आंखों की संरचना को पढ़कर डायबिटीज को डिटेक्ट कर सकता है। Healthcare is one of the most important fields AI is going to transform. Last year, we announced our work on diabetic retinopathy. It's a leading cause of blindness, and we use deep learning to help doctors diagnose it earlier. And we've been running field trials since then at Aravind and Sankara hospitals in India, and the field trials are going really well. सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए ही नहीं, अन्य सभी लोगों के लिए भी AI का ये करिश्मा निश्चित रूप से आशा की नई रोशनी लेकर आएगा। हेल्थ सेक्टर के अलग अलग क्षेत्रों में भी AI बहुत मददगार साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जरा सोचिए, जैसे आज हम मोबाइल और इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसी आसानी के साथ इन AI बेस्ड एल्गोरिदम्स की तकनीक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लाएंगे तो जिंदगी बेहतर भी बनेगी और सुरक्षित भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. There is a buzz about spot Bitcoin exchange traded fund in the market after the financial service giant BlackRock approached the US Securities and Exchange Commission seeking permission to launch the financial product based on Bitcoin futures. Ever since the first application for US Bitcoin exchange traded fund filed in 2013, a spot Bitcoin ETF has become a holy grail for the crypto community. Because till now, the US financial market regulator has rejected every application for a spot market Bitcoin ETF. So let's understand what spot Bitcoin ETF is.
As the name suggests, a spot Bitcoin ETF are marketable securities, value of which is derived from the Bitcoin futures, which are currently traded on Chicago Mercantile Exchange. Obviously, the futures price are based on spot Bitcoin price. A spot Bitcoin ETF would enable the tracking of Bitcoin's value without the requirement of directly holding the asset, making it tradable on traditional stock exchanges. So, in a nutshell, the Bitcoin spot ETF would provide easier access to the asset, allowing investors to buy and sell the digital currency through a brokerage account. Come 2023, things have started to change for better. Global regulation for crypto asset is at either works or has been finalized or approved. A case in point here is MiCA approved by European Union, which hopes to bring changes in financial markets. Amid growing demand for cryptocurrency regulation, crypto enthusiasts have been lobbying around building case for the regulatory oversight. Financial market regulators are giving way to investor demand. In such move, US SEC has formally accepted spot Bitcoin ETF application of BlackRock and Valkyrie, which marks a crucial step forward for what is currently the most closely monitored Bitcoin-related proposal submitted to the financial market regulator. SEC accepting the proposal at first place is fueling optimism among investors. If Bitcoin spot ETFs are approved, investors should treat them like any other asset. You should always do your own research and your own due diligence before taking risk with your money. That's all in the story for now. This is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 and for more information and stories, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. You are watching a special show, Metaverse Magic, wherein we bring to you important updates from the metaverse space. We begin the show on a good note. Metaverse startup Futureverse has raised $54 million from investors including Ripple. Next on the list, IIT Delhi is all set to launch certification in Web 3.0, social media and metaverse program. If you are a travel buff, there's a good news too. According to a report by McKinsey, the travel and tourism industry can generate $20 billion by 2030 for sporting enthusiasts. We have an update on football. Upland and FIFA have launched an immersive FIFA Women's World Cup experience. And finally, Sing China is all set to welcome 100 million viewers and fans by unlocking a new interactive Web3 experience. Well, there's a lot happening in the world of metaverse. So let's dive deep into the world of metaverse. Futureverse, a New Zealand-based metaverse startup, has raised $54 million from Ripple Labs and crypto investments firm Denti. The week definitely belongs to Ripple, which has a lot to cheer. Well, a district court recently declared that Ripple's XRP token is not a security for retail investors, and now XRP has become third largest altcoin by market capitalization. Interestingly, as Ripple Labs invested in metaverse project Futureverse, the token has gained even more momentum. The platform is poised to generate AI-based content to enhance music, objects, characters, as well as animations. It aims to make the digital world more accessible and interoperable. Well, who doesn't want to invest in a technology which opens up a myriad of possibilities for all sectors, including education? According to the HDF Market Intelligence Report, Metaverse in the education market will witness major growth by 2028. The educational institutions have started testing the waters of Metaverse.
And now, the Indian Institute of Technology, Delhi, is all set to launch a 6-month advanced certification program based on Web 3.0, Metaverse, and social media. This 6-month program has been designed for the participants, which will help them explore the convergence of upcoming technologies, such as how Metaverse is creating immersive experiences and Web 3.0 is revolutionizing the internet. Graduates from any background who are looking for a career in these domains and IT industry professionals who wish to apply the knowledge in their respective fields can all register for the program. All the learners will be mentored by the faculty of IIT Delhi. The module designed for Web 3.0, social media and Metaverse will include topics such as overview of artificial intelligence, understanding technical architecture of VR ecosystems, and applications of Metaverse in various industries. And now, let's listen in to what Mr. Ujjwal Kumar, Market Research Analyst at Ajna Lens, has to say about the factors that will drive the growth or adoption of Metaverse. Over the past few years, Metaverse has gained over 400 million users worldwide due to rising demand in industries such as media, entertainment, gaming, and more. Talking about numbers, in fast-paced immersive world of today, Metaverse is projected to grow at CAGR of 47.2% by 2027. Investments and partnership. Meta partnership with the IT Ministry of India for XR startup programs highlights government support. This shift, along with enhanced connectivity through 5G and technical resources. Today, young individuals and digital tech involvement reports that 70% of Gen Z are interested in Metaverse, leading to a Metaverse boom. 54% of tech experts believe Metaverse will achieve full immersion by 2040. Thank you, Mr. Ujjwal, for being with us. Well, the Metaverse will open up a world of infinite possibilities. You can travel to London, Paris, New York, Dubai, or any other city and explore the world without even having to step out of your home or spending money. The recent findings of global management consulting firm McKinsey, the travel and tourism industry can generate an additional $20 billion by 2030 with the help of Metaverse. The report highlighted that the immersive technologies use cases mainly lie in planning, booking, shopping, leisure, visitor support, and entertainment. All these areas show a great potential in leveraging the Metaverse to enhance traveler experience. The tourism companies are not missing this opportunity and are embracing Metaverse to enhance customer experience. Also, various Metaverse platforms are recreating iconic landmarks in the Metaverse. The tourism industry players could position themselves at the forefront of disruption by being the early adopters of Metaverse. And now, good news for all football fans. Metaverse platform Upland has announced a partnership with FIFA in order to provide an immersive experience centered around FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023 to all the football fans. Users will be able to engage in activities related to FIFA and also participate in FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023. Not only this, fans will also be able to acquire digital collectibles, including video capturing of some of the memorable moments from FIFA tournaments. Well, countries are betting big on Metaverse and Hong Kong is not behind in the race. NF Kings, a Web3 technology company, has collaborated with China-based largest variety program IP creator Star CM Holdings to launch a Web3 entertainment metaverse, Sing Meta. This platform will provide exciting experiences for more than 100 million viewers and fans. Well, Sing Meta will be a metaverse version of a popular reality TV show in mainland China, Sing China. This show hunts for talented musicians through blind auditions which are conducted by celebrity mentors. All the items within the metaverse can all be uploaded onto the blockchain and users can own digital assets as NFTs. This digital version of the show will also be available for downloads worldwide. Well, that's all in this episode of Metaverse Magic. I will be back with more such interesting updates from the Metaverse space. Do like, share and subscribe to our channel, and for more such interesting updates, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off.
Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Vishakha Thakur. It's Monday today and here we are back with hand-picked stories of deals that were sealed in the Web3 space, ranging from VC funding activity for blockchain-focused services, metaverse-related development and the technology services provider. First update on our radar in today's Deal Corner is about VC firm fundraising activity. Blockchain-focused venture capital firm Polychain Capital has raised around $200 million in an initial close for its fourth crypto venture capital fund, Fortune reported, citing a person familiar with the matter. Fortune said that Polychain still plans to raise $400 million in total for the fund, which matches the targeted amount in an April filing with the US Securities and Exchange Commission for its Polychain Ventures 4 LP fund. Meanwhile, the VC firm has let go 3 members of its around 15-member research team as it shifts its investing focus, Fortune said, citing the person. Polychain Capital was founded in 2016 by early Coinbase employee Olaf Carlson Wee. The firm has about $2.6 billion in assets under management, Fortune said, citing PitchBook data. Next deal on our list is with regards to AI startup. CoinFund, a New York-based VC firm that boasts 105 companies in its portfolio, announced that it pulled in $158 million in its latest round. The round was more focused on emerging sectors like early-stage crypto startups, particularly those that intersect with artificial intelligence. CoinFund's latest move comes against a backdrop of a broad retreat from crypto-related investments following a maelstrom of failures throughout 2022, including the demise of the Terra Luna stablecoin and FTX's collapse. Fundraising has also been complicated by a year of higher interest rates that made borrowing more expensive. To date, CoinFund has put down millions in seed funding for companies like AI company Giza, for which it raised about $3 million, and in infrastructure projects like Cosmos, where it helped raise $10 million along with Binance Labs and others to further develop its Neutron smart contract platform. After dabbling into 2 VC funding related deals, it's time to check the funding activity in the metaverse segment. Futureverse, the crypto tech and gaming startup, has raised $54 million in Series A funding to further its metaverse aims in a round led by venture capital firm 10T Holdings, with XRP ledger creator Ripple Labs also participating. Futureverse said in a statement that it will use the funds for research and development, as well as to further its gaming-focused blockchain called the Root Network, which is Ethereum virtual machine compatible and offers an XRP ledger integration. Futureverse's sizable raise comes and amid a broader skepticism and weakening hype over the concept of metaverse. And now we are tracking a funding activity of a Web3 startup firm. Cosmic Wire, a Web3 startup offering a wide range of infrastructure products, has successfully raised $30 million in a seed funding round led by the Solana Foundation, the non-profit firm dedicated to spreading adoption of the Solana ecosystem and Polygon. Miami-based Cosmic Wire offers crypto-related services like 3D architecture tools, artificial intelligence-backed avatars for metaverse creation, and blockchain solutions like analytics, digital identity management, smart contract development, and chain-agnostic marketplaces. Cosmic Wire has been chosen to participate in Google Cloud's Web3 Startup Program, providing support for startups and emerging projects in the Web3 industry. The program also grants exclusive access to Google Cloud credits, unparalleled Web3 ecosystem entry, and complementary benefits. Cosmic Wire has raised a total of $30 million in funding over 2 rounds. Their latest funding raising activity was concluded on July 19, 2023 from a seed round. Cosmic Wire is funded by 3 investors. Polygon and Solana Foundation are the most recent investors. Finally, we move on to cryptographic development companies' funding activity. POX Labs, the cryptographic development team behind Manta Network, has announced that it raised $25 million in a Series A funding round with leading contributions from Polychain Capital and Kiming Venture Partners. The funding gives the company a $500 million valuation. The raised funds will be utilized to expand the network, attract more users, and explore diverse use cases for Manta Pacific.
That's all in this segment. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. For me, the weekends are like bag of chips. I really enjoy it, but they finish off quickly. The only thing that gives me joy and utter happiness is listening to The Weeknd on weekends. Oh no, I know, this is sounding like one of those riddles that we used to blabber in school. But here, today, I am talking about Abel Tesfaye, prominently known as The Weeknd. I was in school when I listened to the Starboy, and that was my first The Weeknd song, and ever since I listened to it, there's no going back. Now The Weeknd has entered the Web3 gaming space in collaboration with the world's largest crypto exchange, Binance. As part of their ongoing cooperation, crypto exchange giant Binance and pop singer The Weeknd have collaborated to establish the Metaverse Dimension, a new online realm. This new business intends to provide users with immersive experience, mixing games, art, and special incentives and bringing The Weeknd's creative universe to life in a new and compelling way. The Metaverse Dimension is a web-based game that allows players to engage in a treasure hunt challenge, unlocking exclusive areas, content, and rewards. Players will be given an avatar and virtual outfits styled by campaign imagery and branding from The Weeknd. The Metaverse Dimension encompasses various areas including a club room, art gallery, Binance-themed zone, and a secret door. Completing challenges will grant access to a VIP area and a stage, adding to the excitement and sense of achievement. Binance has introduced integrated puzzles within the digital experience, providing participants with an opportunity to win tickets to future Weeknd concerts and exclusive merchandise. Additionally, augmented reality experiences will be available during stops of The Weeknd's World Tour. Furthermore, HXOUSE, a Toronto-based community incubator, has co-designed an NFT collection that can be redeemed for commemorative NFTs, adding value and uniqueness to the concert experience. My favorite line from The Weeknd's Starboy song is, 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cars. Come to think of Cars, Unstoppable Domains, a platform for user-owned digital identity, has teamed up with MetaRides Racing to launch a racing game with non-fungible token cars. MetaRides Racing is a blockchain-based multiplayer racing project developed by former Need for Speed game makers at Electronic Arts. The partners will make a racing game that will offer players interoperability between dozens of metaverses or car worlds through unique NFT cars. MetaRides Racing intends to connect metaverses via digital dealerships. Unstoppable domain holders will be able to show their identity with the newest and interoperable digital automobile memorabilia, including unique colors, body styles, and license plates with Web3 domain endings like crypto and NFT, thanks to the new NFT cars. An early access version of the game includes a racing course situated in a dynamic metropolis and its environments, as well as the beautiful supercar Zara, which will be available in 3 body variants, especially from Unstoppable Domains users. New fascinating circuits and cars will be gradually introduced to the universe of MetaRides Racing throughout the development process. You know, I've been watching car videos on Twitch a little too much. Anyways, there's always Valorant or League of Legends, just these 2 games that trend a lot. But this new Web3 game, Only Up,
is garnering a lot of attention from the mainstream as well as the marginal players. Only up, not up only, a famous crypto-degen phrase, and the name of a popular podcast is a PC game created by SCKR Games, a little-known independent developer. Only Up is a 3D platform hopping game based on the classic Jack and the Beanstalk story that pushes players to keep climbing upward. And they'll do it in environments full of strange sights like floating orange and avocado halves and Shiba Inu pets. Only Up broke a new Twitch record with almost 109,000 total viewers, including a pair of popular streamers like Agent 00 and Mischief, each with roughly 20,000 viewers. Those who are familiar with the Web3 world may notice something unexpected along the way. A substantial quantity of Goblin Town artwork and trademarks splashed around the world. The guy even has a Goblin Town creature face on the back of his garments, as well as a project logo on his t-shirt. One thing is that I am actually scared of heights, so I never thought that a game would give me a rush of anxiety. This game is too good to be real. One of the biggest challenges of Only Up is the fact that it is very easy to die. There is no technique to control your character when falling. If you fall off a platform, you have to start from the scratch on the ground. If you're really lucky, you might land on something. This can be incredibly upsetting, particularly if you have been playing for hours on end before you collapse and lose all of your work and time. Despite the challenges, Only Up is a very rewarding game. Till date, very few streamers actually completed this game, but overall, good graphics, good game, to be honest, in my opinion. We'll keep bringing such thrilling games. Until then, keep watching 3.0 TV and do not forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Also, do log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. You must have heard of Ethereum 2.2, but now its layer 2 Polygon is also coming up with the Polygon 2.2. Basically, Polygon 2.0 is a culmination of over a year of collaboration between the Polygon labs, developers, researchers, application nodes, operators, validators, and the broader Polygon and the Ethereum communities. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Manoj Dara. The core team at Polygon has unveiled its plan for building Polygon 2.0, envisioned as a network of zero-knowledge powered layer 2 blockchains. Zero-knowledge rollups, which is ZK rollups, are the layer 2 scaling solutions that increase throughput on the Ethereum mainnet by moving computation and state storage off-chain. ZK rollups can process thousands of transactions in a batch and then only post some minimal summary data to the mainnet. Polygon operates a proof-of-stake sidechain network called the Polygon POS, which runs parallel to the Ethereum and hosts notable crypto apps such as Uniswap and Aave. It also manages a layer 2 network based on the ZK rollups named Polygon ZK EVM, complementing its existing proof-of-stake chain. However, the team is preparing to create additional layer 2s that leverage ZK rollups, one of the two most adapted solutions designed to scale Ethereum with off-chain computations. Such individual layer 2s could interact with each other securely. The team explained that the architect of the Polygon 2.0 is being designed to facilitate and instantaneously and secure cross-chain interactions with the layer 2 chains without additional trust assumptions. The team stated that this initiative aims to establish the value layer of the Internet. Just like the Internet allows anyone to create and exchange information, the value layer is the fundamental protocol that allows anyone to create, exchange, and program value. Individual blockchains aren't infinitely scalable. They have strict throughput limits, the team noted. We can add capacity by creating new chains, but not without fragmenting liquidity and reducing security and capital efficiency. Now let's hear from our esteemed guest, Mr. Devi Prasad Chaudhary, Finance Controller at Carillon Global Solutions and Blockchain Futurist. Mr. Chaudhary, welcome on 3.0 TV. Thank you for having me here. Sir, our viewers want to understand what is Polygon 2.0 and how it is going to impact the Ethereum Layer 2 scenario.
If you can just please explain that, sir. I would like to just bring you one insight about blockchain is that it has a trilemma issue. Okay, any blockchain protocol comes with one trade-off among three, that is security, decentralization, and scalability. Now, Ethereum. Let's start with Ethereum. It has been very busy network because of the number of dApps being built on top of it. The usage has increased significantly, and the kind of busyness the network has seen, there has been tremendous surge in the transaction fee. Now, to counter this, we need a solution for the ecosystem where developers, users can come and experience great latency and quick settlement of the finality of the transactions, and developer community should also be able to build products or dApps which is scalable. Now Polygon comes here, takes the architecture of Plasma, which was written by Vitalik Buterin way back 3-4 years back, and they connected to Ethereum main chain, created side chain with the Plasma architecture, and enabled Matic network, right? And since then, there has been great leverage for the whole blockchain ecosystem in building dApps, okay? And we have seen a great number of dApps being built on Matic itself. Why? Because of the scalability solution what they brought in. They just simplified the one issue, which is number of transactions happened per second, right? And for that, by doing so, they are just doing that batch of transactions they validate and then post it to the layer 1, which is Ethereum. Ultimately, the transaction goes to Ethereum, but instead of one transaction, they create a batch of transactions and post it. Now, however, there comes your optimism, rollups, all this stuff, down the line, latest updates happen to the ecosystem. And those, new protocols being created. But then Polygon definitely thought about it, and then it's a strategic call for them to embrace those changes or improvements to their network or to their protocol. And hence what they did is they also kind of embedded with rollups and optimism. Instead of sidechain, it's a completely, simultaneously talking to layer 1 system, which is much more efficient. On top of it, they have also, brought in the GK Sync enablement, wherein you can ensure faster settlement with privacy enabled. If at all anything has to be masked as per requirement, that also they have solved. So with that, if you see, again going back to the trilemma of the blockchain, scalability, decentralization, and security, they have definitely leveraged decentralization and security in the name of scalability. But current scenario, definitely we need scalable solution, which can do more number of transactions per second. Because we have been compared to, Visas of the world, MasterCards of the world, and we cannot, UPIs of the world in the settlement per se. And that is where, by bringing in all of these improvements into their existing network, they become, going to be the most powerful, scalable solution, I would say, after layer 1, Polygon. And that's Polygon 2.0 for you. Thank you so much, sir, for sharing your view on 3.0 TV. Stay tuned, get familiar with the Polygon 2.0 in its entirety, and join the conversation. Only the Polygon community, who controls the Polygon protocol, has the right to accept and implement Polygon 2.0. Well, that's all there is in this today's special segment. We will meet again. Till then, keep watching 3.0 TV for more such interesting analysis. Thank you.
Hello, I'm from the Secret Service. The United States Secret Service owns crypto, has its own NFT collection, and has praised blockchain technology's ability to fight financial crime, Reddit users learned during a recent Ask Me Anything session. On May 15th, representatives from the United States Secret Service San Francisco field office and the Bay Area Regional Enforcement Allied computer team opened themselves to questioning from members of the subreddit cryptocurrency. The Secret Service has previously made the point that the immutable nature of the blockchain ledger means that illicit financial activity can be more easily monitored and tracked than fiat in some cases. The Secret Service is the world's most elite protection force and is at the cutting edge of investigating complex cyber-enabled financial crime. An upcoming Netflix-featured Bitfinex story involving some unlikely criminals made this point very clear. It's quite hard to launder money using blockchain. The agency said that by owning crypto, it helps them better understand the deeper mechanisms of the crypto world. When asked if they see any significant differences between crypto crimes and illicit activity in the world of traditional finance, the Secret Service noted that the vast majority of calls and reports received by their office usually involves crypto in some fashion. While the agencies responded to a wide range of serious questions, there was some fun to be had during the session. When one Redditor asked whether the Secret Service could consider launching its own meme coin, the agency responded by plugging its own NFT collection on OpenSea. That's it in today's special segment. For more such updates, follow 3.0TV or log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. Thank you. Whether you are an entrepreneur, investment banker, or market participant, you would definitely want to know about mergers and acquisitions, fundraising, and which way millions of dollars are heading in the big deals of the Web3 world. Find out all of that and more on a special show, Deal Corner, every Monday at 6:45 p.m. only on 3.0 TV. Asia's financial hub, Hong Kong, is well positioned to emerge as new center of the global cryptocurrency system following a crackdown on companies in the United States. In an effort to position itself as the crypto hub, Hong Kong kicked off its virtual asset trading platform handbook at the start of June 2023. The Securities and Future Commission has proved the guidelines for cryptocurrency companies that wish to operate in the country and will oversee all licensing. So Metaverse is going to change the work from home scenario, making it more interesting, and according to a research by Cornell, it can also aid in reducing global warming. And according to you, what is the current scenario of Metaverse market? And UK-based Web3 company just announced 2 days back that they are building a mega metaverse. And on Friday, they launched its plans for a network of metaverses that it hopes will one day be capable of hosting thousands of users. If you think the implosion of FTX last year may have dealt a severe blow to exchange business or the other companies operating similar platform, then you will be proven wrong. In fact, the collapse of FTX prompted several other platforms to take additional measures and up their game on the security field. As a result, they have managed to survive the onslaught created by the FTX debacle. For better understanding, let's analyze the data provided by the blockchain analytical firm Nansen. Entered the Web3 gaming space in collaboration with the world's largest crypto exchange, Binance. As part of their ongoing cooperation, crypto exchange giant Binance and pop singer The Weeknd have collaborated to establish the Metaverse dimension, a new online realm.
This new business intends to provide users with immersive experience, mixing games, art, and special incentives and bringing the weekend's creative universe to life in a new and compelling way. Metaverse to accelerate progress towards global warming reduction. Celio India and MEV Bandai to launch Metaverse Collection. Puma launched its 3D Web3 experience. Loro Piana unveils Metaverse edition of Capsule Collection. Ex-Avatar signs deal with Fexco for Metaverse payments. Want to know more? Watch our weekly show Metaverse Magic every Monday, and for more such updates, follow 3.0 TV. The online world has been buzzing about the possibilities of Metaverse since 2021. The big players have focused on the creation of Metaverse since it provides an area for individuals to hang out, attend meetings, or even play games. Interoperability has always been a big issue in Metaverse. However, Improbable released its creation suite M-Squared, which serves as the development engine for their own interoperable Metaverse platform. The idea of harnessing artificial intelligence for development was once considered science fiction. In this digital age, artificial intelligence is also developing into an appealing investment opportunity. Recently, GitHub jointly conducted a survey with Wakefield Research to survey 500 US-based enterprise developers. They found that 70% of the programmers believe AI is providing significant benefits to their code. According to a recent McKinsey & Company analysis, generative AI may be able to fully automate 50% of all work activities carried out on now in just 22 years. According to PricewaterhouseCoopers research, product improvements will increase consumers' demand and account for 45% of all economic gains by 2030. Hello and a very warm welcome to our brand new show called Deal Corner, wherein we will bring to you all the exciting and significant deals taking place in the world of Web3. Deal Corner will be your one-stop destination to get all relevant information and analysis regarding deals, mergers and acquisitions, and more happening across the digital squares of blockchain, metaverse, virtual assets, artificial intelligence, and so on. You must have heard of Ethereum 2.0, but now its layer to Polygon is also coming up with the Polygon 2.0. Basically, Polygon 2.0 is a culmination of over a year of collaboration between the Polygon labs, developers, researchers, application nodes, operators, validators, and the broader Polygon and the Ethereum communities. The core team at Polygon has unveiled its plan for building Polygon 2.0, envisioned as a network of zero-knowledge powered layer 2 blockchains. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman. वॉर्नर ब्रदर्स जानते हैं कि उनकी कमाऊ सुपर हीरो मूवी फ्रेंचाइज जो बॉक्स ऑफिस पर हर बार कमाई का नया रिकॉर्ड बनाती है, वो NFTs में भी छप्पर फाड़ कमाई करेगी। सुपरमैन के बाद बारी आई फ्लैश की, जिसकी मच अवेटेड मूवी 16 जून को सिनेमाघरों में धूम मचाए उससे एक दिन पहले लॉन्च हुई फ्लैश की NFTs। इसीलिए वॉर्नर ब्रदर्स ने जून और जुलाई के महीने 6 सुपर हीरो मूवी और कॉमिक NFT रिलीज के साथ बुक कर लिए हैं। लेजेंडरी रॉक बैंड क्वीन ने रखा NFT की दुनिया में कदम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस को मिलेगा उनसे मिलने का सुनहरा मौका। अर्मिस मेटाबर्किन कोर्ट केस में अर्मिस के हक में सुनाया गया फैसला। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ रुचि शर्मा। रॉक बैंड क्वीन के NFT ट्रेडमार्क से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की NFTs तक कई मजेदार NFT न्यूज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो जाइए तैयार। NFT वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से होगी मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसे रहा NFT मार्केट का हालचाल।
हमेशा की तरह पिछले हफ्ते भी इथेरियम एनएफटीज ने $95 मिलियन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम के साथ एनएफटी मार्केट को डोमिनेट किया। दूसरे पायदान पर बिटकॉइन एनएफटीज ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है। 3% की गिरावट के बावजूद बिटकॉइन एनएफटीज ने $20 मिलियन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम बटोरी। तीसरे पायदान पर $10 मिलियन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम के साथ रही सोलाना एनएफटीज, जिसमें 24% की बढ़त दर्ज की गई। $6 मिलियन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम के साथ चौथे पायदान पर थी पॉलीगॉन एनएफटीज और इस आंकड़े के काफी करीब थी इम्यूटेबल एनएफटीज, जिसने $5.8 मिलियन के साथ पांचवा पायदान संभाला। We will rock you। आप चाहे किसी भी जनरेशन के क्यों ना हो, ये गाना आपने जरूर सुना होगा। क्वीन बैंड के तमाम फैंस के लिए आज मेरे पास एक अच्छी खबर है। आइकॉनिक ब्रिटिश रॉक बैंड क्वीन अब एनएफटीज और मेटावर्स की दुनिया में कदम रख रहा है। जी हाँ, इस फेमस बैंड क्वीन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैनेज कर रही प्रोडक्शन कंपनी क्वीन प्रोडक्शंस लिमिटेड ने हाल ही में कई ट्रेडमार्क्स के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें एनएफटी और मेटावर्स दोनों के लिए ट्रेडमार्क्स शामिल है। इतना ही नहीं, क्वीन प्रोडक्शन कंपनी के प्लान तो वर्चुअल मार्केटप्लेस खोलने के भी हैं, जहां वर्चुअल मर्चेंडाइज जैसे कि क्लोथिंग, फुटवेयर, ऑडियो गियर, सीडी और रेकॉर्ड प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ वर्चुअल एंड मिक्स्ड रियलिटी सॉफ्टवेयर भी डेवलप करना चाह रहा है क्वीन। और हो भी क्यों ना, इन दिनों एनएफटीज और मेटावर्स में म्यूजिक रिलेटेड डिजिटल एसेट्स का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। म्यूजिक के दीवानों के बाद अब बात स्पोर्ट्स फैन की, जिन्हें मिल सकता है मौका अपने फेवरेट फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलने का। ओ माय गॉड, कैसे? चलिए बताते हैं आपको। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बाइनेंस ने अपनी सेकंड एनएफटी कलेक्शन फॉरएवर CR7 द गोट के ड्रॉप की डिटेल्स अनाउंस की है। रोनाल्डो और बाइनेंस की मल्टी ईयर पार्टनरशिप्स के अगले चैप्टर के तौर पर द गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कलेक्शन जुलाई 3, 2023 को अवेलेबल होगी। फॉरएवर CR7 की द गोट एनएफटी कलेक्शन रोनाल्डो को बतौर हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम सेलिब्रेट करेगी। रोनाल्डो ने अब तक अपने करियर में 838 गोल्स अपने नाम किए हैं। 29,000 एनएफटीज की ये कलेक्शन रोनाल्डो के फैंस को उनके करियर डिफाइनिंग स्पेशल मोमेंट्स के साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स और पर्क्स को ओन करने का मौका भी देगी। रोनाल्डो की जिंदगी के कुछ यादगार गोल्स जैसे कि नंबर 806, जिसने ऑफिशियली रोनाल्डो को टॉप गोल स्कोरर ऑफ द टाइम बनाया, या फिर गोल नंबर 649, जो कि रोनाल्डो का बाइसिकल किक वाला सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्ट गोल है। ये गोल्स अब हमेशा के लिए डिजिटल कलेक्टिबल के फॉर्म में मौजूद रहेंगे। 3 जुलाई को लॉन्च हो रही इस कलेक्शन में रोनाल्डो के 20 मोस्ट मेमोरेबल गोल्स शामिल होंगे, जिसमें 4 रेयरिटी लेवल्स होंगे: सुपर रेयर, रेयर और नॉर्मल। ऑक्शन 48 आवर्स के लिए ओपन रहेगी और सबसे ज्यादा बिड करने वालों को मिलेगी वो एनएफटी। बिडिंग $15,000 के प्राइस से शुरू होगी। इन एक्सक्लूसिव एनएफटीज में रोनाल्डो के साथ इन पर्सन ट्रेनिंग सेशन और अपकमिंग बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक की टिकट्स शामिल होंगी। फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर विमेन फुटबॉल प्लेयर एलेक्सिया पुतियास तक सभी एनएफटीज को कैश कर रहे हैं। स्पेनिश सॉकर जायंट FC बार्सिलोना ने अपने क्लब की 10 पार्ट मास्टरपीसेस कलेक्शन की सेकेंड रिलीज के लिए NFT प्रोजेक्ट वर्ल्ड ऑफ विमेन के साथ हाथ मिलाया है। ये कलेक्शन पास्ट और प्रेजेंट आइकॉनिक प्लेयर्स की अचीवमेंट्स को आर्टिस्टिकली प्रेजेंट करती है। इस कलेक्शन को नाम दिया गया है एम्पावरमेंट। आर्टिस्ट री मैडलिन द्वारा बनाया गया ये आर्टवर्क वुमेन्स क्लब कैप्टन एलेक्सिया पुतियास को सेलिब्रेट करता है, साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेस को सिंबलाइज करता है। ये गोल्ड अडॉर्न्ड आर्टवर्क 2022 में हुए वुमेन्स चैंपियनशिप्स लीग सेमीफाइनल मैच वर्सेस जर्मन क्लब वुल्फ्सबर्ग में पुतियास को डिपिक्ट करता है। ये वो गेम था जिसमें पुतियास ने 2 गोल करके जीत अपने नाम की थी। एम्पावरमेंट के लिए 2 दिन का ये ऑक्शन जून 26 को एक्सक्लूसिवली ओपन सी मार्केटप्लेस पर शुरू होगा। इस एनएफटी की फिजिकल यूटिलिटी पॉलीगॉन पर मिंट की जा सकती है, जिसमें होल्डर्स पुतियास के साथ मिलने का मौका पा सकते हैं, साथ ही साइंड पेयर ऑफ बूट्स क्लेम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बार्सिलोना के स्टेडियम में फिजिकल सीट तक मिल सकती है। भाई वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, मिस्टर कमेश्वरम, को-फाउंडर गार्डियन लिंक एंड jump.trade। वेलकम टू 3.TV मिस्टर कमेश्वरम। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू। बड़े स्पोर्ट्स स्टार और स्पोर्ट्स लीग्स एंड चैंपियनशिप्स एनएफटीज का रुख कर रही हैं। हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड?
Of course, right? Game and sports is going here to stay, because which is entertainment. Because generally, if it in old days, you can remember that we used to collect trump cards and everything. Yes. Right, and then like if you buy a bubble gum, you can get a trump card. People you have to collect everything, showcase to the friends, saying, "Hey, I have a bubble gum, right? So I have this sports card, I have this trump card, I have this WWE champion, or I have this cricket champion." So this is very common to the human mindset. So human always try to collect. They always have a lot of love on sports, right? A collection of those sports cards was initially in a physical world, right? People used to collect. If you take for 20 years back, I used to collect all the top cricketers card and all the trump cards of WWE champion and everything. But the same thing happens on digital world, because the new generation only know digital. They spend a lot of time on digital, so which is common. So people, because imagine I spend a lot of money to buy this card for no use. But I don't know that to retrade even in my old school days, right? But still I used to collect. I take money from my mom and used to collect whatever possible, but I don't know what I'm going to do with it, right? But at least now the new generation have an option. They can collect and then they can retrade, and also they can play the game using that. So it gives fun. So there's a Discord community. People have to used to talk, and yeah. So I think it is here. Definitely sports NFTs is here to going to stay. So there's no doubt about that. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। पहली NFT पर बेस्ड एनिमेटेड मूवी जिसे पूरी तरह से डाउ ने फंड किया है। जी हाँ, इंडिपेंडेंट वेब3 आर्टिस्ट और क्रिएटर्स का नेटवर्क Ethereum रिलीज कर रहा है पॉपुलर नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन पर बनी एपिसोडिक सीरीज नाउन्स अ मूवी का पायलट। द राइज ऑफ लूज अ नाउन मूवी पहली एनिमेटेड फिल्म है जिसे डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी डाउ ने फंड किया है। $2.75 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म पर पिक्सर, नेटफ्लिक्स और मार्वल के बेहतरीन एनिमेटर्स ने काम किया है। नाउन्स डाउ कम्युनिटी ने फिल्म को फंड करने का प्रपोजल मार्च में पास किया था। एट्रियम क्रिएटिव्स विलियम यू, HKJ, ज़ेनडाउट, 3D प्रिंट गाय और मेटा एंटरटेनमेंट फिल्म को लिखने, प्रोड्यूस और एनिमेट करने में मदद कर रहे हैं। इस मूवी को पूरी तरह से रिमोट टीम तैयार कर रही है, जिससे पूरा प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है, वरना इसी काम पर महीनों लग जाते। खैर, साडा हक एथे रख, यही कह रहा था अर्मिस अपने कोर्ट केस के दौरान, और सही मायनों में उसे हक मिल भी गया, क्योंकि अर्मिस वर्सेस मेटा बर्किंस केस में जज ने अर्मिस के हक में सुनाया फैसला। आपको अर्मिस और मेसन रॉथस्चाइल्ड के बीच चल रहा कोर्ट केस तो याद ही होगा, है ना? कई महीनों की जद्दोजहद के बाद अब फाइनली इस कानूनी लड़ाई में फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि मैनहट्टन फेडरल जज ने हाल ही में अर्मिस के हक में फैसला सुनाते हुए अर्मिस की मेटा बर्किंस NFT की सेल को परमानेंटली ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी है, ये कहते हुए कि मेसन की मेटा बर्किंस NFT सेल फ्रेंच लग्जरी हाउस अर्मिस के ट्रेडमार्क राइट्स को वायलेट करती है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेड रैकॉफ का कहना है कि रॉथस्चाइल्ड की कंटिन्यूड NFT मार्केटिंग से कंज्यूमर्स कंफ्यूज होते रहेंगे, जिससे अर्मिस ब्रांड को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही जज ने रॉथस्चाइल्ड की नए ट्रायल की रिक्वेस्ट को भी खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि डिफेंडेंट की पूरी स्कीम ही कंज्यूमर्स को डिफ्रॉड करना है, अर्मिस के ट्रेडमार्क्स के वेरिएशन यूज करके कस्टमर को ये यकीन दिलाना कि अर्मिस ही उनकी ल्यूक्रेटिव मेटा बर्किंस NFT को एंडोर्स कर रहा है। Well, that's all in this episode of NFT Words. वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3wordstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।